certainly Tuskers did not work well, and I don't know how the Chola Veerans will manage it out, especially against Nilgiri Knights. या बिल्कुल आपने सही कहा नवीन, क्योंकि जो नीलगिरी नाइट्स है वो बहुत ही अच्छी है डिफेंस में। उनका हमें टैकल सक्सेस रेट लगभग 49% का था, यानी कि 2 में से 1 टैकल तो वो पक्का वहां पर सक्सेसफुल करती है और एरर्स वहां पर बहुत कम करती है। तो बहुत ही बड़ा मुकाबला यहां पर होना होगा। चोला वीरेंस का डिफेंस कैसा खेलेगा और कैसा खेलेगा आज नीलगिरी नाइट्स का रेड डिपार्टमेंट, क्योंकि उनके पास मल्टीपल मैच विनर्स है नवीन, और नीलगिरी नाइट्स हमेशा ये कार्य करता है। आइए दिखाते हैं एक बार फिर से कि नीलगिरी नाइट्स से कोई भी रेडर वहां पर टॉप 3 में नहीं है, उसके बावजूद बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट आइए नजर डाल लेते हैं जल्दी से टॉप 3 रेडर्स पर नवीन। Oh yeah, definitely. Because yeah, there you go. Gagan Glorious Gora yesterday. He also was very sorry for all the fans that they came in because Humpy Heroes did not manage to win. Why? It's because of that man standing just right next to him. 17 matches, 159, 28 points yesterday by Durgesh Kumar, and there his brother from the another mother, Sanskar Naveen Mishra, 155 rate points. So imagine yesterday, Arshit, Sanskar actually underplayed himself. But imagine if Sanskar plays at the level of what Durgesh can play. That is going to be something else for the defenders. Yeah. बिल्कुल, और खासकर जिस तरह से उन्होंने 2 ही रेस में पूरी तरह सफाया किया था हम्पी हीरोज का, वो भी बहुत अद्भुत थी। बट गगन गौड़ा बहुत अच्छा खेले और वो खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा हाइट्स पर जाएंगे, ये हम आशा करते हैं। बट आइए जल्दी से टॉप 3 डिफेंडर्स की तरफ भी चलें, उसके पश्चात इस मुकाबले को शुरू करेंगे। टॉप 3 डिफेंडर्स में नवीन यहाँ पर अच्छा नजर आया है कि कवर डिफेंडर्स अब आपको धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। बट लोकेश कुसलिया और अंकित जाट, अंकित को थोड़ा सा फॉर्म को और बेहतर करना पड़ेगा। आज लगता है कि इनके पहला मैच जो है पल्ली के विरुद्ध, इस स्टेट्स और बेहतर कर सकते हैं यहाँ से। And he should also understand when to go for the attack. Both Ankit Jat and Shiv Kumar, they are very good on the defensive lines, no doubt about that. But the only problem is their decision on the timing. Their timing of the decision when to go and attack the raider should be really thought about. But Harshit, after the top 3 defenders, I'm sure we will be calling the 2 teams inside as well, and also for everything. But my big question to you is, today, do you really believe Velavan Muruganandan will go for the raid after yesterday, whatever he did? अभी मुझे लगता है कि जरूर अगर उन्होंने आपकी बातों को और हमारी बातों कमेंट्री में सुना होगा तो शायद आज रेट्स के लिए कम जाएंगे, क्योंकि आपने कन्नड़ में भी लिखा था, तमिल में भी कहा था। Yeah. I really tell him that pogave koodadu. That means bilkul nahi jana. You just be there on the left corner. That is much better for you as a place. नवीन, मुझे लगता है कि वो एक तो रोड के लिए तो पक्का जाएंगे, ये तय है। हो सकता है कि वहां पर कभी भी टीम परेशानी में ना हो। Yeah, just to irritate us, he will go. He will definitely go. पर चलिए, अभी समय हो चुका है एक बार फिर से, सिर्फ वेलेवन नहीं सभी खिलाड़ी यहाँ पर हमारे साथ मैट पर मौजूद थे और उन सभी ने भी कसम खाई है, वादा किया है अपने आप से और ईश्वर को साक्षी मानकर कि इस कबड्डी के खेल को वो बहुत ही सेफ बनाए रखेंगे और हमेशा क्लीन बनाए रखेंगे। आइए उस शपथ को सुनते हैं, उस प्लेज वीडियो को सुनते हैं, उसके बाद दोनों ही टीमों को मैट पर बुलाने का समय होगा। हम युवा कबड्डी सीरीज परिवार शपथ लेते हैं सुरक्षित खेल और सत्यनिष्ठा की। We at Yuva Kabaddi series take a pledge to play safe and clean sport. Thank you so much there, Aparna. I am very happy that I could recognize Aparna's voice, but Harshit, I think, will help me out to recognize who was the male voice. But even after all that talks, match number 97, Chola Veerans will be facing up against the Nilgiri Knights. Nilgiri Knights actually have gone down there and lost their first match after 7 consecutive wins. Harshit, can we have both the teams on the mat to see how is this match going to pan out? जी हाँ नवीन, ये मुकाबला जैसा कि आपने बात की है कि बड़ा ही अद्भुत होने की हमें पूरी उम्मीद है। चैलेंजर राउंड का दूसरा दिन और बड़ा मुकाबला यहाँ पर। सबसे पहले वो टीम आएगी जो चाहेगी अपने इरादों में ललकार लिए आना। तो इस तमिल डर्बी के लिए सबसे पहले बुलाया जा रहा है चोला वीरन्स।
एक हार आई जरूर है इस टीम के लिए चैलेंजर राउंड में, पर अब क्या जीत की सौगात लाएगी और वापस बढ़ जाएगी ये टीम जीत की तरफ। बुलाने जा रहे हैं द मोस्ट बैलेंस साइड ऑफ दिस समर एडिशन टिल नाउ, नीलगिरी नाइट्स। Another Tamil derby, I should say, not Tamil Nadu derby, because somehow the Chola Veerans coming from Puducherry, but Nilgiri Knights, yes, once again, both actually, of course, one is a union territory, one is a state, but both of them speak Tamil as their mother tongue, so it is nice to know that this will be another match where the Nilgiri Knights will actually try and win and make sure whatever they did wrong yesterday to make it right against the Chola Veerans. But interestingly, the Chola Veerans have done it well yesterday as well. Vinit Munuchami actually coming into the side and getting a high five. Can he go out there and continue that same performance? Because Chola Veerans were lacking a left corner defender. He's coming to fill that slot. Right corner will be managed by Praveen Kumar Ayanar. And then Arun Kumar Ranjapuli makes a big comeback. That is lovely news for the Chola Veerans unit, because Sujit Sagar, right, this is good, and Ayappan Veerapandiyan finds his name there in the playing 7. Saran Murugan, a new left cover defender, and Gautam Murugan. As always, the Murugan combination is there in the covers. Hope the Lord Muruga will always be blessed on that Chola Veerans side. Mohan Das Mohan, Vignesh Murugesan, Manogar Marimuttu, Prithvi Raj, and also Ranjit Daivaranga will be in the substitution lines along with coach Pannir Selvam Raja. And along with me is Ryan James. Good evening, Ryan. Good evening, Naveen. To introduce the starting 7 of the Nilgiri Knights in the corners, we will see Santosh and Velavan coming in. The insides, obviously, it's going to be Vasant Murugan and Marimuthu Selvam, that guy, the one guy to watch out for, I'm sure. And we saw the Murugan factor there, but here we have the cover factor, the money content factor for the Nilgiri Knights, both of them very strong. And lastly, in the middle, we have Surya Selvam, not to forget the substitute, Sundara Vishwa, Ayu Malai, Kesavan, Abhikumar and Harish. Yeah, wonderful, Ryan. The way you pronounced Yelumalai, that sounded so much Portugal. As Mohan Gowda actually flips the coin over, and Marimuthu says, I need the coin. And I will also stand on the same court where we are standing, as the first raid, of course, will happen from the man who just lost the toss. I think Arun Kumar Anjapuli will be starting the proceedings, and here we are with him. Couple of matches where he was not there, Chola Veerans struggled, Ryan. They struggled big time, because 91 raid points in just 13 matches. He is the go-to man, and it is nice to see that he will be accompanied by Sujit Sagar. Sujit Sagar also suffered a minor injury, but he came into the fold as a big support to Arun Kumar Anjapuli. Today he has to do the same thing here, Ryan. Right, both of them should come out big, and it will be great to see them support each other. Speaking of one man who supports his team big time, it's Marimuthu Selvam, a century plus 2 of points for him across the 20 matches, and an impressive strike rate of 46.15. I would love to see him finish with a better strike rate when it comes to finishing the rest of the season here, Naveen. Yeah, very much. And the reason why he can take a little low is because, Surya Selvam is always there. Because Marimuthu Selvam, he needs to understand that he's the captain, so he always is there on the court. But he has to also control Velavan Muruganandan today. Number 12, that left corner defender, yesterday went out to raid unnecessarily. And you look at that, 3 losses on the column. 1 loss is solely Pallavan's responsibility. I'm sorry I'm picking out one player, but it should have been him. Because the moment he got tackled out, couple of times, the next raid itself, there was a point that was being scored on the weak left corner. He's a very, very good left corner defender. Number 12 there, Velavan Muruganandan. Today, he has to just forget about his fantasies of raiding. And we're just waiting for that question. Can Nilgiri win the championship in their inaugural season? Raghav Sharma. Wow. Good question. And first of all, I will tell you, Raghav, I will just try to break this in 2 parts. First, I want to see the Nilgiri Knights finish at least in the first or second position, which they can, because that's how they finish the booster round. And when that happens, if they finish first or second, I am very sure they will go through to the finals very clearly. Because that first qualifier, if Nilgiri Knights can get in there in the first or the second position, I'm sure they will do more than 100% to win that and reach the finals directly there, Ryan, isn't it?
Oh yes, the Nilgiri Knights very much capable and one of the contenders to win all this season. But we can look at the Chola Veerans so far. They've won 7 games, lost 15. It's not their ideal season, but I'm sure all it takes is a certain spark to turn things around. And they've got those couple of players coming in today in today's match to come and change their fortunes. As we look at the performance across the last 5 games, yes, we all do hope their new players can, their returning players can change their fortune for them, Naveen. Yeah, that's what they'll be. Will be also hoping, or rather opening on the hope, of course, going out there. Raki Kumari, right? Where do you think the Chola Veerans is lacking in terms of gameplay? Yeah, that is solely the defense. Yeah, the raiding is okay. The defense, when Gautam Murugan actually flips over, everybody just looks very clueless. But that is the reason I think Vineet Munichami and Saran Murugan has come in to strengthen that defense. That is what Panir Selvam Raja has brought into the new fold of the team. Let's see, can Vineet Munichami repeat his performance like yesterday? We will go to the countdown and get this match number 97 underway. The toss was won by the Nilgiri Knights. The first raid will happen from the right to left of our screen as Akshay Desai has got a new haircut. And so do everybody. I think even Ryan, I just had a new haircut today. Because there was so much happening. And speaking about new haircuts, do you like Shah Rukh Khan, Ryan? What a tough question, right? Of course I do love Shah Rukh Khan. Oh, that is what I want. Vela wants to do. Raider out. 1 point, Nilgiri Knights. Get warmed up after those break days. And Velavan, that is the best he can do. Left corner comes around. Indeed, and for a second we thought Arun would escape that, but he did not seem to have a reason or a way to just turn his body and go back. As we can see, the team coach, Mr. Raja, I'm sure he's planned out a strategy, he's planned out a game plan. Can he come out strong? Can his team come out strong? We will know soon enough. Yeah, as Vasant Murugan. See, I was mentioning that in the pre-show. It's number 11 out. He should play more tighter, should not be playing so high line. So Ryan, yeah, in the pre-show we were discussing that see as a new raider is Vasant Murugan. He's come in and he settled down into the team very smoothly. That's how Rajaram would have wanted to do that. That is very good. But for a defender, it's not easy. It's really not easy. Because Vineet Mulchami, again Saran Murugan, of course they are very good as defenders, no doubt about it. That's why they are here in the Yuva Kabaddi series. But coming in and settling into a already, ongoing series, that too at this level of toughness on the Yuva Kabaddi series platform, it takes a little doing. It takes more than little, I should say, for the defenders. Yeah, rightly said, Naveen. As Marimuthu Selvam, the key raider, one of the key raiders of the Nilgiri Knights, is coming in. He's the mighty knight of this team, and doesn't look like he'll get a point here because he's running short of time. He still wants to go for it all the way, but he will have to be humble there. Yeah, he should also be patient enough. And this is Sujit Sagar. After that injury that he sustained, he's come back. He's the sole left raider in today's lineup for the Chola Veerans. And he really needs to stay there as Chola has still not opened up their account. And one tackle point on Brent Raid point already for the Nilgiri Knights. Good that Sujit is just testing waters and going back. And speak about testing waters, we've got Shah Rukh Khan, who's just released his Jawan teaser, and he's tested a lot of water with that. He's brought in one of the biggest directors, young directors who gave blockbuster hits, that is Atlee in Tamil. He's brought in Atlee for Jawan, and there are, there is a big gang of people from the Tamil industry going in out there with Shah Rukh Khan's production. As we will speak about that more, Ryan, as Ayappan comes in for a do-or-die raid.
Oh yes, we talk about Shah Rukh Khan. Do or die raid came in right after 1 that, point, and that is Chola Veerans. blockbuster Jersey stuff, number ladies and 17 gentlemen. out. As the Chola Veerans open their point scoring with that very good point coming in from the raider. That was lightning fast. He did not expect it at all, Marimuthu. Ah, that's wonderfully done. Can you expect this here from Ayyappan Veerapandiyan always? He should be really wary of such things as Vasan Murugan here, Ryan. He comes across on a do-or-die raid. No, Sujit Sagar. Leadership. You shouldn't have gone 1 in to point, flog the Nilgiri hand Knights. Jersey number 13 for the out. ankle hold. Not needed as a raider, but they want to review the bonus. I guess they want to go for the bonus review, is it? No, they won't. The reason I'm speaking about the Jawan movie and all that is because you have that big star cast of Nayanthara, who's from Tamil Nadu, of course the Tamil heroine Vijay Sethupathi, big name, and more than all that, Ryan, for the first time we have seen Shah Rukh Khan in a completely shaved head look. That's a new hairstyle for the King Khan. Yeah, well, that's the beauty of someone like Shah Rukh Khan, right? He goes out of his comfort zones, or it might be in his comfort zone, but he goes out of his base to just get into that role and embrace that role, and that's why he's such a great actor. I think the naturality he has, the simplicity that's there in him, all of it just constitutes to show how good of an actor he is. Oh, just amazing and marvelous. And even at this age, got that discipline to keep up that body physique so much. And yeah, speaking about embracing, one defender likes to embrace the raiders when they are blinded a little, and that is that left corner. Velavan Muruganandan, watch this. Wow, he embraces the raider on that strong back hold and utilizes his height to good effect. Because I've not seen any cover defender or the corner defender go for such kind of an embraced hold. It's not a back hold, it's not an ankle hold, it's an embraced hold. 1 point, Nilgiri Knights. Jersey number 14 out. That we're introducing on the Yuva Kabaddi Series platform as Praveen Kumar INR does not go back in time. Oh yes, and there right now, Nilgiri Knights have done so well. And I'll tell you what, sorry, correction, right? Yeah, speaking to Harshad in the pre-show. Right, Ryan, you know what? See, this was the perfect example as we are into a do-or-die race of 10 seconds left. Under 8 seconds, Arun Kumar Ajapuli still not warmed up enough. 1 point, Nilgiri The Knights. combination gets him now right cover, and the combination of that left cover going for his lower half of the body. So I was just saying, he gets lovely support from Marimuthu and also Surya Selvam. Hey, I was telling you about that, isn't it? When we speak about embrace hold, that is how, even on the visuals, that has to be done. Oh, he's pushed him out. Vasan Murugan has another chance. He's pushed out another defender. Can these two go for the super tackle and inflict it? No. 1 point, Nilgiri Knights. Jersey number 66 out. Yeah, so I'll tell you, when we have a lovely production person as Ashwin sitting in the PCR, what happens is the storytelling revolves after the commentators call it and the visuals are given away. When we spoke about embracing, we just saw the right time it got fired. Just before Surya Selvam went into the raid, we spoke about that, and also we spoke about how that raid of Surya Selvam got a running attack. That is a classical piece, which I'm really happy. It just took me to one of the amazing days in the Yuva Kabaddi series. Wow, Vasan Murugan just pushes him off. This is getting easier and easier for the Nilgiri Knights. 1 point, Nilgiri Knights. Jersey number 55 out. Yep, and the same old story for the Chola Veerans, especially when they are going up against a team like the Nilgiri Knights. This is where I feel they struggle or they lack, because they're not able to establish themselves early on in the game. And when you go up against a team like the Nilgiri Knights, who you've been familiarized with, you should come in with a little more intent, as the first out has been inflicted. 1 plus 2 3 points. Will be the Nilgiri score Knights. after the points All get out, added Chola on, Veerans. and Nilgiri Knights starting strong here. Yeah, Saran Murugan
There should have been a substitute, isn't it, by Paneerselvam Raja. All in. Saran Murugan, last man standing as a defender, goes in. You had Mohan Das Vishwamohan. Yeah, P. Raja should have thought about it. Really. And Rand, the reason why we are looking at this challenger round so much with the binocular eyes is because this is going to decide the positioning and the standings of the summit round. We just had the summit round, the road to finals that was shown in the pre-show. So that is very simple. From all the seasons we have that. We give extra credit to people finishing at top two. The teams going ahead and playing the entire series well gets that extra bit of reward. But if you're finishing on the first or second position, you get one win to go straight through to the finals on July 19th to play. But if you lose, you still have another chance and you can still have a strike at that trophy. And Sudhir Sagar, I think he's not 100% fit here, Ryan. He still, I think, has a niggle. He will be back stronger and back up to his full potential as Marimuthu Selvam, a man who's showcased his potential. He's made use of the talent in regards to, putting out and coming out best in his opportunity that's given in the Yuva Kabaddi series. And as of now, not even a single tackle point. And the question, it just takes me back to that question. What is the problem of the Chola Veerans? Why are they not able to perform better? It's because of this. As I rightly mentioned it out, it's their defense. The defense has been a big problem for them. Yeah, of course, today the Raiders also. I think they're just getting warmed up. And Raja gets up, wanting a timeout. Yeah. Timeout, Chola Veerans. Yeah, there you go. Paneerselvam Raja Substitution. wants the timeout. Let's listen to Raja very quickly. And their substitution as well. அவாய்ட் பண்ணுங்க தேர்ட் ரைடு கட்ஸா அடி அது மாதிரி செகண்ட் ரைடு டப்புன்னு அழுத்தணும் வாய்ப்பு இருக்கும் புரியுதா நான் அதை பார்த்தா ரொம்ப அசால்ட்டாக இருக்கக்கூடாது புரியுதா நான் கட்ஸா அடி ஃபாலோ அடின்ற தம்பி ஒரு உனக்கே தெரியும் ரெண்டு பேருமே ரெடியாக இருக்கலாம் நல்லா ரீச்சுக்கு அந்த ரீச்சுக்கு விக்கியா மேமாத்தி ஆடு பார்த்து Okay, so 2-3 things he mentioned. I'll try to summarize what he said. First of all, he just said for the raiders of the Chola Veerans, you need to be careful on your second raid. Aluthi adipananga, that's what it is. They will try to attack you on your second raid itself. As Vasan Murugan has come out for a do-or-die raid. Stand back, Gautam, stand back. As on that right cover, Vasan has already attacked you. No! Gautam says, I'm going with a chain Raided tackle. out. And 1 point, Chola Veerans. Murugan down. They share the same surname. And this time the point goes to the other Murugan, Gautam. Oh yes, the Chola Veerans getting their second point, and it's good to see them getting it through. Something that they've often lacked on, that is defense, and a very good block there. And I think the Raider also appreciated the effort there, as we have a do-or-die raid now, and the Chola Veerans will look to get another point here, Naveen. Ayyappan Veerapandiyan just got that one running hand touch in the do-or-die race. That's it. And the previous one was the first tackle point there, Ryan, for the Chola Veerans. Now he tries best again, as he knows. He's very quick. He's agile. He's nimble. Can the defense be quiet? Intelligent. Bonus point, Chola He got the bonus point. 1 point, Nilgiri Knights. And he's been surrounded with that. Such a surrendered bonus point that was. Marvelous to see. Such an young brain thinking so swiftly on his feet. Wow, Ryan. Utilize that in your basketball match somewhere. Yeah, well, it honestly depends on the crowd and my coach. Then I would, change based on what's happening. As Surya Selvam now comes in for the Nilgiri Knights, and he tries the running and touch. Did he get the touch? Raided out of bound. He's going 1 to have point, to go Chola out of Veerans. bounds. Yes, he slipped there, and it's good to see the Chola Veerans team entirely checking up on him. That's true sportsmanship right there, Naveen. Oh, totally. Just don't land your feet. Just leave it open. Yeah, don't put weight on that right knee, Surya. Just take it easy. Yeah, this is one amazing factor by all the Tamil teams. Oh, he's twisted his knees. I hope he's not cut out anything. He's gone into the lobby. That was what first was indicated by Praveen Kumar INR. He did not see the twisted knee, as our physio team immediately attend to him.
But Ryan, I hope you also don't have not forgotten that Tala Sivakaran, the coach of Palani Tuskers, the previous coach, he lifted Madhu Kaverappa and he helped the opposition captain. That was the biggest level of Kabaddi spirit. Hampi Heroes and Palani Tuskers were clashing upon on a match. Madhu Kaverappa actually similarly twisted his ankle, not the knee. He just twisted his ankle, he could not get up. And Sivakaran ran. The opposition coach ran to the opposition captain. He lifted him off the Kabaddi match. I don't see it any game doing that. Forget even any local or international matches. I'm overall challenging everybody to that. Cricket, hockey, basketball, football. I have not seen that happen. Rightly said. I mean, I think, coaches are often in that position where they're, I'm not trying to say they're wrong, they're in a prideful position. So, they're often ordering, they are the ones giving the orders whenever things need to be done. And for one coach to go out of his way and do something like that, that is great. And for this raider, 1 point, he didn't Nilgiri go out of Knights. his way. For this defender, he did what he always does, got that ankle hold and the Substitution, Nilgiri immediately- Knights. Please come. Number 18 in. Yeah. 66 Ankle out. hold was strong from 77 Velavan out. Muruganandan. He is very, very good Great. as a defender. I like him there. Not as a raider though. As there is 67. more substitutions that's happening. Yeah, because Surya Selvam had to actually come in and get revived because of that ankle hold. Because he is not there, there's a substitution that's happened for the Nilgiri Knights. I think ankle hold attempted. Gautam Murugan says that's okay. Left corner. Get out. We need 1 point, Chola even if you Veerans. misses out. I am there on the right cover to send the opposition captain back. That's the first time he's been tackled. Great. Strong block, Ryan. Very strong block. Yes, Arun Kumar now coming in for the Chola Veerans. As the Veerans have gotten a few points now in defense, it looks like that is working. Now they're struggling to get points in the raid, but Arun Kumar here, his gun once again for them. 3 points, And, Chola the Veerans, Nilgiri jersey number Knights. 88. Oh, this is 9, a super raid. Take a look 10 at this. out. The Nilgiri Knights, nothing going their way right now. And the timeout is turning out to be very, very positive for them. Attacking on the back line, Ryan. That's a big problem for Santosh Srinivasan's right corner. And then Manigandan Sudalamani comes across. And then even with that sort of an effort from Vasant Murugan, it's just taken off. I've not seen Manigandan Sudalamani actually miss out on a tackle. Oh my God. That is a half-changing raid, I will go ahead and call it. It's not a game-changing though, but it can definitely change this half in the favor of the Chola Veerans. They're coming back strong. Very, very good one. He just needs 6 raid points to reach 100 raid points now. Arun Kumar Anjapuli has done well. He's got 3 out of it and just needs 6 more. Brilliant stuff from the captain. He had gone in for some university work. This is what I asked Harshit. Where is Harshit? I asked him in the pre-show that will Velavan go to raid? And Harshit said, yeah, he may go. And I said, yeah, only to even irritate us, he might go and put in that solitary raid. But he should understand that there are only 3 defenders. Goes back intelligently. Yesterday, Ryan, because of his raiding fantasies, he just burnt all that chances what the Nilgiri Knights had to win. And he just gave away the match to Palani Tuskers. Yeah. I mean, that often teaches you the lesson. As Sundara Vishwa come in, do or die raid for him, which means he has to go in for it. He can try the bonus as well, but I'm sure the Chola Veerans defense will be smart enough to contain that. Looks like Bonus he's point, gotten the Nilgiri bonus Knights. already. He's confident. Yes, he's gotten the bonus. Nicely done by Sundara Vishwa come in here. Arun Kumar Anjapuli was not ready for the ankle hold, isn't it? He just stole that under his nose, Sundara. And now in a super tackle situation, it's a do or die race. Arun Kumar Anjapuli shouldn't have come in. He should have sent in the more quicker Ayappan Veerapandiyan, who's there on the match. The more swifter of the lot. Oh my God. Velavan. Let us say
1 point, just Chola gave Veerans, away that jersey number point. 12 out. He wanted to go attack Arun, but he overran him. The previous occasion, he embraced him. This time, Wait. he just overran him. Slight pause, Ryan. Slight pause. And Arun saw an escape route. Yes, and that now is an added pressure onto Sundara Vishwakanan, because he now would not only want to score a point, but would also, have it in his mind to revive a man, for which he needs to get a touch point, because the bonus point will not let you revive a man. Bonus point, But Nilgiri nevertheless, Knights. if you can get the bonus, that's still 1 point, and you continue to score. So smart enough, and the super tackle is still on. Correct. And, Sundar Vishwakanan actually said we were ready for the substitute. Couldn't allow us. That's a jersey pull for sure. He's still not crossed the midline. Let us say 1 point, Nevertheless- Chola Veerans, jersey number 66 out. Nevertheless, they will get it. A slight jersey pull, even if that tackle would have been there, and it wouldn't have been Right. in the Nilgiri Knights' favor. Now, last man standing. Now, watch this. There's a jersey pull that happened from Manikandan Nethamani. There. Oh, yes. Rightly spotted, Naveen. There was a very clear jersey pull there. And the good thing that Sundar Vishwa has done is, by getting those bonus points, as you can see this, even if now the all-out takes Wow. place, which is going to happen, the Nilgiri Knights will still have the lead, and it will be 1 point. Bonus So point, Sundar Nilgiri Vishwakanan Knights, is red gotten round, the 1 bonus plus 2, point, 3 and a smart points. move by Chola him. Veerans. However, at the same All time, out, Chola Nilgiri Veerans has Knights. successfully come back into this match, especially after that timeout, and All they've in. been the strong and better team. Ryan, success is just not a word to, I think, compare what they've done. Strong dash by Gautam Murugan. Oh, Sundar Vishwakanan crashes into the advertising hoarding. You know what? It was 11-4 in favor of the Nilgiri Knights. Can you believe this turnaround from Arun Kumar Anjapuli? Yes, that timeout worked, but it was 11-4, and then it was Half time, 12-4. change the That's code. it. And the way it got changed is on this occasion from 12-4. Can you beat this? They have come back to score 9 points and just give away 2 points for the Nilgiri Knights. That's a mega comeback by the Chola Veerans in the first half, as that is what it suggests. The Raiders have brought them back along with a couple of defensive points, and that is helping them to keep up the pace against the Nilgiri Knights for the Chola Veerans. We'll sit for a short break, and me and Ryan will come back soon to see if the Nilgiri Knights have had that fighting effect to come back and push off the Chola Veerans ahead. Welcome back, everybody. I'm Navin Shauri. Along with me is Ryan James this evening for this Tamil Derby, where the Nilgiri Knights started off like the champions, but then the Chola Veerans have come back like the fighters. It's very good to see the Chola Veerans coming back. Yeah, this is what the high pointers of the first half is all about. Nothing worked. The Raiders, the defense, nothing worked for the Chola Veerans for the first 12 points of the match. And then the all-out was inflicted. After the all-out, there was a small timeout that was being taken off by Panir Selvam Raja. He said, Raiders, be attentive on your second raid. Surya Selvam, I hope he is all fine. He should just come back nicer is what I feel. But Velavan has done well on that left corner. Got a couple of tackle points, kept the Nilgiri Knights in the hunt. But then the Chola Veerans, after that all-in, this was the half-changing raid as I mentioned. There is where Arun Kumar Anjapuli got the momentum going. He was completely warmed up, and then Gautam Murugan also says, even I am warmed up, and they have made a massive comeback. From 4-12, Ryan, they've given away the Nilgiri Knights only 15 and 13 as the Nilgiri Knights won the toss. They will be raiding first in the second half. Yes, and credits to Sundara Vishwakanan, because the last 3 raids of the Nilgiri Knights were all ones where he got the bonus points, and if you don't add those bonus points, Chola Veerans would
have headed into the first half with a lead. So credits there. However, as Naveen said, you cannot not give credit to the Chola Veerans because they've been spectacular, especially the way they came back. And this is the intent and this is the intensity with which we want to see them play, Naveen. Yeah, totally. No doubt at all. And Gautam currently stands with 46 tackle points. And he also might be that defender to reach out 50 tackle points. And we already have top three defenders, 2 corners and 1 cover defender. Massive kick. Oh, what a... He was just... 1 point, Chola Veerans. Jersey number 10 out. Dreaming. Yeah, because the day is gone. He was really evening dreaming now. Watch him. Boom. On the chest. Oh. Arun and his long legs. Yeah, well, whether he was daydreaming or evening dreaming, it was surely a nightmare for him. As Sundara Vishwakanan coming in once again, he has the bonus available. That's what he's gone for all the time. This time, the defender is gone for him, and he's decided to say, Sundara Vishwa, you can go back to the bench. First time in the second half, we see Saran Murugan actually going out there from the left cover to go for the attack. This is the first ever attempt by Saran. And he's been successful in that because he went at the right time. Because Sundara Vishwakandan did not expect it at all. Because the entire first half, he did not even attempt for a single tackle. And now see what he's done. As still Vignesh Murugesan has actually come in. Because he's come in place of Sujit Sagar. Because Sujit Sagar did not look fit. He really struggled. And that showed in the couple of rays that he just went in and crossed the balk line. Vignesh, I would have wanted Mohandas Vishmohan to actually be looked upon as a choice than Vignesh Murugesan. Yeah, Vignesh is good, but Mohandas is better. Score is tied at 15 each. Chola Veerans completing the comeback by tying the score right now along with Nilgiri Knights. So from here on, how the teams are going to go, because both are, it's a neck-to-neck situation at the moment, because both the teams are very much capable of scoring points, especially in regards to how the tempo of this game is gone. So Naveen, since both the teams are at a similar level now, what do you think should a team do from here on in order to complete a successful victory in this match? Interesting topic of discussion. See, first of all, for the Nilgiri Knights, they should not slow the pace down. That will be, a big blunder that will come back and bite them later, like say when there is 6 or 7 minutes left in the match. And for the Chola Veerans, their defense should hold on. As simple as that. If either of this happens, one team will take up that lead, and I will really hope the Nilgiri Knights' Raiders will actually go ahead and dictate some terms. This is not good. Marimuthu Selvam is still not looking to score points. He is trying to inflict the do-or-die raid, but the next raid will be a do-or-die raid for the Nilgiri Knights. And Panir Selvam Raja, wonderful time to take a time out. அவன் ஒரே ஒரு அடி அடிப்பான், மண்டே போட்டு அடிப்பான், கட்டிங் அடிக்க தெரியாது. இவன் ஃபாலோயிங் வந்தா வரும், அவனை இழுத்து தொடணும். இப்படி அவன் செக் கீழே தான் அடிப்பான், முட்டி கீழே. கன்ஃபார்ம் அவன் எடுப்பான். அந்த லைபர் லைட்டா நீ தெரியக்கூடாது, ஜம்ப்ல போற தெரியக்கூடாது. Ayappan Veerapandiyan has been given a lot of instructions by both Raja and Arun Kumar Anja for this do-or-die raid. I think they have plotted against Velavan. That's what they've told them. They have asked him to go as deep as inside as possible. And he's asked him to have a very quick footwork. Right. That's what they said. No! He did the opposite. 1 point, Nilgiri Knights. They were plotting against Velavan Muruganandan. Santosh Srinivasan says, hi, I am here with the double thigh hold. Oh, take a look at that. That's a heroic move, honestly. And I'm sure in the slow motion, it looked even more beautiful. Shout out to our camera team there as a do-or-die raid now. Marimuthu Selvam. Oh, yes! Wait. That is a beautiful raid. I think he's crossed well. Raider out of bound. 1 point, Chola Veerans. Good call. Akshay Desai agrees with you. Marimuthu does not. Raider, Can they you go want to review? Yeah, Raja Defender. is happy that even Raider. if they don't get the review on their side, Gautam has gone in for a nice dash. Mohan Gowda will be coming in. What's your challenge? Raider safe? Each. Only once. Raider safe. Go back. Yeah. TV umpire. Nilgiri Knights challenge is Raider safe 1 point. Audition, Raider out of bound, Raider out. Please review.
Yeah, Rambir Singh's got some work to do, but Ryan, Mohan Gowda and Jay Kumar, they have a competition going around with themselves. The bonus was not taken. That was a do or die raid, by the way. The bonus was not taken, and Gautam thought that the do or die raid is for the defender. We've also spoken to Gautam in a very jovial and a funny way, saying, Gautam, listen, whenever there's a do or die raid, it's not for the defender, it's for the raider. And without the bonus, he stepped into the lobby already. Right, then forget the dash. Forget the dash. He stepped into the lobby, and this is going to be a very, very unsuccessful review for the Nilgiri Knights. It's a point for the Chola Veerans. Now, I don't think so they watched that, Ryan. The Chola Veerans went for a review saying, or rather the Nilgiri Knights went for the review saying he's just crossed the midline. And Rambir Singh has not even seen whether he's crossed the midline or no. Because without a touch, he's just gone into the lobby. And according to my books, that's out. Wow. Yeah, I think that aspect was not seen. Like, even I didn't think of that aspect because we all thought that, there was a touch, and that's why he went into the lobby, because in terms of crossing the midline, it was done properly. So yes, it's probably the identification of the fact that he didn't have any touch and he stepped into the lobby, which is why the point was given to the Nilgiri Knights. Yeah, and even that replay suggested Gautam touched him after Mari stepped into the lobby first. Yeah, Mari Muthu, even he does not know what happened in that moment. The touch of Gautam came in after. Review unsuccessful. Raider out. Unsuccessful as expected. Raider out. Mari Muthu is out of here, but Gautam, don't celebrate. This is not your tackle point. This is never your tackle point. It's Mari stepping into the lobby. Now, did he? Yeah, he comfortably crossed the midline, but he stepped into the lobby without any touch on the defender. And Gautam, I think, was just celebrating for the team, Ryan. He's not a selfish person at all. Yeah. Very well. The score once again neck to neck, 15 minutes remaining in this game as Arun Kumar comes in for the Chola Veerans. Chola Veerans have completely changed their game style, because if you saw us early on in this match, all our viewers on FanCode, I'm sure their first impression would have been like, oh man, the Nilgiri Knights once again, going all dominant on the Chola Veerans. But the Chola Veerans, as the name suggests, Veerans, it's like the Veerans were sleeping and they just woke up all of a sudden, and now they're just sitting there trying to take command of this game here, Naveen. Oh, was he blinded? Was he really blinded? No, Vasan Murugan. 1 point Chola Veerans. What a strong dash that was from Saran Murugan. My God. Ryan, that was a spear heading into him. Boom. Oh. That is like more than a spear. Like, honestly, if you want to know the impact of the spear, it is the end position of the raider. The position in which the raider completed, like he was just seated there. That is a spectacular move, and I'm sure that has to be the moment of the day. Even though I know there are two more exciting games coming up, that is definitely my moment of the day now. Yeah, totally. Let's go back to that replay. I love the facial reaction of Vasant Murugan. We can only see his facial reaction. Watch his face. Boom. And look at him. Oh. Like as if watching Rowan Atkinson. Bonus point, Nilgiri Knights. As there's a bonus being stolen away by Velavan Muruganandan. My God. Velavan has ran it. Gone in a bonus point. Do or die race for Arun Kumar. He just needs 3 more points. Ankle hold attempted. And Velavan gets another tackle point. The captain Raider Arun Kumar out. Anjapalli 1 point, has to go Nilgiri back. Knights. Diving ankle hold, that's good. Yep, And you know Nilgiri what, Knights now doing good on the defensive side. Take a look at that. Very nicely done. He dived in and gripped onto his ankle, and he was not letting go. There was no way he was letting go, as the Nilgiri Knights in 1 point ahead. Point ahead, but only 1 bonus point is, getting a pearl off an oyster. Every oyster won't have a pearl, Mr. Velavan. We saw what happened yesterday. Yeah, goes back empty-handed. That's okay. That is interesting. And you know what? Thankfully, somehow we missed seeing the bonus points of Velavan,
because I would have been really unhappy to see him race. I was happy when he got lucky with the points, but when he don't tell me, no, Ram, our EVS operator is now taking revenge on me. Ram, I know you have that hairstyle of Kisasa movie hero, and all your hair is on your forehead and your right eye is not clearly seen and it is covered completely. You wanted to irritate me and put off that bonus replay. Good comeback, Ram. Good comeback. The scoreline now: Ram 1, Naveen 0. Yeah. Very much. I said I was happy I didn't see that bonus. Come on, Ram. Be ready for this. Come on. I have a chance now to get all equal on our EVS operator, Ram. Gives us that replay. In a duo direct. Goes out there and Red taps the midline. 1 point, Nilgiri Knights, jersey number 33 out. Taken a point because of Taran's error. He's 2 got points, 2 points. Nilgiri Knights, jersey number 33 and 11 out. Oh my God! Those long legs, Ryan. You just saw what happened? Before Time he out, touched the Nilgiri midline, Knights. He just back kicked Gautam, who was just standing right there. மிஸ்டேக் பண்ணிடுது தைரியமா இருக்கு மாதிரி வசந்த் டேய் இப்போ அதை இப்போ நம்ம கண்டிப்பாக அப்பன்னு சொல்லலாம் வாசல் எடுத்தானு அவங்க அப்பன்னு சொல்லலாம் அந்த அவன் மட்டும் ஆடுவாங்க டைம் இருக்கான வந்தானே ஐயப்பன் சந்தோஷ் மாதிரி ஆடிட்டுமா நீ ரைட்டில் ஆடுறியா டேய் வேணா இவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்க நீ கவனமா Oh, right. Coach also has told Velavan using that means if needed, go with Velavan on the raid. But he wants the raiders to be safe. See, that's a better option. I always go out there and support Velavan going in a duo direct because that saves the raiders. But if he gets tackled out, nobody is there on the left corner. That's the problem. That's the problem, Brian. And Vignesh Murugan now is under pressure for the duo direct. And as he crosses the midline, I think he has. Bonus plus 2 points, Chola Veerans, jersey number 12 and 66 out. That's massive. There we go. Moment that was put across, Naveen, as to how important he is, especially on the left corner. He's gone and compromised himself, and a beautiful raid, a super raid to tie the game. And this game is very much on, because we all thought maybe the Nilgiri Knights might once again try and inch away, but the Chola Veerans have come back. Or take a look at this, Vasant Morgan is just 1 gone point, and attacked Nilgiri the left Knights, corner and got jersey the number point. 66 out. And that was as fast as an arrow. Arrow going in for the toe touch. Right there. And Vineet did not have any clue about that arrow coming in. Oh my God. And we always have spoken about how Velavan Muruganandan actually goes out there and picks up that pearl from an oyster. I'll tell you that in Tamil. Velavan, எல்லா சிப்பிலையும் முச்சு கிடைக்காதுப்பா. Brian, you understood what I said? No, Naveen, I did not understand what was stated there. And Right, no, I'm sure yeah. the defender here did not 2 understand what points, Chola happened. The Veerans, way jersey the number Raiders 66 and 88 slid his out. way back into the midline. This is a big error. Manigandan Sudalamani going across for the dash first on Arun Kumar. Outside the block line is tough. Oh! And Arun Kumar just did what Velavan did. Even Arun said, even I can use my long legs. Remember that? Velavan actually kicked out with his long legs before touching the midline. And it was not intentional at all. And even Arun Kumar unintentionally kicks Santosh Srinivasan in his previous race. Right, long doing the job. So what I mean to say was, for Velavan, simply is oyster, okay, where you have the pearl. And only few oysters can get the pearl. And I'm talking about the natural pearl inside an oyster, right? I just said, not all the oysters will have pearl. That's what I said. Substitution, Nilgiri Knights, please come. Number 4 in, 17 out. 2 in, K. Harish 18 out. comes in. Yelumalai Murthy comes in. Mari Muthu is being taken off. The captain taken off and is being replaced by another captain. K. Harish. Yeah, K. Harish, Vishwakandan comes in. Yeah. another
very capable player who had a very good stint early on. But he did lose his way a bit, but I'm sure he's still a key player for them. Just like this man, 1 Vasant point, Nilgiri Murugan, Knights. is gone Jersey in and number taking 11 one more out. point, and he flexed it nicely as the game is tied once again. Yeah, Pawan Kumar Sharawat will be really happy with that diving hand touch. He was the one who actually introduced that to the Kabaddi world. Pawan, he was being called Pawan Putra also for that diving hand touches on the covers. And even Gautam Murugan, one of the best defenders, has not been able to gauge that one. Right, Nilgiri Knights now trying to fight back. That's good. And from a 20-20, it's become 22 all. Arun Kumar just 1 point away Static time from out. a century of rate points. Now, who do we go to listen to? I've told Deva, first the trailing team. difference Whether Deva wants to hey, go, தம்பி he wants உனக்கு to go உனக்கு Chola கேளுடா Veerans. நீ ஆடிலாம் நீ இன்னொன்னு சொல்றேன் பாரு தம்பி நீ வீக்கா இருக்கிறன்னு சொல்லிட்டு இவன் டீப் அட்டெம்ப்ட் வரும் உள்ள நல்லா வந்தா டபுள் தகவல் எப்படின்னா ரொம்ப அட்வான்ஸா இருக்கும் அடுத்து அடிச்சுக்கணும் இல்லைன்னா வேணாம் ரொம்ப டீப் வரலன்னா அட்டெம்ப்ட் விட்டுரு எனக்கு எப்படி இருந்தாலும் வரும் இந்த அட்டெம்ப்ட் அவன் பண்ணுவான் ஒன்று உனக்கு வரும் ஏய் இவனுக்கு வந்தாலும் நீ என்ன பண்ற பட்டுன்னு அடிச்சிரு இல்லைன்னா விட்டுரு ஏறி ஏறி இறங்க Uh-oh. Right. ஏய் தம்பி உனக்கு கிடைச்சதுன்னா பண்றதை பண்ணு காலு கொஞ்சம் ஃபுட் மாறுது பாரு ஏய், கொஞ்சம் இதாகுது பாரு அதை பார்த்து ஆடு பேசுறா தம்பி பேசு Okay, okay. Right, first of all, what Raja told was for the defenders. I think he's suggesting that Saran Murugan might be the weaker link and they will come to attack him. And when that happens, Praveen Kumar Ayanar has to go out there and attack the raider. That's what he said. அவன் வீக்கா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை அடிக்க வர்றாங்க. That's all very clearly meant that Saran Murugan is just put out one attempt. And if the raider comes against Saran Murugan, it's very clear suggestion that the Praveen Kumar Ayanar should go for the attack on Vasant Murugan. But Vasant, very intelligent. He goes out there and starts as a left raider, then converts himself as a right raider. And Praveen Kumar has been dashed out. 1 point, guys. 1 point for sure. You've seen the defenders 1 dashing point the raiders. each. What is that? Now, they'll have to challenge this. They can't challenge this. How? Right, when a defender is being dashed out, I think the raider. Red. Oh, okay. I think he did not have any contact with the defender. And that is why the other team members have come in to tackle Vasant. And that is why it was given 1 point each. Yeah, good decision from Akshay. Now this is a do-or-die raid, Ryan. Yep, Ayyappan in the do-or-die raid. Let us say, Ayyappan 1 doing point, it Chola strong. Veerans. Jersey number And 66 a very out. good turn from Ayyappan, and Manikandan is disappointed once again. Sudalamani is not happy at all because this is what happened to Nesamani. Yeah, look at Sudalamani there, standing out there and shouting out to his partner. And Ayyappan Veerapandiyan is very good, right? He's slim, he's short, he's very agile, and Harish has been tackled out. That is what the coach said. Raider out. Harish will come 1 to point, Saran Chola Murugan Veerans. from the left cover. That's what exactly happened. And Praveen Kumar Ayanar came across. See, it's so good to listen to your coach, Ryan. Yeah, actually, but this is a statement tackle from what I saw, because the Chola Veerans, you can see the entire team getting in on it. They all wanted a piece of it, and the Nilgiri Knights are down to just 3 men. This is a very crucial moment because we can see it's just 4 minutes and 50 seconds remaining. If the Chola Veerans can get an all-out here, it will be very big. It will be very important. So the Nilgiri Knights have to be strategic from here on. No. Arun Kumar is intelligent. He will go back, Ryan, because all 3 were defenders. All 3 were defenders. Yelamalai Murthy and Manikandan Nethamani and Velavan. So all 3 were defenders. Arun Kumar went back. Now what they'll have to do is they'll have to tackle out Velavan. That's a lovely diving Raider control out. from 1 point, Praveen Chola Kumar Veerans. Ayanar. And K. Harish does not want to see that, as even Vasant does not want to see what just happened. They're turning away their faces. This is a game-changing tackle for sure here, Ryan. This is going to dictate terms. And now Arun can just go back. Inflicting the do-or-die raid. No, that was not intelligent. That was really not intelligent by the captain. It's a strong angle. Yelamalai Murthy will not leave
both the ankles, and he's been covered in the arms Raider out. of Manikandan. Super tackle. It's 2 a points. super tackle, Nilgiri wonderful Knights. work from Sudalamani and Elumalai. He got too greedy, Ryan. Substitution. Nilgiri Yes, Knights. Please he come. got too greedy Number there, 17 in. and he's 2 paid out. the expensive price of 2 points. Just when you had a Red. 3-point lead, you could have possibly put out a all out over there on the opposition, but you've given the opposition 2 points, and a very big moment there for the Nilgiri Knights, because that's brought them back into the game. And right now Marimuthu Selvam has the opportunity to get a point. He's not gotten a point till now, and he would love to get a point here. Yeah, he was being substituted out. Now he is re-inducted back in on the mat. Santosh Srinivasan has been revived. That is not looking good. That's really not looking good for the Chola Veerans. Arun Kumar. Oh, he has such a good kabaddi brain over his shoulders, but that time Reed getting the better of him. He should have just gone into instinct the do-or-die race instead of getting tackled out, because there were just 2 defenders, and Marimuthu Selvam has been struggling today. So even if Mari would have been reinducted back in, that would have been on a do-or-die race. Not a good strategy. I just said Praveen's tackle was a game-changing one, and this is good. This is very, very good from Raider out. 1 point. Chola Veerans. Not a raider. A defender comes in. He's also shot, and the dash was very much on time. by Substitution. Murugan. Nilgiri Knights. Please come. Number 2 in. 17 out. Yep, Santosh will definitely not be happy Red. with that, because he's been dashed out, and the Chola Veerans now, this game is just so neck to neck, because we can't say anything when Chola Veerans have a 2-point lead, because the Nilgiri Knights can also just simply get a super tackle like they did in a previous instance. Actually, the last time there was a similar instance, this is what happened. But it looks like Arun Kumar has gotten the point. That should be his 100th point. Arun Kumar going big, 1 gets his point. 100th Chola point in Veerans. style. Jersey number 9 out. Totally in style and so much in control. Substitution. Running Nilgiri and Knights. charge Please come. on Number Murugan. 17 in. 2 out. And Raja Ram is going out there having all the substitutions. Red. That's going to save this game. Look at this, 175 raids. Yeah, as a captain, all those 75 extra empty raids had to be put in to save the team and the match. Now Marimuthu. Chola will give him only the bonus point. Gautam, watch out. Don't get eager. Don't get greedy. No, Gautam, no. Hold yourself back. I'm only concentrating on number 11 right cover, Gautam. Only he has to go. And he does not earn this time. Bonus point. Nilgiri Goal Knights. for the Raider Antelope. out. 1 plus 2, And 3 points. Marimuthu was Chola Veerans. completely surrounded All out. by the Nilgiri other Knights. defenders. I don't think Raider, so. Raider. Nilgiri Knights is going to come This back, could- Ryan. All in. I honestly don't know, and the way Chola Veerans have come back into this game, the way they established themselves into this game after the first 10 minutes or so in the first half, they've been a side that is so invested in this game, and I don't see them heading into a situation where they're going to lose this game from here on, as the Nilgiri Knights will continue to do Number stuff like 17. that. And take a look at that, Arun Kumar take a bow, because he's just shown us what this game has been like. The Chola Veerans have done exact same thing to the Nilgiri Knights in regards to winning this match, just like what Arun Kumar did right now with that defender. Yeah, totally dominant, isn't it? 1 point. Marimuthu Chola Selvam. Veerans. Jersey number 17 out. Just did not understand what to do. Marimuthu just went in for a solo block on Arun Kumar because he's frustrated. He's not got a raid point today. Completely, off his true colors. Look at Gautam Murugan. Red. A high five for him. 5 points out of the 8 tackles that's attempted. So 3 have gone wasted. That's also there. Watch out. Velavan, enough. My God. Raider out. 1 point. Chola Veerans. Raid out. I think the dash was first of all successful, and Velavan thought he's not being dashed out, and he wanted to go for more points. Yep, That's a let's very take a strong look at the back hold. replay. We can Red. He was out. Yeah. He was dashed out first instant on Karan Murugan's back hold. He tried to turn, that is good. Velavan has that in his mind that he is a half raider. But sometimes that is not working out, and even today it's not working out
Arun Kumar Anjapuli, 10 points today. All 10 have come in touch points. No bonus points. So 10 Time times out, Nilgiri Knights. he sent the defenders out. What? Ah, there's a timeout now. செகண்ட் Rajaram, let's listen to Rajaram quickly. போடா தம்பியா புடிச்சு வேற அவன் கிட்ட போக கூடாது அவன் பனில புடிச்சு தள்ளுவான் நீ ரைட் தானே போறா இல்லனா வந்துரு Okay, so I think what Rajaram would have told is we have 7 points as a difference. Just go across the block line. No, Gautam, no! Come on! 1 point, Nilgiri Knights. Jersey number 11 out. Get 1 point out of this match. Yeah, they were never Number 17. getting that 1 point. But second match in a row, Ryan. Match they have over. lost it in the challenger round. For a team that was unbeaten in the booster round, challenger round is started off as I think they've been starting off as a fresh series. My God, massive victory for the Chola Veerans. 33 for them against Nilgiri Knights 27. Massive victory indeed, and Nilgiri Knights, honestly, I'm sure they're going to get a lot of treatment from their coach, especially now, because this is not what anybody would have expected out of this team, especially as they would come into this challenger round. We thought, okay, fine, this is where a team starts their build-up towards, keeping the Southern round in mind as well, and looks like Chola Veerans are a team who's, come in with that preparation, and the way they played today, they had a shaky start, but the way they've come back, oh, that's spectacular, isn't it, Naveen? Yes, marvelous. There's no other terms to actually go out there and use that. They came back in the first half, and then the second half also. They were very good, and they did not allow the Nilgiri Knights Raiders, especially Marimuthu Selvam today, being completely off color and not in his original form, has hurted the Nilgiri Knights very badly. And Ryan, in the second half, Chola Veerans have got 20 points. Now, where do you go out there and get that redeemed? 20 points being scored in the second half by the Chola Veerans. That is humongous. And on the other side, the Nilgiri Knights actually were on 15 when the first half ended. So, like 27 minus 15 is just 12 points. Can you see where that 8-point difference came in? So 12 points only for the Nilgiri Knights in the second half as we are watching that high pointers, and this could have been Nilgiri Knights' moment to make a comeback after the super tackle, but they did not utilize that one. And then the Raiders especially did not work for the Nilgiri Knights today. That is why only 12 points overall in the second half. Yep, that's where the problem was for them, because they just struggled every now and then. I think the Raiders had more positive moments after getting dashed out or after getting knocked out. They would do something, and cross the line. However, we can take a look at the summary here. A 6-point separating these two teams. When it comes to rate points, Chola Veerans getting one more than the Nilgiri Knights in terms of tackles, 11-9. A couple of all-outs for the Chola Veerans compared to the first all-out of the match, which was inflicted by the Nilgiri Knights. However, 2 extras, 2 super rates for the Chola Veerans. Not to forget that one super tackle, which Naveen said could have changed the Nilgiri Knights' fortunes in this match, but it was not good enough to change their fortunes in this match. Yeah, totally not good enough. And see that 2 super rates where bonus plus 2 was given to Ayappan Veerapandian. That too in a do-or-die raid. And that is why I said the Raiders of Nilgiri Knights have not worked today. But Arun Kumar Anjapuli comes back after missing out a few matches in the Yuva Kabaddi series. Comes here, scores his 100th raid point, and then also goes about his job as easily as it is for the captain. 10 raid points out of 22, which is okay. Strike rate 45 as expected. He's kind of that Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane types in the raiding, isn't it? Yeah, well, that's what his tempo says. And total of 9 tackles, which got him 5 tackle points. Gautam Murugan getting their high five, and a very important high five for him, because the Chola Veerans often struggled in defense, and that's where Gautam stepped up in this big match against a big team, and he's put it out well, very nicely for his team there, Naveen. And the next match is also a big one. Periyar Panthers, they will be eyeing the Chambal Challengers. Chambal Challengers yesterday gave us a thriller, a goosebump of a match. But today against the Periyar Panthers, can Durgesh Kumar
get a lot of rate points against Lokesh Gosalia. That is the contest that's coming up. Stay tuned at 6:45 as we will just go out there and take a break and come back soon at 6:45. Thank you so much, Ryan. It's always wonderful to be with you in the commentary box. I'm Navin Shori signing off. Thanks a lot, guys. After 11 matches unbeaten streak, Nilgiri Knights consecutively lost their second match in the Challenger round. Welcome to the post-match presentation of match number 97 of Yuva Kabaddi Series Summer Edition 2023. We would like to start this presentation with thanking all our partners first. Broadcast partner FenCode, Fantasy partner Dream 11, Physio partner Department of Sports Sciences College of Physiotherapy, Hospitality partner Ginger Hotel, our healthcare partner Ramakrishna Specialty Hospital. और चलिए आज हमारे साथ प्रेजेंटेशन में जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर अविनाश कुमार सर, एंटी करप्शन यूनिट युवा कबड्डी सीरीज। आपका तहे दिल से स्वागत करता है सर युवा कबड्डी सीरीज। और ये मुकाबला खेला गया चोला वीरेंस बनाम नीलगिरी नाइट्स, और एक दफे नीलगिरी नाइट्स ने लगभग 8-9 पॉइंट की लीड बना ली थी बड़े शुरुआती क्षणों में, बट उसके पश्चात चोला वीरेंस वो फॉर्म में आया, वो फायर अप हुए और इस मुकाबले को अपने पूरी तरह से नाम किया 33-27 के साथ। सीधा चलेंगे अब अवार्ड्स की तरफ और शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रेडर ऑफ द मैच के साथ। तो चोला वीरेंस के लिए एक टीम नहीं, एक बल्कि बहुत बड़े खिलाड़ी भी वापस आए। वो थे अरुण कुमार अंजापुली और आते ही अपनी टीम के लिए निर्धारित किए 10 रेड पॉइंट्स। आइए देखते हैं। What a benchmark of comeback यहाँ पर प्रस्तुत किया है इस खिलाड़ी ने, बहुत ही अद्भुत लगाया और अपनी टीम के लिए सुपर 10 के साथ जीत दिलाया। तो अब ये समय है बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की बात करने का, वो रहेंगे चोला वीरंस के। वन मोर टाइम, अगर पिछला मैच वो नहीं चले तो समझ जाइए कि अगला मैच वो हाई फाई बनाने वाले हैं। गौतम मुर्गन ही 5 टैकल पॉइंट्स और अपनी टीम के लिए सील किए बिग विक्ट्री। देखिएगा और जब जब ये खिलाड़ी अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होता है बड़ा ही एफर्वेसेंट नजर आता है, और आज भी वैसा ही अफेक्शनेट कर देने वाला इनका परफॉर्मेंस। आइए अब सीधा चलेंगे कबड्डी कमाल ऑफ द मैच की तरफ। तो चोला वीरेंस से एक और ऐसा टैकल नजर आया जिससे कि पूरी तरह से सोलो वहां पर किया गया था, और वो था कमाल मूवमेंट जिसे लगाया था सरन ने। सो आज जो मिक्सचर आप सभी को नजर आया सोलो टैकल्स और कॉम्बिनेशन टैकल्स का, जिसके चलते चोला वीरेंस ने अंत में आते आते मुकाबले अपने नाम के। बट दैट्स ऑल फ्रॉम द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
Good evening, all. Match 96, Chambal Challengers versus Periyar Panthers. चंबल चैलेंजर टकराएगी पेविया पैंथर्स के साथ इस एडिशन के अंदर मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात। नमस्कार, स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का मैच नंबर 98 युवा कबड्डी सीरीज का समरी एडिशन। जोश, जज्बा, जुनून, इन सब का तो पता नहीं, लेकिन जज्बात बहुत ज्यादा जुड़े हैं युवा कबड्डी सीरीज के साथ। तो चलिए मुकाबले की शुरुआत करते हैं। दोनों टीम्स को मैट पे बुलाते हैं। ओवर टू हर्षित। तो दोनों ही टीमें अपने अनुभव के साथ एक कठोर शिक्षक के तौर पर परीक्षा ली है इस कबड्डी के मैच ने कई दफा उन दोनों टीमों की। अब कौन से पार्ट ये दोनों टीमें पढ़कर एक दूसरे को चुनौती देने के लिए हैं बेकरार। आइए सबसे पहले बुलाने जा रहे हैं चुनौतियों के सरताज जिन्होंने की है जीत के साथ शुरुआत। चंबल चैलेंजर
शिकार के लिए हैं तैयार और रखते हैं अपने खिलाड़ियों को बेकरार। आ रहे हैं लोकेश और अनुज की कॉर्नर जोड़ी से परिपूर्ण पेरियर के पैंथर्स, पेरियर पैंथर्स। एक और पड़ोसियों के बीच की लड़ाई, चंबल चैलेंजर्स जो कि तीसरे पायदान के ऊपर है तो पेविया पैंथर्स दूसरे पायदान के ऊपर। एक मुकाबला आज के दिन का खेला जा चुका है, लेकिन दूसरे मुकाबले के अंदर डिफेंस थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। पेविया पैंथर्स की तरफ से लोकेश और अनुज की वो जोड़ी जिसके अंदर कवर पोजीशन के ऊपर भी तहलका मचाते हुए खिलाड़ी नजर आएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं चंबल चैलेंजर्स के स्टार्टिंग 7 से। संस्कार मिश्रा, अजय, एम गोपी, ये ट्रायो है जो रेडर्स का है। दुर्गेश अभी भी पूरी तरीके से फिट नहीं, शायद उसी के चलते मैट पे अभी आपको नजर नहीं आएंगे। हेमंत, अनिकेत, ये खिलाड़ी आपको कवर की पोजीशन पे नजर आएंगे। दुर्गेश साहू है जो कॉर्नर संभालते हैं और अपनी टीम के लिए वो काम बखूबी निभाते हैं। लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपको रिहान शेख नजर आने वाले हैं। वंश, अभिराम, अक्षय, लखन, ये वो खिलाड़ी है जो फिलहाल सब्स्टिट्यूट पे है, लेकिन कोच चाहे तो इनको मौका मिल सकता है। YKS में मेरे साथ एटलीस्ट इस एडिशन में आखिरी बार स्वागत है राधिका का। Good evening, Ayush. Yes, this is Periyar Panthers who have started up on a big note yesterday with Chambal Challenge, winning over Humpy Heroes. And this is Sardar Chaudhary and Richpal Jhat and Gopal Singh will be in the raiding unit, and Rahul Chaudhary, Manjeet Mitra in the covers. And also, this is the dreadful combination on the corners: Lokesh Gosalia and Anuj Saini. Nakul Sani, Rohit, Nitin, Monu, Mukesh, they might get an opportunity to get into the match quite often. एक लीथल कॉम्बिनेशन जो आपने बताया लोकेश और अनुज का, लेकिन रेडर्स के उस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको बेस्ट खिलाड़ी जो इस एडिशन में अभी तक परफॉर्म करते नजर आए हैं वो गगन है। 195 पॉइंट निकाल चुके हैं, 18 मैचेस लिए इन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए। दुर्गेश कुमार खेलते हुए नजर जरूर नहीं आएंगे, 17 मैचेस खेले, उसके बाद वो इंजरी कंसर्न। 159 पॉइंट इस खिलाड़ी के नाम भी, 155 पॉइंट निकालने वाले। संस्कार अभी एक्शन के अंदर आने वाले हैं। 22 मुकाबले, सबसे ज्यादा मुकाबले इस खिलाड़ी ने लिए जरूर है। After yesterday, they had a dreadful combination with Durgesh though. But yeah, this is a top 3 defender so far, and Lokesh Gosalia still leading the chat. We'll be witnessing him play straight now with 64 tackle points and Ankit Jat. And this is the player we would be eyeing on as well in the future. The 55 tackle points and very close in the contest. Shiv Kumar also got into the 50 bracket as well. लेकिन लोकेश जो ना सिर्फ अपनी टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्नर की पोजीशन संभालते हैं बल्कि कप्तान की भूमिका भी निभाते हैं। तो वहीं सागर अपने मुस्कुराते चेहरे के साथ, वो टॉस उन्होंने कराया, वो सिक्का वो पक्ष में गिरा चंबल चैलेंजर्स के। राइट कोर्ट का उन्होंने फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि पेविया पैंथर्स के डिफेंस से पहले चेक होने वाले उनके रेडर्स के अंदर कितनी क्षमता है। रेडिंग की जब बात करी जाएगी ये खिलाड़ी का नाम जरूर लिया जाएगा। संस्कार अपनी टीम के लिए ही नहीं बल्कि इस एडिशन के अंदर भी टॉप 3 रेडर्स में तीसरे पायदान पर शुमार है। 22 मुकाबले खेले, 155 पॉइंट निकाले, रेडिंग का स्ट्राइक रेट 66 से ऊपर का नजर आता है। राधिका साफ दर्शाता है ये खिलाड़ी अपनी कद काठी का इस्तेमाल कितनी अच्छी से करता है, वो हम सभी जानते हैं। Absolutely uses the features of like running hand touch and bonus quite often. And this is Lokesh Gosalia, 22 marches, 64 rate points, rate strike rate more than 50%. As a captain, he is leading from the front and one of the topmost defenders for this edition. वो ब्लू कलर का बैंड वो इस बात का प्रतीक है कि सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट यदि इस एडिशन में किसी ने अब तक निकाले हैं तो वो लोकेश है। अभी चैलेंजर राउंड चल रहा है, अगला समिट आना है, उसमें भी और कुछ दमकम दिखा सकता है ये खिलाड़ी। चंबल चैलेंजर्स 24 मुकाबले के लिए 10 में जीत मिली, 10 गंवाने पड़े और इस एडिशन में सबसे ज्यादा यदि किसी ने टाई खेले तो चंबल चैलेंजर्स की टीम है। 4 टाई खेले हैं। विन परसेंट जरूर इनका 50 से कम आपको नजर आता है, लेकिन इसके अंदर इजाफे किए जा सकते हैं। इनके पास खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। लास्ट 5 मैचेस में 2 जीते हैं, 3 गंवाने पड़े हैं इस टीम को। पिछला मुकाबला जीत के थोड़ा सा मोमेंटम आया होगा राधिका, और अब चाहेंगे कि वो मोमेंटम इनसे दूर ना जाए। आस्क द एक्सपर्ट क्वेश्चन आया है और राधिका साथ में का मतलब है कि जवाब अच्छा मिलेगा। आर द चंबल चैलेंजर्स द मोस्ट अटैकिंग साइड इन दिस एडिशन ऑफ YKS? प्रिया शर्मा ने ये सवाल पूछा है राधिका। Yes, having the 2 best raiders from the top 3. We had Sanskar Mishra and also Durgesh Sahu. I'm sure from yesterday's 2 Super 10s, definitely that's the best raiding trio we have in a team.
एक अच्छा ट्रायो है उसके साथ में खेलती ये टीम नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ पैविया पैंथर्स की टीम 24 मुकाबले के लिए 15 में जीत मिली, 9 गंवाने पड़े। विन परसेंट इनका बहुत अच्छा नजर आएगा यदि आप कंपेयर करें इनकी ओपन एंड चंबल चैलेंजर्स के साथ। लेकिन हर राउंड के हमने परिस्थितियों को बदलते देखा है राधिका। जैसे ही आप बूस्टर राउंड में घुस गए थे हमने देखा था कि कई टीम की पोजीशनिंग चेंज हुई, चैलेंजर के अंदर भी वो होने के आसार। No, very much, because a lot of injury concern might come up when your body gets to that fatigue level. And also yesterday we have seen Durgesh playing in the starting 7, and today we don't see him. Do you think Pavia Panthers should work more on their reading skills? राहुल सिंह का ये सवाल है। Of course, because when you have such corner defenders who've been phenomenal, if the raiding unit would support that corner defense, this team would be unstoppable, Ayush. इस सवाल का मतलब यह है कि द रिच बॉय रिचपाल जाट उनको कटघरे में खड़ा किया गया, सरदार को कटघरे में खड़ा करा गया है और आज इस कटघरे से बाइज्जत बरी होने के लिए खेलते हुए ये दो खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। चलिए, समय हो चुका है काउंटडाउन का। काउंटडाउन के बाद लाइव एक्शन। क्लीन स्पोर्ट्स, फेयर स्पोर्ट्स की उस स्पिरिट के साथ चलिए अमर एम्पायर 2 की रेफरी की उस विसल के साथ में मुकाबले की शुरुआत करते हैं। पहली रेड रिचपाल जाट पैविया पैंथर्स की तरफ से। सवाल आया था कि क्या पैविया पैंथर्स की टीम को अपने रेडिंग डिपार्टमेंट में उस स्किल सेट के अंदर क्या और इजाफा करना चाहिए, और उसका जवाब आज ये खिलाड़ी 40 मिनट के खेल में दिखाएंगे। राधिका, Absolutely, if the Raiders have an attacking mode, that would only give confidence to the rest of the defense as well, and they have started off well with a bonus. पहली रेड के ऊपर पैविया पैंथर्स की टीम को बोनस के चलते वहां पॉइंट मिला है। सबसे लंबे कदमों ने सबसे बेस्ट डिफेंडर के सामने बोनस निकालने की कोशिश की। संस्कार मिश्रा बोनस लेकर आएंगे, और किस खिलाड़ी के सामने? लोकेश गोसलिया। उनकी घर नहीं, वो डैन है, उसमें से पॉइंट निकालने का मतलब जिगर बहुत बड़ा उस खिलाड़ी का। Absolutely, and when Durgesh was playing top notch yesterday, he just went back, took the back seat. That's a lovely combination they had. Wait. Number 4 गणना की जाएगी। चंबल चैलेंजर्स की तरफ से नंबर 4 यानी कि दुर्गेश साहू को बुलाया गया है। क्या दोनों ही टीम को एक एक पॉइंट दिया जाएगा? इंतजार करते हैं ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का। एक तरफ रिचपाल जाट खड़े हैं तो दूसरी तरफ अंपायर के साथ में रेफरी कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। और राधिका, शुरुआती क्षणों के अंदर यदि ऐसे संदिग्ध भरे फैसले होते हैं तो टीम का कॉन्फिडेंस, मोराल थोड़ा सा कम होता है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी हमारे रेफरीज की, हमारे एम्पायर्स की। वो एक क्षण भी नहीं लेते और निश्चित तौर पे उस फैसले को सटीक करने के लिए चले जाते हैं। दोनों ही टीम को एक एक पॉइंट मिलेगा। रिचपाल बाहर, साथ ही साथ आपको बाहर जाते हुए नजर आएंगे चंबल चैलेंजर्स के डिफेंडर हेमंत भी। Absolutely, yeah, that was a brilliant tackle, but then one of the defender had to step out with force. So the referees did not disappoint anybody, Ayush. They literally didn't. और यही तो होता है, वही करना चाहिए। मुकाबला बराबरी पे चल रहा था, दोनों टीम को एक एक पॉइंट मिलने के बाद अभी भी मुकाबला बराबरी पे ही रहेगा। 2 मिनट का खेल हुआ है, दोनों टीम ने 2-2 पॉइंट निकाले हैं। लगातार रेड रिचपाल ने लगाई थी, लेकिन अब सरदार चौधरी अपनी पहली रेड पे आते ही मेट को प्रणाम किया, बॉक को पार किया। इसका मतलब ये भी है कि अपनी रेड को वैलिड बना लिया। डिफेंस क्योंकि 6 का है, थोड़ा सा हाईलाइन खिलाते हुए नजर आएंगे। एक कॉर्नर के ऊपर रेहान है, दूसरी तरफ चेन छोड़ के रखी है दुर्गेश साहू ने। सीधा सामना सरदार का, वैसे तो दुर्गेश को होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लेफ्ट कॉर्नर की तरफ हल्के से शफल करते हुए नजर आए, लेकिन पॉइंट लेके नहीं जाएंगे, एम्प्टी हैंडेड जाना पड़ेगा। Exactly, because he was just playing at the box line, so his intentions were clear that he didn't want to go deep in. Let us say 2 point Chambal Challengers, jersey number 4 and 6 out. बैक ट्रेल दिखा दिया, और ऐसे दृश्य आमतौर के ऊपर आपको इस डिफेंस में
नजर नहीं आते। पेविया पैंथर्स एक सदैव डिफेंस के लिए जानी जाती है। सरदार चौधरी अगली रेड पे, पिछली रेड एम्प्टी गई थी इस खिलाड़ी की, तो वहीं दूसरी तरफ रिचपाल जाट ने पॉइंट निकाल लिया है अपनी टीम के लिए। इनके ऊपर वो हल्का सा दबाव रहेगा। हालांकि यदि आपको एक्सपीरियंस की बात करें तो रिचपाल से थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और उसी के चलते फिलहाल मैच को नापते हुए नजर आ रहे हैं। 2 अंक का फासला चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में है जरूर, लेकिन सरदार क्या हो सकते हैं अदरदार, ये बचे हुए लगभग 36 मिनट का खेल निर्धारित करेगा। Yeah, again on the other side, this is Sanskar Mishra. He's been phenomenal throughout the season, and he's been quietly supported or very well supported by Durgesh Sahu. I'm sure he should be coming back, very, very fit soon, because this is definitely a bigger challenge now in the challenger round if your lead raider does not perform. मुकाबले की पहली डू और डाई सरदार चौधरी, बैक टू बैक 2 एम्प्टी हैंडेड जाने के बाद कोई भी खिलाड़ी वापस एम्प्टी हैंडेड जा नहीं सकता। दरअसल तीसरी रेड को डू और डाई की परिस्थिति कहा जाता है और उसमें या तो आपको पॉइंट निकालना है या ओपोनेंट को देकर आना है। यहाँ पर रिहान ने डबल थाई होल्ड की, कॉम्बिनेशन टैकल, छुई मुई के फूल की तरह चंबल चैलेंजर्स का डिफेंस टूट पड़ा। चंबल के पास का कोई रास्ता नहीं, लेकिन हाँ लॉबी के बाहर आप जा सकते हैं, उस बेंच के ऊपर आराम आप फरमा सकते हैं सरदार। Absolutely. On the other side, when we talk about, Periyar Panthers on the defensive strong unit, they haven't done much so far in the defense unit, but this is the right time that they could go for it, having a super tackle opportunity. Ajay Maravi, who just scored 2 points, is it, Ayush? हाँ, पिछली बार जब ये आए थे तो 2 पॉइंट लेकर गए थे। मल्टी पॉइंटर रेड इन्होंने लगाई थी, शायद डिफेंस से थोड़ी सी गलती हुई थी, लेकिन सुपर टैकल की सिचुएशन में जहां पेविया पैंथर्स के लिए अनुज भी मौजूद है, उनका साथ निभाने के लिए लोकेश भी है, मुझे लगता नहीं है राधिका कोई गलती करती हुई टीम नजर आएगी। And this is Gopal Singh. Yeah, just I think these raiders have not been attacking Ayush because they're just playing on the walk line away. Maybe they wanted, because then it would be a do or die raid for Chambal challengers, so that's the reason they're waiting. अब ये नहले पे दहले वाली सिचुएशन है संस्कार मिश्रा के लिए। अपने गुरु ने जो इनको अदाकार दिखाए वो दिखाने पड़ेंगे। मल्टी पॉइंटर रेड लगा दी, 2 पॉइंट निश्चित तौर पे सुनिश्चित करेंगे अपनी टीम के लिए। डू और डाई की परिस्थिति में सिर्फ एक ही दिया गया, सिर्फ एक ही पॉइंट अनुज का क्लेम था, उनको बाहर भेजा गया है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो टच कर लोकेश को भी आए हैं। That was definitely a solo tackle, but then backtracking skills were too good from Sanskar Mishra there. One point, Periyar Panthers, number 88 out. इस मुकाबले में चंबल चैलेंजर्स की तरफ से हिम्मत ने पहली नहीं दूसरी बार गलती की है। गोपाल ने ये अंक निकाला नहीं है, बल्कि हिम्मत ने इंडीड उनको वो अंक दिया है। सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है। क्या डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, क्या गोपाल को बाहर बुलाकर किसी और खिलाड़ी को अंदर भेजना चाह रहे हैं? Again a super tackle opportunity and Sanskar Mishra, and we have Lokesh Gosalia. I mean, from the left corner he moved to the right corner. I am not sure how confident he would be from there, but then the ankle hold was too good. एंकल होल्ड वाज स्पॉट ऑन इंडीड राधिका। इस खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाया गया था। सुपर टैकल की सिचुएशन में अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाला है मोनू प्रसाद ने। कॉर्नर की पोजीशन पे थे, बॉडी को पूरा बेंड किया, एंकल के ऊपर दावा बोला। हालांकि लोकेश को आइडिया था नहीं कि रेडर वो डुबकी एग्जैक्टली निकाल कहां से रहे थे, लेकिन रिची बॉय ने कहा कि चलिए जनाब मैं यहाँ मौजूद हूँ, सपोर्ट देके दिखाऊंगा। Maybe I felt, maybe Sanskar Mishra would have attacked Lokesh Gosalia because he is not standing in his prominent position. वो बैंड का खौफ राधिका आप और मैं दोनों ही जानते हैं। वो नीले कलर का बैंड जब आप पहन के खड़े होते हैं, पोजीशन चाहे कोई भी हो। और फिर दूसरी बात ये भी है क्योंकि मोनू सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आए हैं, उन्होंने एक भी डिफेंसिव स्किल अभी तक दिखाई नहीं है, तो शायद सोचा होगा कि उसी तरफ अटैक किया जाए। हालांकि इट्स वेरी सब्जेक्टिव। Exactly. And Ajay Maravi is just filling in the shoe for the second raider. Now he needs to get those points because Periyar Panthers, we thought they might get on to an all-out, but then they're slowly picking up. रेडिंग डिपार्टमेंट को यदि थोड़े और बेहतर तरीके से संभाल लेती है पेविया पैंथर्स की टीम तो शायद चीजें बदल जाएगी। मंजीत कवर खेलते हैं, रेड लगाना इतने अच्छे से आता नहीं है, शायद उसी के चलते सिर्फ वॉक को पार किया।
डू और डाई के ऊपर खेलने की परिस्थिति बनाना चाहती है पेविया पैंथर्स की टीम। अंदर जाना चाह रहे हैं, बोनस वैसे भी एक्टिवेट नहीं है, बहुत डीप आने देंगे चंबल चैलेंजर्स के डिफेंडर्स। 6 का डिफेंस, 5 का डिफेंस, बैग योर पार्डन, पूरी तरीके से नचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मंजीत मित्रा ने सिर्फ समय का इस्तेमाल किया है। एम्प्टी हैंडेड वापस जाएंगे। सरदार बैठे हैं वहां, इंतजार कर रहे हैं अपने रिवाइवल का। Gopi Mailapalli, he is a kind of an all-rounder, but not 100% on either of the things. But then sometimes he comes with a beautiful surprise, Ayush. So he is sometimes there on the mat, sometimes he is the substitute. That's when he needs to work on. राधिका, मारवाड़ी में एक कहावत है कि जब जब गेहूं पिसता है भून पिसीजता है, और उस गेहूं के साथ भून जो पिसने वाला है, मुझे लगता है चंबल चैलेंजर्स की टीम में गोपी है। कभी डिफेंस, कभी रेडिंग, सब कुछ इनसे कराई जाती है। रिचपाल जहां डू और डाई की सिचुएशन में डैश, रिचपाल बाहर। दुर्गेश, ये वो दुर्गेश नहीं है जो रेड लगा के अपनी टीम के लिए पॉइंट लाते हैं, लेकिन ये वो दुर्गेश है जो डैश करके बदला पूरा करते हैं। कमाल किया है दुर्गेश साहू ने। And Durgesh Sahu has done a brilliant job, but then Ajay Maravi was equally good. The way he came in as a second layer was spot on. डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ है, लेकिन वहां डिफेंस के अंदर अनुज मौजूद थे नहीं। मोनू ने कमाल किया है, इस बार मंजीत से गलती हुई, फ्रंटल ब्लॉक के लिए गए, अजय ने डुबकी लगाई। पिछली बार डिफेंस के अंदर सपोर्ट दिखाया था, यहाँ रेड लगाते हुए रिवाइवल लाएंगे। चंबल चैलेंजर्स नंबर 4 आउट। Oh, he went in with a wrong foot for a kick, but then he took a wrong turn to get the right point. 9 out. A good one that he broke that super tackle. रोहित को सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाया गया। पिछले मुकाबले के अंदर इस खिलाड़ी ने बहुत सारे पॉइंट निकाले थे, लेकिन आज सरदार को खिलाया गया। इनको स्टार्टिंग 7 में जगह नहीं दी गई है, तो क्या वो कॉन्फिडेंस जो इन्होंने पिछले मुकाबले में छोड़ा था उसको कंटिन्यू कर पाएंगे? बैक किक, उसकी हाइट देखिए राधिका, कितनी अच्छी हाइट के ऊपर कनेक्ट किया था। ऑल्दो वो परफेक्ट कनेक्शन बॉडी पे टच नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो स्किल सेट बहुत अच्छा। बोनस मिलेगा। Yes, because the Chambal challengers are eyeing on all out, but will that be a second super tackle for Periyar Panthers, or will Sanskar Mishra make it count? I'm sure it's a super tackle. मोनू जिम जाते हैं, उनके बाइसेप से साफ पता चल रहा है ट्राइसेप की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। अभी भी स्ट्रगल जारी है, लेकिन संस्कार मिश्रा ने गिव अप नहीं किया। क्या वो अपनी टीम के लिए पॉइंट ला पाते हैं, या फिर उनकी रेड टूट जाएगी? विसल बजी, रेड टूटी संस्कार के अद्भुत एफर्ट्स, लेकिन तालियों के साथ स्वागत किया उन 2 पॉइंटों का पेविया पैंथर्स की टीम ने। मोनू, आपने अपनी ताकत से ना सिर्फ रेडर की दिशा बल्कि खेल की दशा भी बदल दी। पेरियार पैंथर्स, they have substituted Lokesh Gosalia to get in a raider, but then the substituted raider also was too good to hold on to that super tackle, Ayush. वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इन्होंने देखा कि मोनू ने पिछली बार वो डिफेंस अटैक किया था और उसी के चलते उनको पॉइंट मिले, तो यहाँ जब मोनू को सपोर्ट की आवश्यकता है वो सपोर्ट दे के दिखाएंगे। 9 नंबर पर कुछ बातचीत चल रही है। अब जर्सी नंबर 9 तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा चंबल चैलेंजर्स की टीम में। Now Rohit Yadav, they have given away the bonus, thinking they might just sweep out in the all out, but then that was a super tackle in favor of Periyar Panthers. Now they need not give the bonus as well. bonus plus 2 point, Periyar Panthers number 4 and 3 out. सुपर रेट, पेविया पैंथर्स की टीम को इसी की तो आवश्यकता थी। अपने आप को उस ऑल आउट से बाहर रखना चाह रहे थे। अनिकेत, दुर्गेश दोनों को बाहर ले गए। सबसे पहले अनिकेत ने वो जो इनिशिएशन की कोशिश, इनफैक्ट दुर्गेश ने कॉर्नर की पोजीशन से अटैक बिल्ड किया था, और अनिकेत तो शायद जज्बातों में बह गए। मिड लाइन के इतना पास जब रेडर है तो रोकना मेरे हिसाब से वो समझदारी का फैसला है नहीं। 5 का डिफेंस है, रेड लगाने के लिए गोपी गए। अगली आवाज राधिका की। They have got multiple opportunity to get those all out points, Ayush. Somewhere they are fumbling in the defense, and definitely in the defense especially. ये नए जमाने के अनुज है, ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस नहीं करते, रेड भी लगाते हैं। लेकिन आमतौर के ऊपर वो 3 सेकंड की रेड के लिए तो मैं इनको थोड़ा कम ही देखता हूँ। शायद डू और डाई के ऊपर खिलाना चाह रहे हैं। अजय मारावी रेड पे आए हैं। इस खिलाड़ी ने अपना पहला जो रेड पॉइंट निकाला था वो मल्टी पॉइंटर रेड के तहत था।
2 पॉइंट आए थे, फिर 1 पॉइंट इन्होंने सोलो निकाला था। इन टोटल 3 पॉइंट रेड लगाते हुए इनके पक्ष में है। डिफेंस क्योंकि पा चुका है, बोनस एक्टिवेट नहीं। अनुज जो पिछली रेड पे आए थे उनके सामने ज्यादा समय तक चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कहर बन पाते हुए मोनू भी नजर आ रहे हैं, और मोनू की एफिशिएंसी देखिए राधिका आपकी, उनके साथ लोकेश खड़े हैं, लेकिन लोकेश इनकी पोजीशन पे। Now it's a do or die raid for Chambal challengers, and Ajay Maravi goes in. If he succeeds, he will not only get a point in do or die, but he'll also revive Sanskar Mishra. Alright, then that was Sardar. Beg your pardon for that mistake. जर्सी नंबर 3 के तौर पे सरदार इनकी पोजीशन पे डू और डाई है। अजय को यहाँ पे पॉइंट निकालना ही पड़ेगा, या तो ओपोनेंट को पॉइंट देकर आइए या अपनी टीम के लिए पॉइंट लेकर आइए। अनुज से गलती हुई, मोनू को भी बाहर जाना पड़ा। मोनू मुझे लगता है कि अनुज से बड़ा खतरा थे। पैंथर्स की टीम की तरफ से 2 टॉप डिफेंडर्स, कॉर्नर के खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। You know, in that raid, Ayush, just 3 seconds were left and they could not hold on. Wait. And ankle hold was good, but then corner did not come to support right on time. डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है। डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ भी है। रोहित यादव जो सब्स्टिट्यूट होकर अपनी टीम के लिए आए हैं रेड लगाने के लिए, लोकेश को सब्स्टिट्यूट करके यदि किसी को बुलाया गया है तो यही वो खिलाड़ी है। लेकिन क्या अपनी टीम के लिए पिछली बार जैसे एफर्ट इन्होंने डिफेंस के अंदर वो सुपर टैकल कन्वर्ट करने में निभाए थे, वो डू और डाई में पॉइंट निकालने में निभा सकते हैं? टो टच आया है, क्लेम लगातार किया जा रहा है, और हेमंत से लगातार गलतियां भी हुई है। क्या इस बार गलती मिलेगी? चंबल चैलेंजर्स नहीं, रोहित बाहर। You want review? Because he did not cross the block line, he was just confident enough that he got that touch, toe touch. He did not was a cross do or die, the block Radhika. line. Oh, is it? Oh, I'm sorry. It was a do or die situation. रिव्यू के लिए पूछा भी था कि क्या आप वो रिव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन साफ तौर पे नकार दिया कि मैं वो रिव्यू नहीं लेना चाहूंगा। पेविया पैंथर्स के डिफेंस पे सिर्फ 2 खिलाड़ी खड़े हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि खड़े थे, पता ही नहीं चला वहां पर सरदार को कि किस तरीके से उनको वो टच दिखाया गया है। वो जर्सी कब छुई, उसके कपड़े की क्वालिटी के बारे में चंबल चैलेंजर के सबसे लंबे हाथ वाले संस्कार ने क्या बताया, ये रेफरी ने विसल के साथ क्लेम किया है। 1 पॉइंट मिलेगा संस्कार को। यही होता है लंबे हाथों का फायदा। 6 out. Absolutely, all credit should be given to Ajay Maravi, who has got those 2 raid points in a do or die and got Sanskar Mishra's revival. नकुल सैनी इस खिलाड़ी को भी सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाया। पेविया पैंथर्स आमतौर पे वो शुरुआती क्षणों में पहले आप में सब्स्टिट्यूशंस नहीं करती। फ्रंटल बॉक्स कॉम्बिनेशन टैकल, क्या 1-1 मिल सकता है या सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा? रेडर बाहर या ऑल आउट के पूरे पॉइंट? कई सारे सवाल है। रेडर आउट, ऑल आउट, 3 पॉइंट चंबल चैलेंजर्स लीड पे। Yeah, they have been postponing it for some time, but then they have got this all out points. The Chambal challenges here. What a lovely block and dash coming in. And Gopi Mailapalli, as we say, he is good at those assists. राधिका, मुझे नहीं पता कि वो गवर्नमेंट नौकरी की हायरार्की आपको पता है या नहीं, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि आप प्रमोशन को पहली बार फोरगो कर सकते हैं, दूसरी बार कर सकते हैं, तीसरी बार आपको उस लोकेशन पे जाना ही पड़ता है जहाँ सरकार आपको भेजना चाह रही है। लेकिन यहाँ तो डिमोशन हो गया। पेविया पैंथर्स को ऑल आउट करके बाहर भेजा था, इस बार संस्कार से वो बदला लेंगे। 1 अंक का रिवाइवल। संस्कार बाहर। Exactly, he did not reach the mid line, so that was a very good call from the referees. Anuj Saini, yeah, that was a very, very good call. I think it should be 1 each, Ayush, because his legs were not in contact in the lobbies. सारे जूते एक ही जैसे हैं। एक क्षण के लिए लगा था कि अनुज का पांव हवा में उठा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो संस्कार के ही दोनों पैर थे, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। Oh, very much possible, but I really wish if we could see that replay once, and maybe Chambal challenges would have gone for a review. राधिका, क्यों मुझे गलत वो ठहराने के ऊपर तुली? आप वो रिव्यू नहीं लिया जाए तो ठीक है, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी इंजर्ड है। हमारे फिजियो पार्टनर्स भी मौजूद हैं। रेहान को बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं रेहान के ऊपर रेहान ने इनफैक्ट वो कमजोर एंकल होल्ड की कोशिश की थी रिची बॉय पे। Exactly, no One anticipation at all. 7 out. Red, Chambal. Lot confusion going on.
मुझे ऐसा लगा था राधिका कि कोई इंजरी कंसर्न हुआ है पेविया पैंथर्स के कैंप में, नॉट टू श्योर दो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का वो जो एंगल था वो भी शायद हम मिस कर गए। अजय मारावी ये अपने टीम के लिए ज्यादा पॉइंट मिस नहीं करते, इस बार वो दाएं से बाएं चहलकर्मी मोनू के सामने गए हैं, टो टच करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बोनस मिलेगा। कितना क्विक रनिंग बोनस था वो। Normally he is one raider who is good at escaping kill, but this time around he goes for the running bonus. So such a variation should be got in. चार का डिफेंस कबड्डी के खेल में सबसे टफ माना जाता है, लेकिन यहाँ 5 के अंदर स्ट्रगल में जा चुके हैं रोहित यादव। सब्स्टिट्यूशन होने के बाद में जिस तरीके का खेल रोहित ने अपनी टीम पेविया पैंथर्स के लिए दिखाया वो तारीफ काबिल है। 4 पॉइंट, सबसे ज्यादा पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाल लिए। 13 में से 4 रेड पॉइंट इस खिलाड़ी के। समझ नहीं आया स्टार्टिंग 7 में जगह इनकी क्यों नहीं है, क्यों लोकेश को सब्स्टिट्यूट करके अंदर नहीं लाया जा रहा। कई सारे सवाल मेरे जहन में चल रहे हैं राधिका। Absolutely, Lokesh being the prime defender, he's not seen on the mat. So that is definitely a concern for the team as well. And Ajay Maravi, he's been too good today. Nothing to take away from Monu. 4 पॉइंट उन्होंने डिफेंस करके निकाले हैं, लेकिन हाई फाइव की झड़ी लगाने वाला वो खिलाड़ी लोकेश मैट से बाहर है, तो ये दृश्य थोड़े से टीज करते हुए नजर आएंगे। अनिकेत जो फिलहाल कॉर्नर की पोजीशन पे हैं, उनके सामने रिजपाल जाट ने टो टच करने की कोशिश की। अब दुर्गेश साहू की तरफ गए हैं। साहू साहब अपने आप को संभाल के रखना जानते हैं और वही सबसे बड़ी कला है इस खिलाड़ी की डिफेंस के अंदर। तितर बितर हो रखा है थोड़ा बहुत डिफेंस, ज्यादा चेंज आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन नजर तो इस बार आपको अंक भी नहीं आएगा। 7 in, 9 out. 6 in, 3 out. 9 in, Yeah, as 17 out. we see Lokesh Gosalia comes Five in. out. 17 out. लोकेश अनुज दोनों ही अंदर आए, Red. लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि क्यों मोनू को बाहर भेजा गया। क्या वो कॉर्नर के अलावा कोई और पोजीशन नहीं खेल सकते थे? क्या मंजीत की जगह वो नहीं ले सकते थे? Yeah, very much possible because if he's good at left corner, he could be good at a left cover as well. 3, 5, 17 out. In Yeah, 9, we talk about 7, substitutions, Ayush. At in a match there would be 5 substitutions, 9, and 7, 5 16. times substitutions, and in one substitutions you can change n number of players. आपने लिखा और जो दर्शक कबड्डी के खेल से नए जुड़े हैं उनको ये भी बता दें कि कबड्डी के नियम में सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि एक बार आप फुटबॉल की तरह बाहर चले गए तो दोबारा आप अंदर नहीं आ सकते। आपको यदि आपके कोच के पास में वो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन बचे हैं, बकाया है, तो आपको वापस बुलाया जा सकता है। 1.5 मिनट का खेल खेला जाना बाकी है। अजय अपनी रेड के साथ 16 पॉइंट इन टोटल अभी तक चंबल चैलेंजर्स ने निकाले हैं, जिनमें से 6 का योगदान अजय का रहा है। एक बार मल्टी पॉइंटर रेड भी लगाई है। कॉर्नर पे अब वही 2 खिलाड़ी हैं जिनको देखने के हम आदी, एक तरफ अनुज, दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट कॉर्नर पे लोकेश। Absolutely, he should attack on the left cover, Ayush. But then I think they do not want to take a risk. They just want to have brainstorming sessions once they finish the first half. डू और डाई, और रेड लगाने के लिए रोहित यादव 4 पॉइंट रेड लगाते हुए निकाले हैं। मोनू प्रसाद ने डिफेंस करते हुए 4 पॉइंट निकाले थे, उनको बाहर भेज दिया। इनका सीधा सामना दुर्गेश से होता है, और दुर्गेश साहू ने आज के इस मुकाबले में सिर्फ 1 पॉइंट निकाला है, तो गोपी भी थोड़े जज्बात दिखा रहे हैं। अनिकेत उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा सा एंगल बना जरूर था, लेकिन फिर कॉम्बिनेशन टैकल के चलते चंबल चैलेंजर्स ने जैसे तैसे करके रोहित को रोक लिया। Absolutely, he was just swinging in there at the same plank for about 15 seconds. So the defense got, the rhythm got calculated with the defense. So that's how the combination effort there. तो इसी के साथ पहले हाफ की समाप्ति। 17-13 का स्कोर चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में। रेड करते हुए 2 अंकों का फासला है, वो चंबल चैलेंजर्स एंजॉय करती हुई नजर आएगी, और उसका कारण हम सभी जानते हैं अजय की वो रेड। संस्कार ने 3 पॉइंट निकाले हैं। टैकल दोनों टीम ने बराबर किए हैं, क्योंकि डिफेंसिव पैक यूनिट से दोनों टीम, इनसे ऐसी उम्मीद की जा सकती है ऑल आउट के पॉइंट चंबल चैलेंजर्स को मिलेंगे। काफी समय तक पेविया पैंथर्स ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा समय तक कब तक अपने आप को रोक पाते, जज्बातों में बह गए। एक्स्ट्रास के पॉइंट दोनों टीम को बराबर मिले, लेकिन जीत किसको मिलेगी ये पता चलेगा ब्रेक के उस पार। बने रहिए हमारे साथ।
नमस्कार, स्वागत आप सभी का। पहले हाफ का खेल खेला जा चुका है। दो पड़ोसी आमने सामने हैं, एक तरफ चंबल चैलेंजर्स तो दूसरी तरफ आपको पेविया पैंथर्स की टीम नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके का खेल अभी तक हमने देखा है, दोनों टीम बराबरी पे है। हालांकि अंकों के बीच में वो 4 अंकों का फासला है, लेकिन जो स्किल सेट दोनों टीम ने दिखाया उससे साफ पता चलता है कि ये मुकाबला अंत तक बराबरी के ऊपर जा सकता है। अनुज से कुछ गलतियां हुई थी, उसी के चलते उनको सब्स्टिट्यूट करके बाहर भी बिठाया गया था। लोकेश ने कॉर्नर के एंगल को चेंज किया, आमतौर पे आपको लेफ्ट कॉर्नर पे खड़े आते हैं, आज राइट की पोजीशन पे थे। रिची बॉय, रिचपाल जाट, इनको बाहर जरूर भेजा गया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने वापसी करके दिखाई है। कुछ गलतियां कवर के इस खिलाड़ी से हुई थी, जिसकी जगह शायद ये जो खिलाड़ी जर्सी नंबर 5 में आपको मोनू नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सुपर टैकल भी लगाई है, 4 पॉइंट इन टोटल भी क्लेम किए हैं, इनको खिलाया जा सकता था। सपोर्ट बहुत अच्छा रोहित यादव ने दिखाया। हालांकि रेडर है, लेकिन डिफेंस के अंदर भी अपनी टीम के लिए काम किया। और फिर जो इनकी प्राइम भूमिका है वो हम आप ये सभी जानते हैं कि वो निश्चित तौर पे करके दिखाएंगे। अनुज थोड़ा सा वीक फ्लैंक आज खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है? नहीं, शायद कोच बेहतर जानते हैं। और कबड्डी की गहराइयां हमें बताने के लिए कॉम्बॉक्स में मेरे साथ राधिका हैं। स्वागत है राधिका। Yeah, thank you, Ayush. Yes, they're going neck and neck, and they are playing a very calculated game here, Ayush. You know, they know when to stay quiet, when to play on a do-or-die raid. They're playing very calculated, so this will definitely go down to the wire. Radhika, when you used to play kabaddi, were you also Bonus playing point, those calculative Chambal sort of skills? Back then, Ayush, you know, there was no do-or-die raid, there was no super tackle opportunity. So if some team had, you know, at least a 2-pointed, they would hang on there with that 2 point. It was not like a big points match then. It was like, you know, 10 points, 20 points was match then. Of course, you know, strategies will always be there. नहीं, वो मैंने कैलकुलेशन आपके गणित को लेके पूछा था सिर्फ। Yeah, sometimes I work out well. Sometimes, especially when I'm with you, somehow I fumble. चलिए जोक्स अपार्ट, लेकिन वो गणित वो ऐसी ही है, या तो उसमें जीरो या फिर पूरी तरीके से हीरो, वही करती हुई दिखाती है। मुझे याद है मैं पहली बार गणित के अंदर फेल राधिका लिटरली स्पीकिंग 7th क्लास के अंदर हुआ था। 6th क्लास में आई स्कोर्ड 98 मार्क्स, क्योंकि 7th के अंदर वो XYZ आ गए थे एंड दैट वाज प्रीटी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल। लेकिन यहाँ ये रेट थोड़ी सी हैंडल करना मुश्किल हो रही है अजय के लिए। Yeah, I think now it's a do-or-die raid strategy, but both the teams are willing to play, Ayush. No, Richpal Jack, he needs to perform much better than what he has done so far in the past 20 minutes. सिर्फ 2 पॉइंट निकाले, कई सारी रेड लगाई है। इस बार गोपी ने एंकल पकड़ी है, कवर्स के खिलाड़ियों ने, विशेषकर अंकित और उनके साथी खिलाड़ी ने फ्रंटल ब्लॉक भी दिखाया। बोनस पॉइंट इंश्योर किया था रिचपाल ने। इससे एटलीस्ट ये चीज तो श्योर हो गई कि दोनों टीम के बीच में फासला नहीं मिलेगा। Absolutely. You know, in a do-or-die, he waited for an opportunity, but then he just went deep in for a bonus, got that, but then he's been knocked out. Sanskar Mishra, he will be the key raider to, you know, turn around the match for Chambal Challengers. 5 के डिफेंस में है, 4 पॉइंट इन टोटल अभी तक इस मुकाबले में संस्कार ने निकाले हैं। सबसे लंबे कटकाठी के हैं, लेकिन फिर भी आज रेड लगाने के ज्यादा मौके अजय को दिए गए हैं। ये शायद कोच की या फिर इनकी टीम की स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अभी तक तो ये स्ट्रैटेजी सही काम आ रही है। पेविया पैंथर्स, क्योंकि इनके रेडर्स ज्यादा पॉइंट नहीं निकाल रहे, ऑप्शंस तलाश रहे हैं। अनुज सैनी ने पिछले कुछ 5-7 मुकाबलों में रेडिंग करके दिखाई है, लेकिन सक्सेस कितनी मिलती है ये शायद वक्त ही बताएगा। कवर को टच करने की कोशिश, कॉर्नर से गलती हुई है, कॉर्नर से भरपूर गलती। इससे बड़ी गलती क्या मैं कहूंगा गुना कबड्डी के मैट पे हो नहीं सकता। Absolutely, Rehan Sheikh, half-hearted. I know where was the angle for a frontal block, but then soon he realized that, you know, nobody should be there. Yeah, I think Sanskar Mishra is slow today because he was being caught thrice, and this is the 4th time, Ayush. बस आप गिनती करते रहिए। पेविया पैंथर्स के डिफेंस को जब आप चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, वो मुंह तोड़ आपको जवाब देंगे। कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर मंजीत को चेंज करने के लिए मुझे ऐसा लगा था कि शायद किया जा सकता है, तो मंजीत ने ना सिर्फ संस्कार को बल्कि मुझे भी वो करारा जवाब दिया। पीछे से इनिशिएशन दिखाया था, सामने राहुल बैग योर पार्डन मौजूद थे, और फिर वो सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस जैसे कि राधिका बताती है, वो तो पेविया पैंथर्स के तैयार ही रहते हैं। Yeah, Rohit Yadav, a super sub so far for Peviya Panthers. Not too far in the game, either of the teams. As they are playing on a do or die, I'm sure he'll go back.
वहाँ ये खिलाड़ी एंड लाइन को पार किया है या नहीं। ऑलराइट देन, इनकी पोजीशन को कवर की कॉर्नर की पोजीशन ने बचा लिया था। अजय, इस खिलाड़ी के ऊपर थोड़ा सा दबाव जरूर बनेगा। जैसे ही वो फासला कम होगा, पेविया पैंथर्स बराबर आने की कॉपी करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अजय के सबसे ज्यादा पॉइंट है, इनकी जिम्मेदारी भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। डिफेंस हाउस पैक, बोनस की आवश्यकता है, मौका भी है, लेकिन लोकेश शायद इतनी आसानी से चुकाने नहीं देंगे वो फायदा। Yeah, more on Ajay Maravi need to be on the court because Sanskar Mishra isn't there. So, to delay the match, to play on the do or die is good, but then this was a fabulous tackle. Red out, 1 point, Chambal Challengers. मैंने एक बार एक कहावत सुनी थी कि जब इंसान की पॉकेट फटती है ना, तो सिक्के गिरने से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। पेविया पैंथर्स के रेडर्स के साथ यही होता है। जैसे ही थोड़ा सा वीक फ्लैंक आता है, उनके डिफेंस से पहले उनके रेडर्स टूट जाते हैं। रिचपाल को हमने टूटते हुए देखा है। Exactly, but Ajay Maravi, he is playing a very, very calculative game. He's playing with his brains, which is good to watch. And turn and touch, that's what he claims, and very confident, Ayush. Number one. Redder. Please come. One touch point. Please go back. TV umpire, Chambal Challengers. Challenge is 1 touch point. Our decision, no touch point. Please review. He claimed for a flying hand touch on the right cover. That's a very blurry vision for us, Ayush. Maybe if he is wearing a kneecap as well, maybe the defender might have not felt it, but I'm sure we'll get the right decision soon. बिल्कुल राधिका, आपने सही कहा कि वो थोड़ा सा ब्लर था। मैं वाईकेएस की टीम को बता दूं कि मैं लगातार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाता रहता हूं, प्रयास करता हूं कि वो ब्लरी विजन कम रहे, तो प्लीज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की इनडायरेक्ट मदद मत करिए वो विजन दिखा के। Too many pixels, I think that makes the visual a bit. I think the TV referee will have many angles to see it, so I'm sure we'll get the best of the results possible. उनके पास तो वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, जिससे जब वो चाहे, जहां वो चाहे, जिस एंगल को देखना चाहे, उनको दिखता है। चंबल चैलेंजर्स फिलहाल 20 पे 16 के ऊपर पेविया पैंथर्स की टीम है। रिव्यू की मांग चंबल चैलेंजर्स ने की है। हालांकि रेफरी का जो फैसला था, अंपायर का जो फैसला था, वो पेविया पैंथर्स के पक्ष में था, टच नहीं दिया गया था। Thank you, sir. Review unsuccessful, no touch point. Captain, your reviews over, no more reviews. पेविया पैंथर्स के सामने चंबल चैलेंजर्स ने अपना रिव्यू गंवा दिया। लीड के ऊपर थे, लेकिन फिर भी बचे हुए पौना 15 मिनट के खेल में वो चाहते नहीं थे कि किसी भी तरीके से एक भी अंक कम हो। यहाँ भी राहुल जो थे वो सामने आ गए। राधिका, जिप एंगल से भी पूरा पता नहीं चला। Exactly. This is Rohit Yadav. In a defense of 6, bonus is available, and this lad is good at those bonus points as well. लेकिन यहाँ टू टच करना चाह रहे थे, क्योंकि 6 का डिफेंस है, बोनस भी एक्टिवेट है। दुर्गेश साहू को टच मारने की कोशिश है, क्या अनिकेत को भी शिकार बनाया है? इंतजार करना पड़ेगा ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का। सिर्फ दुर्गेश बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ कैलकुलेशंस, कुछ गणना करते हुए नजर आ सकता है अंपायर। पेविया पैंथर्स के पास में रिव्यू बचा है, एक की जगह 2 हो सकते हैं। ऑलराइट देन, बोनस +2, सुपर रेड फॉर पेविया पैंथर्स। फासला अब सिर्फ 1 अंक का रह गया। And if I'm not wrong, this is the second super raid for Rohit. First he gets the bonus, and then a kick executed, escapes from the left cover as well. अजय, डू और डाई में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले हैं, 6 पॉइंट्स निकाले हैं, 7 के डिफेंस में आए हैं। सीधा सामना अनुज और रोहित की इस जोड़ी से होने वाला है, जो इन और कॉर्नर के ऊपर खड़े हैं। अब अपने फ्लैंक को चेंज किया, लोकेश के सामने आए, बीच में राहुल और मनजीत भी दहाड़ मारने को तैयार है। जज्बातों में बह गए कप्तान साहब। कप्तान साहब को यह समझना पड़ेगा, जज्बातों की जगह मैट पे नहीं होती। Yeah, normally, Ajay Maravi is a left raider, but then he confused the defense, playing from the left and the right and the left and the right. That's where the defense got confused, Ayush.
कंफ्यूजन, इसका क्या जवाब है? इसका तो कोई तोड़ ही नहीं ना दुनिया में। वहम और कंफ्यूजन, इन दो की कभी कोई दवा मैंने तो सुनी नहीं है राधिका। यदि आपको कभी पता चले तो प्लीज बताइएगा। यहाँ दुर्गेश भी हल्के से कंफ्यूज थे कि क्या वो मैट पे है या नहीं। अभी तक तो वो पूरी तरीके से मौजूद थे। डैश भी आया था, शायद लॉबी के अंदर रेडर का पांव था। इस बार वो कंफ्यूजन क्लियर है, गोपी बाहर है। I think, Chambal Challengers lost the review as well. So, decision came in favor of Periyar Panthers because I think, he put in his hand on the midline from the outside, Ayush. The upper body was completely out of the lobbies. I'm sure, the leg was still there in the lobby, but then the way the hand came inside the lobby, it was from out of the court. यहाँ पे टर्न किया था। Let us say 1 point, Periyar Panthers. Red. चलिए, वो निर्णय पेरियर पैंथर्स के पक्ष में था, पक्ष में ही रहेगा। लेकिन फासला 1 अंक का चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में था, पक्ष में ही रहेगा। संस्कार मिश्रा एंकल के ऊपर धावा बोला, कॉम्बिनेशन टैकल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गिनते रहिए कितनी लेयर्स थी। पेरियर पैंथर्स को फर्क नहीं पड़ता, 21-21 से मुकाबला बराबरी पे। And today, Sanskar has been caught 6 times, Ayush. He is being completely broken in his confidence. A super tackle opportunity now. अब चंबल चैलेंजर्स की तरफ से संस्कार की जो आपने बात की है, 4 पॉइंट निकाले हैं, 6 गवा दिए हैं, यानी कि आज के इस मुकाबले में तो लायबिलिटी के तौर पे खेल रहे हैं वो चंबल चैलेंजर्स के लिए। Wait. Raider, number 15. Number 7. थोड़े से बॉल्स एक्सचेंज हुए थे। Raider did not, if the Raider did not touch the defender, if the Raider did not have touched the defender, I think he's touched it. But if you look at that, there was no contact between the left corner. He stepped into the lobby. और शायद वो कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर ही उस टच की मांग कर रहे थे, जहां पर अजय, जिन्होंने सबसे ज्यादा रेड पॉइंट निकाले हैं, अगर अजय बाहर हुए तो हो सकता है कि ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया जा सके चंबल चैलेंजर्स की टीम पे और फिर लीड पे आ जाएगी पेरियर पैंथर्स। I think there was a kick, so it should be a safe raid point for the Raider. इवन इफ हमें लगता है कि वो सेफ है और शायद रेफरी या एम्पायर्स की निगाहों से वो चूक जाए, क्योंकि पेरियर पैंथर्स के पास उनका रिव्यू बचा है, तो मुझे लगता है कि निर्णय फिर भी उनके पक्ष में जा सकता है। Raider out, 1 point. Super tackle, 2 point. Chambal Challengers. Raider first. Maybe we'll Raider have first, to. no defender out. Okay. Raider first. Okay. Maybe the kick was not executed. Maybe they should challenge it, Ayush. What do you think? अब मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है, बहुत देर हो गई है, जाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे तो रोहित। शायद वो भी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, हालांकि जब वो आए थे रेड लगा के मिडलाइन को जैसे ही उन्होंने पार किया था, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो दहाड़ लगा रहे थे। रेड चंबल। लेकिन चलिए, ये स्कोर कार्ड में परिवर्तन है, 23-21 हो चुका है स्कोर कार्ड। Yeah, the kick wasn't there on the right corner. He stepped into the lobby. So without the contact, the lobbies would be inactive. So super tackle point for Chambal Challengers. That's a good one. A super tackle means 2 defensive points, but 1 revival. एंड मोर इम्पोर्टेंटली अजय मारावी वो अभी भी मौजूद है, और यही तो चाहिए था चंबल चैलेंजर्स की टीम को कि वो इंश्योर करें उनके लिए सबसे ज्यादा पॉइंट निकालने वाले खिलाड़ी मैट पे रहें, क्योंकि संस्कार ना ही वो अभी मैट पे नजर आ रहे हैं, और इनफैक्ट जब वो मैट पे थे तब भी अपनी टीम के लिए ज्यादा पॉइंट नहीं ला रहे थे। रिचपाल जाट कहने को अपनी टीम के लिए प्राइमरी रेडर की भूमिका निभाई थी, लेकिन पॉइंट्स इतने ज्यादा इस खिलाड़ी को मिले नहीं अभी तक इस मुकाबले में राधिका। Exactly. I think the substitute was far better, and this was a fabulous kick going deep in. The distance was 4. Number 7 out. रेहान बाहर जाते नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि यही कहानी इसी हो चुकी है। बैक किक परफेक्ट एग्जीक्यूशन, इस बार वो टच सही आया था, निशाने के ऊपर आया था, पेरियर पैंथर्स के लिए पॉइंट भी लाया था। और पेरियर पैंथर्स की कहानी यही है राधिका, वो अपने किसी खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट में लाते हैं, सब्स्टिट्यूट में आके वो अच्छा परफॉर्म करता है, अगले दिन अपनी जगह स्टार्टिंग 7 में निकालता है, जैसे ही 1-2 दिन बाद परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिप होती है फिर सब्स्टिट्यूट की जगह पाता है। Exactly, consistency is the key in kabaddi.
If you perform, you will be there. And just playing in the practice session does not help. First do or die raid will come for Chambal Challengers, Ayush. So that's the reason they are playing on a quick raid for Periyar Panthers. इनविटेशन देके आए थे लोकेश, टीम के कप्तान है, कहा कि चलिए अपने सबसे बेस्ट रेडर को डू और डाई में उतार दीजिए। अजय को उतारा है और कोई चारा भी नहीं था चंबल चैलेंजर्स के पास। सीधा सीधा सामना अनुज से, अनुज ने खुद को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है। उनके साथ में रोहित है, दोनों ने चेन को तोड़ रखा है कवर की तरफ, कवर से लोकेश की तरफ, एक बार फिर लोकेश की तरफ वो टर्न दिखाया था, फिर कवर की पोजीशन पे गए। डू और डाई है, आखिरी के 5-7 सेकंड का खेल बचा है, स्ट्रगल में जाना ही होगा। बोनस फिर भी एक्टिवेट है, इस बार सीधे चाइना की दीवार से भी शायद बड़ी और मजबूत दीवार साबित हुए पेरियर पैंथर्स के लिए। उनके कप्तान लोकेश, फ्रंटल ब्लॉक, अजय बाहर। Absolutely, they have played it well, Ayush. You know, they had played with patience, and the left cover, Monu took over, as we spoke about. He could take over that position he took. That's the reason, that was a good combination. Signing. ये सुनने से पहले मेरे कान और तेज क्यों नहीं हो गए? मैंने सिर्फ ये कहा था कि मोनू कवर की पोजीशन पे खेल सकते हैं या नहीं। मैं खुद डाउट में था, पेरियर पैंथर्स के कोच ने डाउट क्लियर किया। चंबल चैलेंज, प्लीज कम। 44 in, 4 out. Brilliant kick that was. And he should have, got in touch with the corner as well because he was too close, Ayush. क्या ऑल आउट आ रहा है? क्या चंबल चैलेंजर्स के लिए ऑल आउट आ रहा है? यदि यहाँ से ये ऑल आउट आ गया तो फिर स्ट्रेटेजिक टाइम के चलते मोमेंटम फिर रुक जाएगा। इस बार फिर फ्रंटल ब्लॉक आया है और इस बार लोकेश नहीं, उनका सबसे अच्छा दोस्त अनुज लाया है। पेरियार पैंथर्स, चंबल चैलेंजर्स ऑल आउट, ऑल इन। What a comeback for Periyar Panthers here. All in. They were falling short of 5 to 6 points, but then they recovered it Strategic and also timeout. now leading. समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। चलिए सुनते हैं कोचेस क्या कह रहे हैं। सुने, ओए अनुज, लोकेश, इस बार तक 2 ओवर खेला। हिसाब से, आराम से, बेटा कैच नहीं खानी अब। अब 1 नंबर में मत घुसना ज्यादा, 2 नंबर पे खेला, थोड़ा 2 नंबर पे, थोड़ा सा आगे खेल। उसका मेरे कवर आवेगा वो एडवांस है, उसका ध्यान रखना। और सिंगल आप तो काट देने, ऐसे भी काट सकता है, इतना ही तो है। आराम से, फ्री माइंड, टेंशन नहीं, नो टेंशन, ठीक है? ओए युवा कबड्डी सीरीज की ऐप को डाउनलोड कीजिए। कहीं मेरे को केस ना मारे, टच मत करना, पॉइंट मत देना बस, ठीक है? आराम से बोल के। अब मोनू को कहा गया है राधिका की टच मत खाना। क्या मोनू रेड लगाने के लिए जाने वाले हैं? स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में हालांकि 5 सेकंड का समय बचा है, लेकिन 5000 का इनाम आपका इंतजार कर रहा है। युवा कबड्डी सीरीज की ऐप को डाउनलोड कीजिए, वो क्विज खेलिए, हो सकता है कि वो इनाम आपके नाम जाए, हो सकता है कि मर्चेंडाइज भी आप जीत जाएं। 1 अंक का फासला था जो अब ग्राफिक्स चेंज होने के बाद पता चला है कि 3 अंकों का है। पेरियर पैंथर्स के पक्ष में है रोहित यादव की रेड, 8 पॉइंट पे है। सब्स्टिट्यूट होकर ये खिलाड़ी आया था, सुपर 10 के करीब जा रहा है। Very, very confident young lad. This is Rohit Yadav, and they still have the review left. So, number three. Please come. Please go back. TV umpire, Periyar Panther challenges 1 point. Hard decision, no touch point. Please review. yeah, Rohit Yadav. Looks like there is a very, very close touch, Ayush. Because look at the smartness of the raider. He stretched almost, fell flat on the mat to reach the left cover. अब अगर वो टच है तो फुट के ऊपर है और हो सकता है कि क्योंकि वो शूज की वजह से फील ना हुआ हो, टच एंड गो वाली सिचुएशन है। ये सिर्फ या तो रोहित जानते हैं या फिर हमारे टीवी अंपायर जानते हैं। हम तो सिर्फ निर्णय का इंतजार कर सकते हैं राधिका। Exactly. I think looking at the replay, even the referees have a smile because that was a good way of, we've seen flying hand touches, but this was like flat hand touch. You successful. Just lying. 1 point, Periyar Panthers. Captain, your written. This is what confidence is all about. The young guy Rohit Yadav just was turning from left to right, extended up his right hand, got a hand touch on the toe.
and then claimed for that review was successful. लेकिन संस्कार ये सबसे बड़ा मुश्किलात का सबब रहे हैं। पिछले दो मुकाबलों में सिर्फ 7 पॉइंट निकाले हैं और ये सिर्फ इनके इंडिविजुअल लेवल पे नहीं राधिका बल्कि चंबल चैलेंजर्स के लिए भी खतरे की घंटी है। इस बार अनुज को टांग करके बजा कर गए। After such a long time, Sanskar Mishra could get a point. Nice turnaround. It was way too advanced for the corner to come in, but that's a tall raider. And I'm sure this guy would get a super 10, the form he is carrying today. और मिलना भी चाहिए। बैक किक के एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा आज इस खिलाड़ी से देखे। दुर्गेश साहू ने का कब, कहां, कैसे, किसे लगा, मुझे तो अभी तक वो किक एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। तो फिर एंड के अंदर परिवर्तन कर वापस दुर्गेश साहू की तरफ भी आए हैं। कवर की पोजीशन के ऊपर वो टो टच करने की कोशिश है। दुर्गेश पे फिर रनिंग एंड टच मारा, क्या सफलता मिली या नहीं? मिसल बजी है, 1 पॉइंट भी मिला है और शायद दुर्गेश बाहर। And there's a brilliant super 10 and look at the variation he's getting on the mat, Ayush. You know, different skills every single time he raids. He has those hand touches, he has those kicks, he has those toe touches and turn and attacks. He has lovely escapes as well. He has got those super raids. मोनू एक बार फिर वो ताकत दिखाई है। मिड लाइन के टच पे नहीं होने दिया संस्कार का हाथ। पूरी टीम ने कॉम्बिनेशन में ओपोनेंट कैंप के सबसे लंबे कद काठी के खिलाड़ी की रेड को तोड़ दिया। He was so slow and also looks like, you know, he's completely drained his energy without playing much as well. The ankle hold was too strong, but then the covers came in very quick and the dangling hand was being taken care by the captain. Wait. राधिका, लोकेश का ये बहुत अच्छा मूव है। उन्होंने अपनी कॉर्नर की पोजीशन को चेंज कर दिया क्योंकि वो जानते हैं कि शायद उनका स्किल सेट मोनू से बेहतर हो सकता है, लेकिन मोनू की वो पकड़ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो ताकत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और शायद चंबल चैलेंजर्स के लंबे कदकाठी के रेडर्स के सामने उस ताकत की आवश्यकता आज थोड़ी ज्यादा। Now 5-point edge for Periyar Panthers and less than 4-minute game. If the Raiders of Chambal Challengers do not pick, that would be a difficult task. And Ajay Maravi, you know, he has done quite well in the first half. Ayush, we have seen first half 20 minutes, he's got 6. And in the second half 17 minutes, he's just got 1 raid point, Ayush. बिल्कुल, वो पॉइंट्स जो है वो हमने देखे हैं, 7 आज निकाले, बोनस में इजाफा करेंगे। इन टोटल अभी तक इस एडिशन में 58 रेड पॉइंट निकाले हैं। लेकिन राधिका, हमारी स्टेट एंजल, जिसे मैं स्टेंजल कहता हूं, उन्होंने एक स्टैट निकाल के दिया, वो ये है कि अभी तक 58 पॉइंट निकाले अजय ने। क्या उनको और मौके दिए जा सकते हैं? फिलहाल पेवियर पैंथर्स ने मांग की है रिव्यू की। पेरियर पैंथर चैलेंजेस, नो बोनस पॉइंट, आवर डिसीजन बोनस, प्लीज रिव्यू। They have been lucky with the bonus this year, but then let's see. The angle looks good where, you know, leading feet was over the bonus line. The rear foot is still in the air, but then did the landing happen on the bonus line is what it should be the question. Review unsuccessful, bonus point, Chambal Challengers. Captain, your reviews or no more reviews? अब क्योंकि पेवियर पैंथर्स के पास में वो रिव्यू बचा था, उन्होंने सोचा कि 3 मिनट बाद इस रिव्यू का करेंगे क्या, वो वैसे भी कोलैप्स हो जाएगा। रिव्यू की मांग की, लेकिन टच एंड गो वाले रिव्यू में बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस मिली है। इस रेडर को क्या और ज्यादा मौके मिले जा सकते हैं? राधिका, 58 पॉइंट इन टोटल निकाले हैं। आज के मुकाबले में जहाँ संस्कार परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वहाँ इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। कैसे देखते हैं आप इनके योगदान को चंबल चैलेंजर्स के इस कैंप में? Absolutely, no. If you have Durgesh also and also Sanskar Mishra, you're still falling short of the third raider who can be a full-time raider. So Ajay Maravi will definitely have that space available because rotating of the raiders when you have those injuries also, and he has different variation in his skills. Ayush, he plays very calculatively, so I'm sure he should find his space. सुपर रेड इस मुकाबले में अब तक 2 लगी है जो पेवियर पैंथर्स की टीम ने लगाई है। चंबल चैलेंजर्स डू और डाई पे इनवाइट करना चाह रही है पेवियर पैंथर्स को। ये लीजिए, डू और डाई आ चुकी है, रिचपाल जाट आए हैं। अब इनके लिए तो मैं वो कहना बिल्कुल नहीं समझूंगा उचित जो मैं आमतौर पे डू और डाई के लिए कहता हुआ नजर आता हूं, लेकिन बचे हुए 2.25 मिनट क्रूशल है इस मुकाबले से, ये हम आप सभी जानते हैं। चंबल चैलेंजर्स अपनी वापसी को ढूंढ रहा होगा। आज के डिफेंस में बोनस एक्टिवेट नहीं है। गोपी से क्या वो गलती हुई है? क्या वो ज्यादा एडवांस खड़े थे? क्या वो बोनस लाइन बॉक्स लाइन के भी पार खड़े थे? 1 point, Chambal Challengers.
None of them have the review here. It's a do or die in a defense of 5. There was a lot of confusion in the footwork of the defense, Ayush, of Chambal Challengers. They're getting confused, Right. but then though he went for a diving, touch, but then it's not executed. 3-point edge for Periyar Panthers. Ayush, what do you think? अब यहाँ से ये चीज तो तय है राधिका की जो भी टीम विजय हो वो 7 अंकों से बड़े फासले से उन्हीं थोड़ी सी मुश्किल नजर आएगी, क्योंकि दोनों ही टीम गेम को थोड़ा स्लो करने की कोशिश करेगी। कवर के ऊपर लोकेश, हमने और आपने दृश्य कितनी बार देखे हैं। कॉर्नर अनुज संभाल रहे हैं, दूसरे कॉर्नर के ऊपर मोनू है। यहाँ थोड़े सा डिफेंस दिल मिलाया जरूर था, लेकिन अगली रेड पे अनुज बॉक्स को पार किया। समय का इस्तेमाल करेंगे, गणना करिए कितने सेकंड बचे हैं। I think it was a radar error from Chambal Challengers, Ayush. Ajay Marabi, they would not get many raiding opportunities, and the raiders from Periyar Panthers would not even go deep in unless, they just crossed the box line. You'd have gone at least for a bonus. 1 point, Periyar Panthers. Number 8 out. You got a running hand touch or what? Toe touch. Chambal Challengers. Straight away. गोपी को टो टच करके बाहर किया। अनुज के अंदर भी वो स्किल सेट धीरे धीरे इवॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी टीम के रेडर शायद परफॉर्म नहीं कर रहे। पक्का 4 पॉइंट रिस्क ले, रिस्क मतलब पहले बोनस ले और फटाक से मारने का ट्राई कर। 4 पॉइंट पीछे है। रेड में भी तुम लोग को भी अटैक करना पड़ेगा, डिफेंस में भी अटैक करना पड़ेगा। बोनस नहीं जाना। रिचपाल ने, ओए रिचपाल अगली रेड, रिचपाल। Periyar Panthers will run away with the victory here because you hardly get 2 raids here. So I'm sure that there's no coming back unless Periyar Panthers does an error in this attack. Let us say 1 point, Chambal Challengers. Number 7 out. ये अनुज के हाथों में जो वो तिलिस्मी जादू था वो कहाँ गायब हो चुका है। पिछले कुछ मैचेस से हमने देखा है वो एंकल होल्ड करने के लिए जाते हैं और वो पहले ही जर्क से रेडर को छोड़ देते हैं। अजय ने अपनी टीम के लिए वो बोनस तो नहीं, लेकिन वो 1 पॉइंट लिया है। इससे ये इंश्योर हो गया कि ये मुकाबला जब समाप्त होगा, ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आएगी, तो चंबल चैलेंजर्स अपने लिए पॉइंट्स टेबल के अंदर 1 पॉइंट जरूर क्लेम करेगा। लेकिन क्या अपना वो सुपर 10 जो क्लेम पेरियर पैंथर्स की तरफ से करते हुए नजर आए हैं रोहित, उसके अंदर और इजाफा हो सकता है या नहीं? सिर्फ बॉक को पार करके, समय का इस्तेमाल करके एम्प्टी हैंडेड शायद अपने कैंप में वापस आएंगे या अपनी टीम के लिए कोई और टच लाएंगे। मुकाबला तो समाप्त है, ऑफिशियल समय पूरा हो चुका है। पेरियर पैंथर्स अपने लिए जीत लाया है। चंबल चैलेंजर्स को इस चैलेंजर राउंड में पहली हार का स्वाद चखाया है। Absolutely, Rohit Yadav was a super sub who turned around the game for Periyar Panthers. We have seen a few errors in the initial stages in the defense from both the teams, but then Periyar Panthers, they picked up right on time in the defense as well. And for Chambal Challengers, today Sanskar Mishra was that, raider who just lost his confidence completely. सीखना पड़ेगा संस्कार को, क्योंकि 2 ऐसे खिलाड़ी आपकी टीम के अंदर मौजूद है जो कभी ना कभी इस एडिशन के अंदर टॉप 3 रेडर्स की लिस्ट में शुमार रहे हैं। अब क्योंकि दुर्गेश पूरी तरीके से फिट नहीं है तो संस्कार को वो रोल निभाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अजय को जब आज अपॉर्चुनिटी मिली, जब उनको कहा गया स्टेप इन करने के लिए, उन्होंने करके दिखाया। सेकंड हाफ की कहानी स्ट्रेट अवे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगी। डिफेंस पेरियर पैंथर्स का सदावा था, ना सिर्फ डिफेंस में बल्कि रेड में भी आज ज्यादा पॉइंट पेरियर पैंथर्स की टीम को मिले हैं। कुछ टैकल अच्छे करके चंबल चैलेंजर्स की टीम ने भी दिखाए थे, लेकिन वो गणना के अंदर यदि थोड़ी सी भी गलती हुई है तो शायद चंबल चैलेंजर्स से हुई है। कॉम्बिनेशंस में अगर कभी भी गलती हुई है तो वो चंबल चैलेंजर्स से हुई है। ना ही कॉर्नर ना ही कवर भी आज उनका थोड़ा सा एडवांस खेल रहा था। कॉर्नर ने भी डैश करने के वो उड़ते तीर लेने की कोशिश की थी, लेकिन ये खिलाड़ी ये सिर्फ उड़ा नहीं है, अपनी टीम के लिए उस मुकाम पे जाकर पहुंचा है जहां से जीत शायद उसके पक्ष में जाए। रोहित जिस तरीके से अपनी टीम के लिए पॉइंट्स ला रहे थे, काबिल तारीफ है। डिफेंस तो लगातार दहाड़ता ही है इस टीम का पेरियर पैंथर्स, लेकिन रोहित ने जब जहां जिस स्किल सेट के साथ मौका मिला अपने आप को प्रूव किया है। राधिका Absolutely, he just played with the brains today. I think maybe they would have had Durgesh Kumar in the substitutions at least, Ayush, because when this is a close contest, maybe a substitution of Durgesh would have worked for them. You never know then, अगले मुकाबले में क्या पता वो इतने फिट हो कि मुकाबले में खेल पाए, प्रैक्टिकली वो स्टार्टिंग 7 में आ पाए। लेकिन आज क्या हुआ वो कहानी सीधे आप और हम दोनों देखते हैं।
चंबल चैलेंजर्स ये मुकाबला 3 अंकों के छोटे से मार्जिन से, लेकिन फिर भी गंवा जरूर चुकी है। पेविया पैंथर्स की जीत की गाड़ी अभी भी उसी रथ पे, अभी भी उसी पटरी पे चलती हुई नजर आएगी। 3 अंकों का फासला ना सिर्फ टोटल विक्ट्री में था, बल्कि रेड पॉइंट के अंदर भी वही फासला था। टैकल के अंदर 3 अंकों का फासला फिर पेविया पैंथर्स ने हासिल किया है, लेकिन एक्स्ट्रास के अंदर वो 3 पॉइंट चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में गए। उसी के चलते शायद वो स्कोर डिफरेंस आपको नजर आएगा। सुपर रेड 2 लगी थी, पेविया पैंथर्स ने लगाई थी। सुपर टैकल 2 बार क्रिएट पेविया पैंथर्स ने की थी, लेकिन चंबल चैलेंजर्स ने एक बार लुत्फ जरूर उठाया। रोहित यादव सब्स्टिट्यूट होकर ये खिलाड़ी आया, लेकिन फिर भी बेस्ट रेडर का नाम अपने शुमार करते हुए नजर आएंगे। टोटल रेड्स 12 इनिशिएट की थी। युवा है, चेहरे के ऊपर मासूमियत है, लेकिन पॉइंट्स निकालने में कमी नहीं। 10 रेड पॉइंट निकाल के सुपर 10 कंप्लीट किया। 2 जो सुपर रेड लगी थी इस टीम की तरफ से, वो दोनों में ही इस खिलाड़ी का इन्वॉल्वमेंट था। स्ट्राइक रेट 80 से ऊपर का अद्भुत ये खिलाड़ी। Absolutely. I'm sure he should find the place in the starting 7. And Monu Prasad, what a defender he turned out to be in our defense strong unit. Total attacks is 4 and tackle points were 5. One of the super tackles he executed were 2 of them. And look at the tackle strike rate, 125. What more do we ask for? 125 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए खिलाड़ी नजर आया। पेविया पैंथर्स राइट द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। 2 मुकाबले खेले, दोनों में इनको जीत मिली। हालांकि पल्ली टस्कर्स को एक्शन में अभी भी आना है, उनके पास में चांसेस थोड़े ज्यादा है। यदि वो स्कोर डिफरेंस अच्छा मेंटेन कर ले तो ऊपर जा सकते हैं। चंबल चैलेंजर्स तीसरे पायदान के ऊपर बनी रहेगी। दूसरा मुकाबला खेला था और पहली हार चैलेंजर राउंड में उनके पक्ष में गई है। अरावली एरोज की टीम अभी तक उन्होंने खाता खोला नहीं है। नीलगिरी नाइट्स 2 मैचेस खेले, दोनों इस टीम को गंवाने पड़े। आज के दिन का अगला मुकाबला मैच नंबर 99 पल्ली टस्कर्स के सामने अरावली एरोज आएगी। मुकाबला 8 बजे जरूर शुरू होगा, लेकिन अभी भी आप लोग कहीं जाइएगा मत, क्योंकि समय कुछ समय में होने वाला है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का। स्टे कनेक्टेड ओनली ऑन फैनको। सो पेरियार पैंथर्स के लिए एक और मुकाबला बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ा है और हराया है उन्होंने किसे इस बार चंबल चैलेंजर्स को। तो आइए आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑफ मैच नंबर 98 ऑफ युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन 2023। इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे विद थैंकिंग ऑल आवर पार्टनर्स। फर्स्ट ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैनकोड, फैंटेसी पार्टनर ड्रीम 11, फिजियो पार्टनर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटलिटी पार्टनर जिंजो होटल और हेल्थ केयर पार्टनर रामाकृष्ण स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और आज हमारे साथ प्रेजेंटेशन में मौजूद है सूर्य की तरह चमकने वाले द वेरी हार्ड पर्सनैलिटीज विद अस, जो बड़े हार्ड वर्किंग भी हैं, मिस्टर रवि रंजन कुमार, एलिवेट इंडिया स्पोर्ट्स। आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे इन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। ये मुकाबला खेला गया था चंबल चैलेंजर्स बनाम पेरियार पैंथर्स। बड़ी डेडिकेटेडली दोनों ही टीमें आगे बढ़ रही थी, बट अंत में आते आते पेरियार पैंथर्स ने इस मुकाबले को जीता विद 31-28। आइए सीधा चलते हैं अवार्ड्स की तरफ। शुरुआत करेंगे फर्स्ट विद द बेस्ट रेडर ऑफ द मैच, जो रहे पेरियार पैंथर्स के रोहित यादव, जिन्होंने प्राप्त किए 10 रेड पॉइंट्स अपनी टीम के लिए और सील की एक बड़ी विन।
और अब समय बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की बात करेंगे तो पेरियार पैंथर से आज नए पेरियार के पैंथर आपको नजर आए, जिन्होंने बहुत ही आकर्षक प्रदर्शन कर दिखलाया और न्यू स्टार बने अपनी टीम के लिए डिफेंस में। वो थे मोनू प्रसाद, जिन्होंने बनाया एक शानदार हाई फाइव। देखते हैं इनके भी टैकल्स को। और निश्चित तौर पर जब इनके अपने टैकल्स देखे तो वाओ, ऑस्ट्रक हम सभी हो जाते हैं इनके टैकल्स को देखने के पश्चात। बट अभी समय कबड्डी कमाल ऑफ द मैच की तरफ चलने का। वो थे पेरियार पैंथर्स के सुपर रेड लगाने वाले, वन मोर टाइम, जिन्हें हमें आदत हो चुकी है इस प्रेजेंटेशन में बुलाने की एक और दफा। ये नाम है रोहित यादव। तो लगातार मुकाबले, लगातार मैचेस में यहाँ पर इस खिलाड़ी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। पर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे साथ रवि रंजन कुमार को जुड़ने का और हमारे सभी साथियों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।
So match number 99, Palani Tuskers versus Aravali Arrows. Two big teams are fighting out for a big win. Here the time occurs to invite both of them are on the mat. I hope you are all set and all requested down to invite them. So चलते हैं और बुलाते हैं सबसे पहले ऐसी टीम को जो टॉल खड़ी है पहले पायदान पर. तो चलिए जोश, जज्बा और जुनून के साथ चैलेंजर राउंड के आज के दिन के अंतिम मुकाबले में बुलाने का समय है. Palani Tuskers. और अब समय है के चीर प्रतिद्वंदी को मैट पर बुलाने का. अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं चैलेंजर राउंड में. जीत की सौगात से करना चाहेंगे शुरू. आ रहे हैं अरावली एरोज. The Periyar Panthers have descended down along with the Palani Tuskers, and today challenger round did not go really well. Once again for the Nilgiri Knights going ahead for their second defeat for a team that was undefeated in the challenger round. The correction in the booster round, but the challenger round has not started well. But for the Aravali Arrows, it has to start well against this team. Palani Tuskers, yes, they are coming in with one victory. Tamil Arasan and Purushothaman Palanivel, trusted corner combination. Stuart Singh, Jayasuriya Nagarajan and Mukesh Kannan in the rating department. And Manikandan Subramani comes in along with Arul Nanda Babu. Right, the boxer is there with Arul Nanda and Ram Kumar, Jet Pachti, Ayanathan Ranganathan, Abhimanyu and Naveen Alagar Sami will be in the substitution lines and with Ilavarasan as the coach. So, no Ajay Mutaya. His neck injury, I think, is a bit of a problem there, Harshit, where Ajay Mutaya is not there in the 11 as well. जी हाँ नवीन, और शायद इसी वजह से कोई रिस्क वहाँ पर उनके कोच लेना चाहते नहीं. कल जो उनकी नेक इंजरी थी, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो अंत तक लेकर जाना चाहेंगे उन्हें. बट अभी आइए अरावली एरोज की बात करते हैं तो इसमें कोई ऐसा बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला नहीं. जो इनके बेस्ट अगर सभी राउंड से बात करें तो वो टीम यहाँ पर आपको नजर आ सकती है. साहिल बागड़ा होंगे, चेतन चौधरी, प्रेम भडू, रोहित बेनीवाल. पिछले मैच में उन्होंने अच्छा किया था तो आज लगातार अब इन्हें शुरुआती साथ में ब्रजपाल के साथ जगह दे सकते हैं एज ए रेडर. अंकित जाट और राजेंद्र बाकर परफेक्ट टू कॉर्नर्स हैं. हरिओम चौधरी, प्रदीप सिंह, सोनू, देव गुजर, नवप्रीत सिंह आपको सब्स्टिट्यूट्स में नजर आएंगे. नवप्रीत का नाम भी नवीन एज ए थर्ड रेडर या ऑलराउंडर हो सकता था, बट नवप्रीत को एज ए सब्स्टिट्यूट ही शुरू कराना चाह रहे हैं टीम. Yeah, just 5 more points away for the glorious Raider to make my calling coming true. First Raider to reach 100, first Raider to reach 150, and he might be the first Raider to reach 200 as well. Gagan Glorious Gora, and just right behind him, Sanskar Mishra. I think in the previous match, they did really well, the Chambal Challengers, and along with Durgesh Kumar. It was 2 and 3, but it is now changed to Sanskar becoming 2 and Durgesh becoming the third best Raider. जी हाँ नवीन, क्योंकि दुर्गेश कुमार इंजरी कंसर्न एक बार फिर से वहां पर शुमार है, जिसके चलते दुर्गेश पिछला मुकाबला खेले नहीं. संस्कार इकलौते पर वो जिम्मेदारी थी. आइए टॉप 3 डिफेंडर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकेश गुसलिया वहां पर मौजूद मिलेगा. पिछला मैच पेरियार पैंथर्स से मोनू प्रसाद ने अच्छा खेला तो सिर्फ लोकेश गुसलिया ने असिस्ट किए टैकल्स को. आज यहाँ पर अंकित जाट के पास मौका है कि अपने 55 पर जो गाड़ी रुकी है उसे आगे बढ़ाने का. शिवा कुमार 21 मुकाबले में 52 टैकल पॉइंट्स पर है नवीन. And interestingly, I will ask you something that you will have to actually correct me in the Hindi pronunciation. I have this doubt from a very, very long time. Jay Kumar flips the coin. Mukesh Kannan says, give me the coin, as Palani Tuskers have won the toss. And Aravali Arrows will be raiding in first. Chetan Chaudhary today will be the captain for the Aravali Arrows. That's an interesting change. Okay, not Prem Bhadu, but he will be wanting to contain his defenses against this lad, Jayasuriya Nagarajan. Wonderful raid strike rate, 81.92. And as a raider,
he actually reminds me of Jai Bhim because Jai Bhagwan, he looks like his younger brother for sure, and so stout and so energetic, and he can escape the 3 defender hold also in a super tackle situation. That is what a raider needs: anti-blocking, anti-dashing skills. जी नवीन, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया। जय भगवान और जयसूर्य नागराजन बिल्कुल वैसे सेम जैसे लगते हैं। और आइए अंकित जाट की बात कहते हैं। आज एज अ लेफ्ट रेडर इस खिलाड़ी से इन्हें बचना होगा। अंकित जाट 22 मुकाबलों में 52 टैकल पॉइंट्स, 42 के आसपास की टैकल स्ट्राइक रेट है। बट जब ये कभी एडवांस एंकल होल्ड के लिए चले जाते हैं तो जयसूर्य नागराजन को लेफ्ट कवर भी अटैक करने आएंगे। तो नवीन, यहाँ कहीं जयसूर्य नागराजन मल्टीपल रेट पॉइंट्स ले जा सकते हैं। तो शुरुआत मुझे लगता है दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जयसूर्य नागराजन 110% रेट लगाएंगे शुरुआत में। अंकित जाट क्या शुरुआत में अपने हॉर्सेस को होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि पलनी के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। 15 मुकाबले जीते हैं, 3 हारे हैं, 3 टाई खेले और 71 के आसपास का विन प्रतिशत। बहुत अच्छी कन्विंसिंग नंबर्स हैं। Very convincing, and I also can see that Aravaliaros have once again gone in defense heavy. I don't see Sahil Bangra actually going out there and raiding in too much. He becomes the premium raider, but it would be Brijpal Singh Gaur actually to hold on to that raiding fort. As Ajay Reddy asks me, do you think Palani needs more consistency in their raiding department? A very good question, Ajay Reddy. And I will tell you what, the raiding is not inconsistent, but they are over-dependent on Jayasuriya Nagarajan. That's been their problem. Stuart Singh and of course Mukesh Kannan, yeah, he tries to be a captain, tries to be a defender sometimes. That has been a problem. There is no second strong raider. There was Jet Pasupati, but I wonder why Ilavarasan and even Tivakaran, they always like to start Jet Pasupati from the bench, and even Ram Kumar from the bench. That's happening for a few matches. So Jayasuriya Nagarajan needs the support. It is not that it is inconsistent, but the support system needs to be worked out well by Ilavarasan. जी नवीन, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमने कंसिस्टेंसी तो देखी है रेड में पलनी टस्कर्स की और जयसूर्य नागराजन। हमने बूस्टर राउंड में देखा तो सबसे नंबर्स में अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पर सबसे हाईएस्ट रेड पॉइंट्स उसी टीम के थे। अरावली एरोज की बात करते हैं, 23 मुकाबले 8 जीत, 14 हार, 1 टाई। उनका विन प्रतिशत उतना कन्विंस नहीं करता हुआ नजर आया है। बट क्या आज वो दिखला पाएंगे पलनी टस्कर्स को हराकर? पिछले 5 मैच में से पहला मुकाबला जीता था और वो अंतिम मुकाबला जीता है। बीच में 3 हार थी। अब क्या इन 3 हार को भूलकर और 2 जीत को सुनिश्चित करके आगे जीत के प्लेटफॉर्म पर बढ़ना जाए कि देखते हैं कि क्या यहाँ पर अरावली एरोज के लिए प्रश्न पूछा गया है। Are Aravali Arrows lacking a good attacking raider going ahead in the tournament? रिया झा का यह प्रश्न है नवीन, कहीं ना Only one word answer, yes. Only one word answer, yes, totally. Not just in this challenger round, even from the survival round, we have seen Aravali Arrows struggle with no strong raiders. But Periyar Panthers, Arshit, see, they have molded Rohit Yadav, they have molded Richpal Jat into becoming nice raiders. But Aravali Arrows have not done it. I wonder why, because see, they don't entertain Navpreet Singh to start. He's a very good raider for me. They don't entertain Brijpal Singh to take up all that responsibility of raiding. So there is something with Rajesh and his team that they haven't molded a raider, and that is why they are finding themselves in that bottom half of the table where they will be tested in this challenger round. Right, let's see today if the Raiders who are there can face up the Palani Tuskers' defense. Let's go to the countdown and get this match started. Yeah, the Palani Tuskers won the toss, so the first raid might happen from Sahil Bagra as Raki Kumari says yes, go ahead, and Raki's nickname is Bobby. Right, that is one interesting detail. Yeah, Brijpal Singh starts off. Yeah, Harshit, I actually wanted to know one Hindi pronunciation. Yeah, Naveen. Oh, lovely back kick. We will speak about the pronunciation later. But this is picture perfect. जर्सी नंबर 8 आउट। वाओ, क्या शानदार बैक किक यहाँ पर इनिशिएट किया और अरुल को पूरी तरह से यहाँ पर स्टुपेंडिफाई कर दिया, और उतना ही शायद जय पशुपति को भी किया था। देखिए यहाँ पर कुछ और मूव के लिए प्रेडिक्ट कर चुके थे, बट उसके बाद जैसे ही ब्रजपाल ने देखा कि राइट कवर हल्का सा उनकी तरफ आए नवीन,
बहुत ही यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर किक लगाई थी, तारीफ के काबिल किक थी और पहला अंक अरावली को मिला। ये अच्छे संकेत है। बच्ची नवीन उस बात पर वापस आते हैं, कौन सा शब्द है जो आपको परेशान कर रहा है? Not Parishan. I have that confusion in me as Jayasuriya has come in. No, this is Stuart Singh. This is not Jayasuriya Nagarajan. This is Stuart Singh. Gets the hand touch on Chetan Chaudhary, the right 1 cover. point. Rocky Jersey agrees number with that. 81 out. जी हाँ, वो उंगली निश्चित तौर पर एक पॉइंट को बयां कर रही है। चेतन चौधरी पहले मना कर रहे थे, उसके पश्चात अपने साथी डिफेंडर से बात करते हुए यहाँ बिल्कुल एक टच नजर आया, एक अच्छा क्रम वहां पर कर दिखलाया स्टुअर्ट सिंह ने। जी नवीन। Yeah. So now this is a good thing to ask about the touch. Sahil, remember Arshit, he came into our ears and he said, "I am Sahil Bangra, not Bangra, not Ra, Bangra." Yeah. So in Hindi, see, like say for example Chandigarh, it is written as R, but it is pronounced as Chandigarh. And even Ramnagar, okay, which is on the way to Mysuru from Bengaluru, it is Ramnagar. But in the movie Sholay, it was told as Ramgarh. Now, why is that confusion? Why can't they write as Gad only in English? And why can't Sahil Bhangra be told as Sahil Bhangra, as Jayasuriya Nagarajan is being backholed in a very, very nice fashion. First rate has been tackled out. वाओ, उस प्रश्न पर हम वापस आए उससे पहले अंकित जाट के बारे में आज हमने बात की थी। नवीन, टर्न करने की जयसूर्य नागराजन ने कोशिश की, टर्न बहुत ही अच्छी तरह से करने गए थे बट पूरी तरह ब्लाइंड कर दिया था जयसूर्य नागराजन को। शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अंकित जाट इतने ब्रूचुअल फोर्स के साथ आने वाले। बट नवीन, बिल्कुल आपका प्रश्न सही है। और हिंदी में अगर हम बात करें, जैसे कई बार जो आर का उपयोग किया जाता है वो ड के लिए भी किया जाता है। जैसे कि हम साहिल बागड़ा की बात करें, साहिल BAGRA बागड़ा, अगर आप उसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, बट हम उसका हिंदी जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो बागड़ा, तो र को इंग्लिश में वो र से ही कई बार संबोधित किया जाता है। नवीन, yeah, correct, but see, I'll tell you why I asked that. As Stuart Singh is reading, see, Manogar, when you see Manogar there as a defender's name that we saw in I think I think he's in the Chola Veerans. Okay, in Tamil we don't have ha. We don't say ha. It is ga always. It is written as ga. Do what I read, and Sahil Bhangra or Bagda has been ankle held by Tamil Arasan. Wonderful work. जी हाँ, तमिल अरसन बहुत ही अच्छा एंकल होल्ड वहां पर आया। और ये युवा खिलाड़ी को हम जब अच्छा करते हैं बहुत हम खुश होते हैं। देखिए, पहले एंकल्स पर गए, उसकी तरह से पूरा बॉडी वेट डाला। अच्छा साथ यहाँ पर मणिकंदन का आया, जैसा कि आप बात करते हैं बॉक्सर हैं। और पिछली बार भी जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी ना नवीन, तो मणिकंदन ने वहां पर 6 टैकल पॉइंट्स प्राप्त किए थे और कम किया था। उतना ही क्या अच्छा कम इस मैच में जयसूर्या पहली रेड में आउट होने के बाद आए हैं। पर नवीन, उस कन्वर्सेशन पर वापस चलते हैं। Yeah, correct. And yeah, we will continue that conversation. If we can go back to that replay once again of the ankle hold, see the timing, Arshit, of Tamil Arasan. That was just impeccable. There, the moment he was expecting the bonus to come in, and there the ankle hold. So it is all about how you expect as a corner defender. Like this, once again an expectation from Arun Nanda. 1 point. And a nice high hold. क्या बात है, ये मैच नवीन बहुत ही अच्छी तर्ज पर शुरू हो चुका है। एक बार फिर से लेफ्ट कवर पर दोनों थाइस पर वहां पर गए मणिकंदन और दोनों थाइस को शिकार बना दिया रोहित बेनीवाल वहां पर बाहर जाते हुए। पर अब डू और डाई रेड नवीन और स्टुअर्ट सिंह इस डू और डाई रेड में होंगे। Yeah, under pressure, totally under pressure, because only 5 to contain with. Watch out, Ankit Jat on the right corner. Balance yourself. Stuart Singh has that amount to go. Come on, Rajendra Pakar. Oh, the dynamite needed a little more time. Jersey number 2 and 3 out. Blasted even before the clock clicked. अचानक से देखिए, ये इस टैकल की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। सिली एरर के तौर पर हम इसे देखेंगे। वहां पर राजेंद्र बाकर क्या टैकल करने गए थे, जरूर जो थोड़ी सी निगाहें थी रेडर की वो अपने अपोजिट एंड पर थी, पर राजेंद्र भाकर ने इतना समय दिया ना स्टुअर्ट सिंह को कि वो कुछ भी कर सकते थे। नवीन, सिर्फ आशीर्वाद देके भी वापस आ सकते थे स्टुअर्ट सिंह। Yeah, and also when a raider is on the back line, just not given, and you have to go for the ankle hold. Yeah, just coming back to that pronunciation. So Manohar is never ever written as Manohar. Bonus point, Aravali Arrows. As he gets the bonus point. So it's always written as Manogar. Even in Tamil,
Oh, kind of lucky. Kind of luck factor. Never mind. It's not a do or die race, but yeah, bonus look a little dicey. Oh, wanted to turn the pages around. Jayasuriya Nagarajan, has he hurt himself? Oh, the tackle is brutal. The tackle is completely brutal in a super tackle situation. Red out. Super Oh, tackle. sit down, sir. 2 Excuse points. me, uncle, sit down, Aravali please. Arrows. Hang on, what was that? The cameras are around. What does he actually want? He's प्रेम making बदू का a बहुत funny ही mockery powerful. of himself. Oh, यहाँ लगी होगी नवीन जरूर शायद थोड़ी सी नाक पर, yeah, totally. क्योंकि इंटेंशनली जरूर नहीं था, पर प्रेम बधू का वो जो नी आ रहा था उसके बाद जयसूर्य नागराजन बहुत तेजी के साथ वहां पर गए और बिल्कुल जैसे कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी वहां पर चेक करता हुआ जयसूर्य नागराजन को। और राम कुमार देखिए, जैसे ही जयसूर्य नागराजन थोड़ा सा इंजरी कंटेंट बनाए, थोड़ा सा तैयार हो रहे थे, पर नवीन और जी उसके बारे में आप बात कर रहे थे, तो देवनागरी जरूर जो हमारी लिपि कहा जाती है, देवनागरी लिपि, उसे कुछ मतलब अगर आप र को बात करें तो ड उसी के तहत मुझे अच्छी तरह से इतना नहीं पता, बट जरूर मैं कल और सर्च आउट करके आऊंगा इसके बारे में। Yeah, just ask somebody. Yeah, correct. So that's what I wanted to know. This doubt has been there in my mind like many years. But in our Dravidian languages, we don't do that. You know, whatever we pronounce, we write. You see, in Kannada, in Tamil, whatever we say, if it is Dravid, it is Dravid. Okay, we say it as Dravid, and we write also D-R-A-V-I-D, Dravid. That's it. So the English can say Dravid, but in Kannada also we write it as Dravid. As simple as that. Lovely double ankle hold, or double thigh hold that's converted to the Kyle Bagra. And what Deva's done nicely is, Harshit, I like what Deva's done. He's asked our ENG cameraman Satish to stand right in front of Rajesh so that he can be kept quiet. That's good. Deva, don't ask Satish to move there. Give him a chair, just make him sit there. जी आप देखते हैं सुवन सिंह ने शुरुआत अच्छी की है, पलनी टस्कर्स ने सिर्फ 5 पॉइंट पर अरावली एरोज है, 6 पर पलनी टस्कर्स है, 3 का हाउस बचा है। पिछली बार एक बहुत अच्छा फ्रंटल ब्लॉक किया था प्रेम बड़ू ने, इस बार टच का प्रयास है, मिड रेप पर गए थे, क्या हवा में होते हुए वहां पर मिड लाइन को क्रॉस किया था नवीन। 1 point super tackle, 2 points Aravali Arrows. Yeah, looks like it. Very much looks like it. They want to have a challenge on this, the Palani Tuskers. Please move back. TV umpire, Palani Tuskers challenging, right shape 2 point. Our decision, right round. Please review. I think he took a lot of time in turning Stuart Singh. The hand touch was okay, and then Prem Badu comes in exactly on the waist. He's totally out. He's totally out. That's a strong dash of the Prem Badu out there. Beautiful work. This is going to be the second super tackle according to my books. It definitely is a super tackle, and Palani Tuskers will lose their review maybe. यहाँ पलनी टस्कर शायद अपना रिव्यू गवा सकते हैं। और नवीन जो आप बात करते हैं ना कि परफेक्ट मिड रिफ डैश, वो एक परफेक्ट मिड रिफ पर डैश किया गया था प्रेम बड़ू की तरफ से। जरूर प्रेम बड़ू ने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, बट आज प्रेम बड़ू के आंखों में वो थोड़ी सी कहते हैं ना कि एक जिस तरह से आप इग्नाइट देखते हैं, यानी कि फ्लेम जो देखते हैं कैंडल में, वैसी फ्लेम मुझे नजर आ रही है, यानी कि वो ज्वाला नजर आ रही है। इसलिए दूसरा बड़ा सुपर टैकल ने किया और शायद यहाँ पर पलनी टस्कर रिव्यू भी गवाएगी और अरावली एरोज 1 पॉइंट की पलक पर भी आ जाएगी। Yeah, unbelievable. What a strong dash from Prem Badu. And Stuart Singh, it took a lot of time. Yeah, there. He took a lot of time for the turn and run. He should have just paused, that's it. Small pause. He could have seen Prem Badu coming in for the dash. He could have paused and taken another route instead of going to the lobby, and the boxing champion has been hand touched by Brijpal. And a nice touch point there. Let's go back to that super tackle of Jayasuriya Nagarajan after this replay. Yeah, that's a conviction that you can't do much about it as a left cover defender. If we can go back to Jayasuriya Nagarajan's tackle, how unintentional that was, as Ram Kumar comes in from the bench because no Raiders. Yeah, watch this. Right on the knee, boom! Oh, that would have hurt. But after that, what did Brijpal Singh do? Why there was no green card? Was that not neck holding? Yeah, that's okay, they give the super tackle. What was Brijpal Singh trying to do later, Arshit? And you know what I told Prem Badu? Please control your team. I like that. I like what Raki says. Come on, Bobby. That's a good call. He's won the
Aravali Arrows to control the team. And I think it was a match where, Nilgiri Knights and Aravali Arrows were in a match. And that was a match where Velavan Muruganandan actually got the Best Raiders Award. They were discussing during the post-match award ceremony. Yeah. And Velavan was just mutely going ahead and showing you were punching us, you were doing Let us us and say all that. 1 point. Prem Aravali Badu arrows. was trying to Jersey do number 8 something out. as that was a toe touch. See, I only told Prem Badu, देखिए कैमरा हर जगह पे लगा हुआ है, आपको दुनिया देख रही है, आप सोच लीजिए आप कैसे बर्ताव करने वाले हैं. बस with all that English patience or rather the Hindi patience that I can verdict off, I just told him that. And I think from there he's been a Let us nice say 1 kid. point. Palni Tuskers. Jersey number 2 From the out. time I've told that, Prem Badu is becoming a nice kid. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा नवीन, और ये बहुत सारे प्लेयर्स के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन Right. जाते हैं. बट यहाँ एक इंस्पिरेशन जो राजेंद्र भाकर हैं, वो अभी तक इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस इस मैच में नहीं दिखा पाए हैं. अटैक के लिए इस बार फिर से गए थे. दोनों बार थोड़ा सा हेस्टी टैकल उन्होंने किया है, थोड़ा सा हेस्टी टैकल के लिए इनिशिएट किया है. दोनों बार पल्ली टस्कर्स क्रिएटर्स को पॉइंट मिला है. और नवीन बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ. और सिर्फ एक टीम के खिलाड़ी नहीं, मैं सभी खिलाड़ियों से, सभी प्लेयर्स से, सभी कोचेस से और खासकर जितने भी मैनेजमेंट हो या फिर सभी से, कि हम एक मॉड्यूलर वहां पर बना रहे हैं, एक बेंचमार्क क्रिएट करते हैं कि जितने सारे युवा हमें जब ऑन एयर देखते हैं तो हम उनके लिए सुपरस्टार बनते हैं. जैसे हम क्यों सचिन तेंदुलकर, क्यों महेंद्र सिंह धोनी, क्यों दादा को इतना बड़ा सुपरस्टार कहते हैं, क्यों रोजर फेडरर या फिर तमाम इतने बड़े खिलाड़ियों को कहते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ बहुत अच्छी इंसानियत के साथ उन्होंने अपने स्पोर्ट्स को दर्शाया है. But Arshit, on the same point, even today, Zidane's headbutt has been a black mark in his career. Okay? And the German goalkeeper, Mr. Khan, who was a wonderful, wonderful goalkeeper, his aggression of throwing the ball on the opponent is still a black mark. And you speak about Ganguly, his Lord's act of removing the t-shirt is still a black mark. And everybody forgot Ganguly gave an answer to Flintoff. Flintoff did it in Mumbai. In Wankhede, Flintoff started it. And this is the do-or-die raid where Tamil Arasan has started a nice backhold. Go back, Brijpal Singh. Don't cry like a child. 1 That's point. it. Palni Tuskers. What was he asking again? If the referee seen it, he will give it. Brijpal, stop being a kid. Now watch Right. this, Arshit. After the tackle, see his reaction. Now look, hang on with this. After the tackle, see. Look at what he does. Now, what do you want? ये तो समझ से पूरी तरह परे था. पर अब एक और 2 और टाइरेड यहाँ पर होगी. अंकित जाट फ्रंटल ड्रॉप एक बार उठाकर बाहर फेंकने का प्रयास किया था अंकित जाट ने, पर स्टुअर्ट सिंह ने भी बुलडोज किया और रेडर सेफ यहाँ पर हो जाएगा. अंकित जाट एक और 2 और टाइरेड में बड़ी हेस्टिली वहां पर टैकल करने चले गए थे और इस बार भी हेस्ट में स्पेस हो जाएगा. नवीन स्कोर एक बार पुनः बराबरी और शायद पल्ली टस्कर्स के पास एक पॉइंट की लीड. Palni Tuskers. And he did not have a support. Nobody came in for the support. There, that cross legs. Raki has been bang on today with her decision. ரொம்ப டீப் ஆறடா, ஒரு அடி அடிச்சாவணும். சரியா? புரேஷத்து லாங் நிலை க்ளோஸ் பால் அடி ஃப்ரீ ஆட். Okay. செக் பண்ணி ஆடுடா. करता तो काम होता. डिफेंस रोक के. So he's asked the defenders to stay back. Purushottam means Purushottaman. Longa Nile is just stay behind. And he's told the Raiders, you need to go in deep. I need one touch point. I need the all out. That's what Ilavarasan wants with another Raider going in. This is Rohit Peniwal. He's a very, very good Raider. Has the running anti on Stuart Singh, is it? No. Stuart Singh just escapes that one. So Arshit, I was telling you about those take years and years together. But to get a bad name, just 1 second is enough. 1 second of just behaving badly or just behaving in a way if someone does not like it, that's it. That stays with you forever. And I know Manjeet Chillar very closely. I know how much he has discussed with me about changing his attitude, because he always used to come up and tell us. He's openly told us this, and I'm sharing this in an international platform. He always says, you guys say Captain Cool Anup Kumar, Captain Cool, Anup Kumar, he's so good.
What have I done wrong? 1 point, I have Aravali played Arrows. Kabaddi Jersey number 33 out. aggressively. Is that my mistake? Why do you treat me like a hot-headed person? As a Right. lovely hand touch on Tamilarasan. So, Manjeet Chiller could not wipe off that name on him. Can you believe that? And who are these players? If Manjeet Chiller can't do it, who are these players? If they show extra unwanted aggression on the match. Lovely double ankle hold from the captain Chetan Chowdhury. Brilliant Red work out. and Prem Badu 1 likes point, it. Aravali Prem Arrows. Badu really likes it. अच्छा टैकल और सही समय पर सपोर्ट भी आया, अन्यथा लग रहा था कि क्या चेतन को साथ ले जाएंगे क्योंकि बॉकलाइन पर किया गया टैकल था, बट अच्छी ग्रिप यहाँ पर Right. प्रेम बडू ने भी एक अच्छा साथ दिया। साहिल बागड़ा ने आकर डायरेक्शन को बदला और नवीन डायरेक्शन को बदलना बेहद जरूरी हो जाता है। और पर यहाँ कबड्डी के मैच पर डायरेक्शन आसानी से बदल सकते हैं, पर जो डायरेक्शन आपकी लोगों के मन में बन चुकी है उसे आप नहीं बदल सकते हैं। जो आप बात कर रहे थे मंजीत चिल्लर साहब, बिल्कुल आपने बात की कि वो अग्रेसिव, वो रेड हॉट मोमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो मुझे भी एक क्षण याद आ गया नवीन, क्योंकि आपने मंजीत चिल्लर की बात की। आपको अंडर 19 वर्ल्ड कप याद होगा जब रवि बिश्नोई और आकाश सिंह और बांग्लादेश का मुकाबला था इंडिया बांग्लादेश फाइनल में, और अंत में वो बांग्लादेश ने नागिन डांस किया था। उसके पश्चात थोड़ा सा वहां पर मोमेंट ऐसा बना था जब दोनों ही टीमों में हाथापाई की नौबत आ गई थी। उसके पश्चात आकाश सिंह और रवि बिश्नोई पर कुछ मैच का बैन भी लगा था। उसके पश्चात उन्होंने आकर, मैंने भी जब उनका इंटरव्यू किया तो मैंने बहुत सारी बातें, 1 point, Palni Tuskers. Jersey number 81 out. बहुत ज्यादा प्राश्चित करने के मूड में थे, बट उन्होंने कहा कि जो हो चुका है अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बट हम इन फ्यूचर बहुत ज्यादा इस बात को ध्यान रखेंगे जैसा यहाँ स्टुवर्ट सिंह ने किया। Right. Correct. लेकिन फायदा क्या हुआ? That is the problem, no? Everybody started mocking the knocking dance, isn't it? Yeah. The England team came out. They started mocking the Nagin dance. Now, listen, relax. He's not claimed on you. Relax. Let him go for it. Let the referees decide. Right. Yeah, that's good. An empty raid for Rohit Beniwal. So yeah, that Nagin dance was a black mark in cricket. Yeah, see, there is so much. And these are unwanted memories, Arshit, isn't it? Unwanted memories. Yeah. Now, why do you want that? Oh, this was also unwanted by Chetan Chowdhury. Redder save. Ram 1 Kumar point, Palni has a Tuskers. lovely Jersey hand number touch. 2 out. Rajesh, the whole world is seeing, even if you are talking to your players. Rajendra Bakar, no, I thought it was, my God. तो आज राजेंद्र वाकर के लिए नवीन उतना बेहतर नहीं जा रहा है दिन यहाँ पर। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हमने इनका पिछले मैच में देखा था, पर यहाँ 3 ऐसे टैकल्स वो कर चुके हैं जो उन्हें थोड़ा सा पछताना पड़ रहा है। पर 11-11 पर स्कोर है। रावली अरूज 11 पर है, पलनी भी 11 पर है। यहाँ जो डायरेक्ट है, बहुत ही आसान लगा जब अरुल इस प्रकार से दोनों थाइस पर गए। कोई मौका छूटने का नहीं मिला साहिल को। Ashit, the secret behind that is there. What's that? The timing once again. Sahil Bangra not expecting it, and Arul Nanda goes for it, even without holding the hands of another defender. I wonder for how long that will work. I'm telling you this. One day this will come back to bite all the Tamil teams. I'm sorry guys, I'm saying this in a daisenju mannikkuvom, ana neenga seiyradhu vandu romba thappu. In the covers, if you're not having a hand on your defender, Redder save. that's a big problem. 1 point, Palni Tuskers. Jersey number 71 out. Ram Kumar has that hand touch. एक अच्छी किक लगाई राम कुमार ने। प्रेम बडू बिल्कुल पीछे थे, पूरी तरह से सोने का प्रयास कर रहे थे, बट राम कुमार ने नवीन पिछली बार इंटेलिजेंस ये दर्शाया कि उन्हें पता था कि रोहित उन्हें डैश करने बिल्कुल नहीं आएंगे, और प्रेम बडू ब्लॉक करने में और डैशेस में बहुत अच्छे हैं, एंकल होल्ड में उतने बढ़िया नहीं है। तो राम कुमार ने एक अच्छा वाइस वहां पर स्टेप दर्शाया। अब क्या रोहित अपनी टीम को वहां रिवाइवल दिला पाएंगे, अन्यथा रावली अरोज यहाँ पर ऑल आउट हो जाएगी। Yeah, looks like it. And Tamilarasan today is back to the form that we saw him point, in the first 3 matches where he got the best defender award. Nice timing and the all-out inflicted. चेक बहुत अच्छी डाइव। तमिलरसन जानते थे कि अब रोहित पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके हैं, राइट फ्लैंक से पूरी तरह से सपोर्ट आने वाला है। अच्छा सिंगल थाई पर गए, और अरावली एरोज जिन्होंने एक बार ऑल आउट को पूरी तरह से टाल दिया था, अब यहाँ पर ऑल आउट उन्हें लग गया है। पलनी टस्कर 4 पॉइंट की लीड पर आ चुकी है। अंकित जॉर्ज जिन्होंने नंबर ऑफ सुपर टैकल जरूर बहुत सबसे ज्यादा लगाए हैं, और अरावली एरोज की भी जब आप बात करते हैं तो बाकी सभी 7 टीमों सबसे ज्यादा इनके पास सुपर टैकल्स है। बट राजेंद्र भाकर, नवीन आज इनका एक नया रोल नजर आ रहा है, शायद कोच ने कहा कि जाइएगा, लगातार अटैक कीजिएगा। No, Arshit. Yeah, I might not. Sorry, I never disagree with your point, but this time,
See, every time Rajendra Bakar comes out with a tackle attempt, Rajesh is not happy with him. Oh. TV umpire, arrival arrows challenging, no bonus. Our decision, bonus. Please review. Is this necessary? Is this really necessary? Was this a do or die raid? No, it's not a do or die raid. And the bonus point attempted by Stuart Singh, I think Prem Badu saw it. Prem Badu was in the best of the angles to see it. I think he's seen both the feet landing at the same time. But unnecessary, Harshit. The review on a bonus, if it's not a do or die raid, not going to have a bigger impact. And because Jayasurya Nagarajan is out, Ram Kumar needs to keep on raiding. No bonus. Yeah, Captain, no review bonus. written. Yeah, luckily, Prem Badu was in the best of the angles to see. Look at that. He's right there in the left cover position. Very, very close. I think he saw both the feet landing at the same time. Good review, but be careful the next time that you take that review. Yeah, so we're just speaking about Rajesh and Rajendra Bakar. Rajendra Bakar is a very experienced defender. I mean, he's contributed to the winning causes so many times. Right. And as a coach, you need to see, it's like, again, I'll tell my example, okay? I'll not tell anybody else's example. I was a very, very naughty child. I mean, I was a rebel. Yeah, I am still. I am still. 1 point, Palli Tuskers. And Jersey once number again, 81 there's a out. weak tackle from Chetan Chowdhury. So I became, from naughty, I became rebel. Whether it's Half time, whatever the change the situations at home, blah, 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 whatever. But what happens is, the more you go on scolding somebody, they at one point will rebel. I think that is what Rajendra Bakar is doing. When you keep on showing your disrespect as a coach towards such a defender like Rajendra Bakar, now he's just rebelling. You don't have to have a rebel attitude in a player. We'll speak more about that as the tackle points are fine and Palani Tuskers are holding it together with their raiding and Aravali Arrows have no raiders. We'll come back and speak about that rebel attitude more. Stay tuned with us. सो मैच नंबर 99 यानी कि 100 की तरफ हम चले बढ़ चढ़े हैं, बट यहाँ पर मैच नंबर 99 का समय है। युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन। ब्रजपाल सिंह गौड़ ने बहुत ही आते ही यहाँ पर अग्रेशन का प्रस्ताव रखा था और आज कहीं ना कहीं एक्यूलेट करते हुए टीम नजर आ रहे हैं। अच्छा इंपैकेबल परफॉर्मेंस जैसा कि नवीन ने कहा दर्शा रही दोनों ही टीमें, पर अंत में आते आते पलनी टस्कर्स ने यहाँ पर ऑल आउट किया था रावली एरोज को और राजेंद्र भाकर उस तरह से आज प्रदर्शन नहीं कर पाए जितना आप उनसे उम्मीदें लगाकर बैठे। बट पलनी टस्कर्स ने शुरुआत में कहीं ना कहीं एक ऐसी मोल लीड बना ली है जिसे वो अब सेकेंड हाफ में चाहेंगे एक माउंटेन लीड बनाए। सिर्फ 2 सुपर टैकल्स यहाँ पर रावली एरोज के लिए बड़े नजर आए, उसके अलावा चेतन चौधरी खाते में कुछ अंक थे, पर 4 अंक उन्हें सुपर टैकल में मिले हैं। उन्हें एक साथ होकर शानदार प्रदर्शन करना बेहद जरूरी होगा। आइए नवीन का स्वागत करते हैं इन द कॉम बॉक्स। Thank you so much, Ashit. Yeah, very well summarized on the defensive moves of the Aravali Arrows also. Yeah, apart from Jayasurya Nagarajan, who's injured, the other Raiders are just holding it together. And the Palani Tuskers, yeah, they are holding it together with the Tamil Arasan at left corner, coming back to form. That's very good. As Ram Kumar is filling in for the injured Jayasurya Nagarajan. There's a small injury on the nose, and that's okay. As the first half has completely belonged to the Raiders of the Palani Tuskers, and that's why that lead. And because they won the toss, they will raid first in the second half as well. As Stuart Singh will start the proceedings. So yeah, we were just speaking about how you become a rebel character. See, like a student of this, in the college, I never used to listen to any of my department heads. Oh, too quick, Ankit Judge, who has good numbers in the super tackle situation. 1 point, This Palani time Tuskers. does Jersey not number 3 go to out. the chain.
या ऑटोमेटिकली वो गैप बन गया था रेडर के लिए। देखिए आप स्टुअर्ट सिंह वो चेन में नहीं गए और वो किसी भी दिशा में जाते अपने आप उन्हें वहां गैप मिल जाता, क्योंकि अंकित जाट इतने वहां पर चले गए थे कि अगर वो कहीं लेफ्ट टर्न भी लेते खुद के तो भी उन्हें स्टुअर्ट सिंह को गैप मिल जाना था, और यहाँ पर तो निश्चित तौर पर मिला। और यहाँ क्या साहिल बागड़ा को गैप मिल जाएगा, अरुल थोड़ा सा एडवांस साइकिल फॉक लाइन से दोनों साइड पर जाने का प्रयास और अच्छा जंप करने की कोशिश साहिल बागड़ा की। नवीन Again, the tackle came in from outside the block line for Arul Nanda. That single thigh hold wanted to be a single thigh, but then he wanted to go for both legs. I think that was a mistake. He could have been much better going for the single thigh hold than the double thigh hold. Small errors can be turned around. Arul, I think you would have been much better going for the single thigh hold. Yeah, just speaking about how rebel you become. Ram Kumar, I think, got a bonus on that occasion. Rajendra Bakar once again commits the error. Redder save. 1 point. Palli Tuskers. Jersey number 2 out. Reaction. Once you just clap hand to Rajendra Bakar and say, "ठीक है, चलेगा, अगली बार try करना." That's all. Right. That's all is needed, Arshid. See, every time my department head, let me not take her name. Every time she say, "Oh no, some small issues, some small mistake. Call your parents, blah 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 blah." I said, "Okay, come on. First year you can scare me. What will happen to the second year?" But look at this! Arul Kumar, I think, has a microphone that is connected to my mic. I think that is just a psychological advantage. There's nothing connected there. He went for the single thigh hold now, Archit, and he's successful. जी हाँ, बहुत अच्छा कार्य किया इस बार। No double. यार डबल थाई होल्ड था, बट अच्छी तरह से फिनिश किया वहां पर नवीन, अच्छी ग्रिप वहां पर बनाई और पिछली बार लैंड होने का मौका दिया था साहिल को, पर इस बार लैंड होने का मौका नहीं दिया, सिर्फ स्टूड के स्टूड रह गए वहां पर। और नवीन बिल्कुल जो आप बात कर रहे थे ना राजेंद्र बाकर के बारे में, क्योंकि एप्रिसिएशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, और ये बहुत ही छोटी लाइन है बट नवीन बहुत बड़ा क्रम, बहुत बड़ा महत्व है इस लाइन का। अगर आप किसी के छोटे से कार्य को भी प्रोत्साहित करेंगे तो वो उसे और अगली बार अगर उसने 100% दिया है तो 120% देने की कोशिश करेगा वहां। Simple, very simple. See, you can appreciate him when he does the good job. When he does not do a good job, it's okay. Don't demotivate him. That's what my department head used to always do. First year, he was threatening me. Second year, third year, I didn't even bother. Oh, I think he's got 2 points. Bridge ball. Relax. 2 points. Aravali Arrows. Jersey number 3 and 5 out. Yeah. Fine. See, when you take decision with aggression, now Rajesh said go for the wicket first, and then he says no, not for the bonus. No bonus there. Yeah, thanks Rajesh. You've been intelligent first time. Right, very good. No, see, the problem is there. You are rebelling so much, and you are converting a very good talent into a rebel. But Arshid, I'll tell you something. After I went out via my cricket, via whatever I did in my life, the same department head called me to be a chief guest for the college for 2-3 times. Wow. No, yeah, see, I understand he was telling it for my good. Yes. But see, that is the age, no? See, that is the age where you will immediately become rebel. You have more adrenaline rush. And Rajendra Bakar now against Ram Kumar in a do-or-die race. If he can keep himself cool, that's okay. That's okay if the bonus goes, Rajendra. Just keep yourself cool. No, don't do something. And that's a wonderful dash. Chetan Chaudhary comes across from right cover. 1 point. Very good dash. Aravali Arrows. अच्छा, क्योंकि यहाँ पर राम कुमार की जो निगाहें थी वो राजेंद्र बाकर बचा चुकी थी, उन्हें लग रहा था कि राजेंद्र बाकर मुझ पर अटैक करने जाएंगी, थोड़े से आउट ऑफ द सिलेबस आए, एंटी ब्लॉक करने का प्रयास किया राम कुमार ने, पर चेतन चौधरी आज अच्छा खेले, कहीं ना कहीं एज ए डिफेंडर बहुत ही अच्छा कार्य किया। इसको रोक ले, इसको रोक ले, थोड़ी देर रोक ले, इन दो को चलने दे, थर्ड पे खेलो, 4 की लीड है, 4 अभी बराबर कर दोगे तुम। साहिल को हटाऊं, साहिल Now you tell me, how do we decode it? All the 6 are talking. इससे पता चलता है कि जो देखिए नवीन, हम अक्सर अनुभव की बात करते हैं ना, और राजेश गुजर साहब भी स्वयं अभी तक कुछ समय तक पहले तक और शायद अभी भी एक प्लेयर हैं, तो वो जो कोच का जो दर्जा है ना नवीन, वो मुझे नहीं लग रहा कि वो टीम में उन्हें मिल पा रहा है प्रॉपर तरीके के साथ। और यहाँ हमने टीम में देखा कि कैसे हर एक प्लेयर अपने आप की नई स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहा है, वो कोच को सुनना नहीं चाह रहा है, और कोच भी शायद उनसे पूछ रहे हैं। See, I'll tell you something. It comes with mutual respect. See, okay, you say
yes, he's still a player, blah, blah, blah. Correct. I agree to that point. Now tell me how many matches? 16 matches? 17 matches? That's wonderful. Oh, Rajendra Bakar, come on. Come on. Red out. Why was that Aravali needed? Arrows. Why was that needed? The defense is completed. The tackle is completed. Why should you pull Stuart Singh like that? Come on. I am talking in your favor here. Now. See him. My God. Red. This is such a bad thing to happen. No, see, 17, 18 matches you have played, you need to get that respect from your players. That's a super tackle in a do-or-die race. That's it. Brijpal, relax. Red out. Okay, Brijpal, Super stop being a tackle. kid. 2 points. It's a Palli super tackle. Tuskers. Go back. That's okay. There is something that you will be tackled. There are ups and downs in your life. Right. He still once again complains. नवीन आपने कहा था कि आपने प्रेम बड़ू से बात किया, आप क्या ब्रजपाल से बात नहीं कर पाए थे नवीन? नहीं करना भी नहीं चाहता मैं। नहीं करना भी नहीं चाहता। There are some things which Prem Bodu is a nice man. Okay, he listened to me. He heard me out. He said, yes, Bhaiya, I understand, Bhaiya. I'm sorry. You know, I get a little aggressive. He accepted it. He really accepted it. But I don't think so. Brijpal has that mentality. You know, so whatever. See, that is left to them. We are nobody to tell what they should behave like on a kabaddi match. If they behave good, they will be loved by everybody. If they behave like this, yeah, people know the best. You don't have to tell anything. Surprise! Ankle hold comes in from Mask Mukesh. Wonderful way to get another tackle point. 1 point. Palli Tuskers. जी हाँ, पल्ली टस्कर्स को यहाँ पर एक और टैकल पॉइंट मिलेगा। इस बार इनकी पोजीशन से वो अटैक आया और यहाँ पर जरूर जर्सी नंबर 8 ग्रीन कार्ड यहाँ पर दर्शाया जाएगा। Now let's see where the foul plays. No, wait. Watch Arshit. Let's see where is the foul play. What happened there? Did he punch him? Arul Nanda, did he do something? No, Arul. I will not accept this. You have just come into Yuva Kabaddi series, and if you've been given a green card, and if you are intentionally doing something to the raider, whoever that is, I will not accept it. That's it. What did you feel? जी आप बिल्कुल नवीन आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा और अब मुकेश कन्नन है 6 पॉइंट की लीड पल्ली टस्कर्स के पास है। जरूर इन दोनों ही टीमों की एक हाई वोल्टेज राइवलरी होती है बट मास्की मुकेश यहाँ पर मौजूद थे। रीडा वो पूरी तरह से गए, एमटीली थोड़ा सा समय व्यतीत किया और वापस आए। क्या हुआ था? बड़ी जल्दी से अरावली एरोज के रेडर आके चले गए। Yeah, I expected Arshit that you'll have a comment on that foul play. But yeah, nevertheless, ankle hold, donkey charge, brilliant work. Wonderful. First success for him on the right corner now. जो एक बहुत अच्छी डाइव और नवीन वो मैं समझ पाया नहीं था कि रिप्ले में कि क्या वहां पर हुआ था। Okay. Yeah. के जाते एक अच्छा एंकल होल्ड। Yeah, point taken on this. Yeah, good. Yeah, even I felt he did something, but I don't know what did he do. Arul, can't be a bad boy. Please don't do it. Now Sahil Bhangra. Let us call him Bhangra as he wanted. No, it's not. Sorry, not Bhangra. It's Bhangra, right? Bhangra. Bhangra, right? Yeah, Bhangra, right. Whoa. All okay with them? Yeah, waiting for your comments. I think Ashwin is also watching you. I just asked how okay with them. I think they're just overworked. I think they're just tired. Two main pillars of Yuva Kabaddi series. I think they're just tired. Or rather, they are tired of the rain. Right. Yeah, नवीन बट चलिए अगर क्योंकि यहाँ पे डू और डायरेक्ट उसके बाद एक और बड़ी अच्छी वार्तालाप की तरफ हम बढ़ेंगे बट साहिल बांगड़ा इस बार है और साहिल बांगड़ा देखते हैं क्या अपना कार्य वहां पर दर्शा पाएंगे। तमिल अर्जुन आज बहुत अच्छा खेले। सबसे अच्छी बात लगी उन्होंने ज्यादा फेक अटेम्प्ट्स नहीं किए, ज्यादा एडवांस टैकल्स पे नहीं गए। एस मणिकंदन उनके साथ लेफ्ट के जेल पर होंगे, पुरुषोत्तम राइट कॉर्नर पर होंगे। इस बार अरुण की तरफ से एडवांस टैकल नवीन सरप्राइज था। 1 point Aravali Arrows. Jersey number 8 out. Yeah, they are discussing about my comment as Ashwin has the mobile phone. But yeah, Arul, 10 missing it out. The idea was right, execution completely wrong. Jayasuriya comes back after the nosebleed has stopped. Yeah, this is a good substitution. They needed a raider now, and it's good.
नवीन यहाँ And देखते हैं जयसूर्य नागराजन है। Go. That's okay. That's okay. Sorry, Arshit. Jaysurya. It's okay. It's okay, man. Go for it. Go back. That's okay. Radar save. 1 point. Palli No, Tuskers. don't Jersey do number such things. 27. The referee is not the best, Radar, Arshit. please. Defenders. Please. Yeah, let them Please let them go for the review. Prem Badu, Please move back. fine. You can keep reacting. TV umpire. Aravali arrows. Challenging. No touch point. Our decision. Red shape 1 point. Please review. Oh, I think the kneecap, Arshit. I think the kneecap. And Jaysurya was swearing on himself, on the mat, on everything. Why? Let the referees decide it, no? They write specific exams for that. They are trained for that. They have, multiple tests. To pass the test, they become a referee. Go back, Jaysurya. जी हाँ नवीन, वहाँ जयसूर्य वापस जरूर जाएंगे, बट मैं एक जरूरी क्रम के बारे में बात करना चाह रहा था आपके साथ, क्योंकि अश्विन शायद मुझे लगता है फोन पर हमें सुन रहे हैं। बहुत ही तेज हमारे साथ यहाँ पर जब हम स्विमिंग के लिए गए थे नवीन, तो मैंने पलक झपकाई और अश्विन इस एंड से दूसरी तरफ पहुंच गए स्विमिंग करते हुए। तो इनका एक और टैलेंट हम सभी के समक्ष आया है। No touch point. बट रिव्यू सक्सेसफुल यहाँ पर हुआ है प्रेम बड़ू के पक्ष में, और वहां पर रावली एरोज के खाते में एक पॉइंट जाता हुआ नहीं, क्योंकि क्या जयसूर्या गए थे लॉबी में? I don't think so. Has he? No, he's not. That's okay. Right, see, that's it, no? Now all that swearing on the mat, putting a hand on your head. Why? Upright! Wonderful double ankle hold from Purushottam Palnivel. Super tackle attempted. And Sahil Bagra Super has to tackle. go 2 out. points. Palli Tuskers. अद्भुत पुरुषोत्तम का यहाँ पर सुपर टैकल आता हुआ। देखिए जैसे इनकी पोजीशन पर थे, Time out. परफेक्ट अरावली टाइम था, arrows. परफेक्ट फ्रेम था, और दोनों एंकल्स पर डाइव लगाने की जो सोच थी वो परफेक्टली यहाँ पर एग्जीक्यूट की गई है। अब देखते हैं कि फिर से लीड जो है थोड़ी सी बढ़त बना लिया है पलनी टस्कर्स ने। सुनते हैं இங்கே ஸ்கோர் ஆதியா ஓடிட்டே இருக்கீங்க. No, let's listen to Aravali Arrows. They are trailing. இல்ல உனக்கு They கிடைக்குதுன்னா are team. They are actually trailing. Let's go back to Aravali Arrows. बाकर डिफेंस रोक के खेलो, कैच मारनी है इसकी। अंकित लगेगी कैच। Thankfully now everybody, because they were drinking water, Rajesh could speak to them. पर यहाँ नवीन डू और डायरेक्ट है। Yeah, pressure. Rajendra Bakar has been told to stop that defense and play. And he's rebelling. 1 point. Palli Tuskers. Definitely Jersey rebelling number against 2 out. Rajesh Gurjar. He is not thinking from his mind, the pocket dynamo. He just wants to prove the coach wrong. जी आज यहाँ पर वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नजर आया ही नहीं है राजेंद्र बाकर से। फिर से देखिए डू और डाई रेट में मुझे लगता है नवीन ये दूसरी या तीसरी मिस्टेक उन्होंने की है, जहाँ पर पूरी तरह से फायर प्रेशर कहीं ना कहीं था पलनी टस्कर्स के रेडर्स पर। फिर से राजेंद्र बाकर ने वो मिस्टेक की, और अब ऐसे करते करते लीड जो है पलनी टस्कर्स के पास 7 अंकों की पहुंच चुकी है। रोहित बेनीवाल मौजूद है इस बार रेड पर, वो कोशिश कर सकते हैं। और नवीन एक और प्रश्न आपसे, ब्रजपाल सिंह गौड़ दिखे नहीं है पहले हाफ में, उन्होंने अग्रेसिव शुरुआत दिलाई, उसके बाद कम रेड पर दिखे हैं वो हमें। He knows the best. I wonder why. But can I just go back to that Rajendra Bakar attempt? See, just in the timeout, the coach clearly said Rajendra Bakar defense roke ke khelna. That's all. And see, there once he tries, he should have let him go in a do or die race. And he just wants to prove the coach wrong. Saying, listen, I know the best. That's what he's trying to do. Good thing, very intelligently kills all the 30 seconds in the race. And after that will happen only when you are trying to rebel against your coach. Yeah. That's not good, Ashwin. That's really not good. And see, whether it is good for Aravali Arrows or no, I don't know, but it's not good for our series. We want love, we want coordination, we want a healthy competition to be going. And this is not at all healthy. Radar from save. Purushottam 1 point. Palnivel. Aravali Arrows. जर्सी नंबर 3 आउट। पुरुषोत्तम हमने थोड़ी देर पहले ही तारीफ की थी कि आज बिल्कुल वहां पर एडवांस टैकल्स के लिए नहीं गए और बहुत अच्छा सुपर टैकल किया था। यहाँ वो बैकहोल्ड करने चले गए, एक बार जरूर बैक दिखी थी ब्रजपाल की, पर थोड़ी सी गलत टाइम हो गया था नवीन, क्योंकि बहुत समय था वहां पर ब्रजपाल सिंह गौड़ के पास रिएक्ट करने के लिए, और उन्होंने सिर्फ अपने आप को पीछे किया और अपनी टीम के लिए वहां पर एक राइट पॉइंट प्राप्त किया। अब प्रेम बड़ू लेफ्ट कॉर्नर पर खेल रहे हैं। इन्हें शुरुआत में 2 सुपर टैकल मिले थे नवीन, उसके बाद से कोई पॉइंट मिला नहीं है प्रेम को भी। He wanted to go for the reverse ankle hold of Ram Kumar,
but good that he backtracked himself. He just did Bonus not go for point. the Palli Tuskers. ankle hold. Yeah, that's okay on the bonus. Very, very good Strategic attempt. timeout. Yeah, strategic timeout as well. उस कॉर्नर की कितनी गलती निकालेगा, उसके मुंह पे खड़ा होकर रेड रेड मार रहा है। भाई तेरे से कवर नहीं मारे जा रहा उसके, मार तो सही। अंकित अंकित ये नहीं मारा, तू मार, एक नंबर पे जा रहा है। हाँ देखने दे मार दिखा के। हार तो रहे हो तुम, हार रहे हो तुम 6 पॉइंटों की लीड। हाँ तेरे को खुला छोड़, मैंने रोका किसको है, खुला छोड़। 2 बार ऑल आउट का मौका छोड़ दिया, 2 बार मैच हाथ में आ जाता अभी पूरा। बोल रहा बोले मैं, दिक्कत वही है ना, रोका किसी को नहीं है, दिक्कत तो वही है। Seriously, to earn the respect, you need to give it to the player. You need to give something out to them. And see, just imagine you have a nice remote control car as a toy. The more you try and break it, the more it will break. Like Bridgeball does not control himself, goes into the lobby. That's it. See, over-aggression. Over-aggression never is good. Controlled aggression is always best. So, your remote control toy will start to rebel if you are forcing it too much, isn't it? That is how players are. And as a coach, see, I am not being a coach anytime, but Almighty, the big spirits are always up above, have been very kind enough to me that I've been able to train G.R. Vishwanath, I've been able to train Sunil Joshi, I've been able to train Venkatesh Prasad, I've been able to train Anil Kumble, I've been able to train, Krishnamachari Srikanth, I've been able to train Chadugopun Ramesh, Hemant Badani. So, why should they listen to me? Who am I? I am just a second division player, that's it. So they have played Ramji, they have played international level. Oh, that is not even on the local level defense attempt. The whole bench is acting the same way. Relax guys, it's a super Jersey race. number 9, 44 Enjoy and the 11 point. out. यहाँ एक सुपर रेड आती हुई साहिल बागड़ा के लिए और अभी मन्नू के कासिलिंगम वहां पर अंदर बुलाया गया था टीम के द्वारा। यहाँ साहिल बागड़ा को सुपर रेड मिली है, जरूर कुछ और मांग वहां पर लवली रोज पॉइंट्स ही कर रही है, रिव्यू उनके पास है नहीं। देखते हैं एक बार फिर से, यहाँ देखिए नंबर 44 जर्सी, अभी मन्नू गए थे पहले ब्लॉक के लिए, उसके बाद मुकेश कन्नन आए पर वो पूरी तरह से डैश कर पाए नहीं, वो जो बैलेंस था उसे प्रॉपर बनाकर नहीं रख पाए और वहीं पर रेडर ने मिड लाइन को क्रॉस किया। नवीन 3 या 4 अंक आप कितना कहेंगे? I just feel it might be 4 because even I think Jayasuriya Nagarajan is in the contention. Yeah, Manikandan Subramani, yes for sure. Abhimanyu Kasilingam has come in place of another defender. I think he's coming in place of Arul. Raki is just trying to discuss with everybody, Jay Kumar and her colleagues. If they're not happy with 3, they can go for the review. Nevertheless, 3 points. Yeah, it still stays at 3 points. 44, 3 and 11 yeah. out. Okay. So, Mukesh Kannan, 5. Abhimanyu Kasilingam, and 11, 44 and 5 out. it is Manikandan Subramani. So, thankfully, no Jayasuriya Nagarajan. Let's watch it. First Abhimanyu, then Mukesh Kannan. Right, that's it. So, no Jayasuriya. Yeah, अच्छा निर्णय। Fine, that's fine. बिल्कुल एक अच्छा निर्णय था। अब क्या एक अच्छा निर्णय, जयसूर्या नहीं, राम कुमार ने Okay, go back. अंकित Go back. Oh, अंकित No, hang on. 1 point. Aravalli Arrows. Oh, hang on. Jersey Let's go for the number replay. 21 out. No. It was Ankit Jat. What actually Ram Kumar wanted. Ankit Jat, come on! This is unbelievable. Sahil Bangra accepted that he was hand-touched. Arshit, why? नवीन का टोज शायद क्या करें, टोज वहां पर टच हुआ था साहिल बागड़ा पे। लेट्स 1 चेक point. Aravalli Arrows. Jersey number 8 out. Can we go back to that replay? No, that's fine. It's 1 point. That's okay. That is fine. Ram, this is okay. The toe touch, yes, we know this. But the previous raid of Ram Kumar.
he was targeting Ankit Jad. Sahil Bangra, the good kid, ran away. Nevertheless. Now Sahil Bangra is definitely out. Sahil Bangra is definitely out now. Bonus plus 2 point. Palni Tuskers. Super raid by Ram Jersey number Kumar. 81 and 21 out. तो जहां पर लग रहा था कि क्या मुकाबला हल्का सा बदल सकता है, वहां पर साहिल बागड़ा गए इनकी पोजीशन से टैकल करने, चेतन चौधरी का साथ आया। ये देखिए नवीन, पहले चेतन को टच किया था, यानी कि पहले चेतन को टच किया, फिर साहिल की डबल थाइस पर गए। ஏறிறங்க நல்லா ஒன் சைடுனா ஒருத்தன் குத்துங்க, நல்லா லாக்குனா போங்கனா போவாதீங்க, சரியா? இங்க ஏத்து அடிக்க வேணாம், ஒருத்த சைடு நல்லா கிடைச்சனா ரீபவுண்ட் போங்கனா போவாதீங்க, டாம் ஸ்கோர் ஆகுது, அடுத்த பாக் மட்டும் டெஸ்ட் ठीक है। Okay, அடுத்த raid பாக் மட்டும் வெச்சுக்கோ. Next raid, let's just waste time, and if the raider comes too deep inside, only then go for the tackle. If there is no angle, don't go. That's what Ilavaran has said. We like only strong kabaddi matches, no? Not like this, but yeah, that shows why they are struggling. No coordination, no raiders, and this match also, I think this is also going down for them. Right. गया है रावली अरोज के सिर्फ 2.5 मिनट के आसपास का समय शेष बचा है, और जैसा और आपने और एलिवर्सन साहब ने वहां बताया कि समय सिर्फ यहां पर व्यर्थ करना है, और यही आवश्यकता है, यहां पर समय की मांग है कि आगे जज राइट कॉर्नर पर वहां पर खड़े रह जाएंगे, कोई भी अंदर आने का प्रयास राम कुमार ने किया नहीं, तो एक एम्प्टी रेड यहां पर होगी। इसलिए रावली अरोज को अगर इस मैच में कैसे भी वापस आना है नवीन, तो इनके रेडर्स को पॉइंट लाना बेहद जरूरी होगा। Totally. At least now, let them forget whatever happened, and let them concentrate only on the raid point. And the defense, watch out. Abhimanyu controls himself. The defense, just watch out. Allow Richpal to run the length and breadth of the court. That's okay. Wow, that is a timing bash. Tamilarasan shows some aggression. And see what happens. If you are over aggressive, a silent kid like Tamilarasan also will become very, very violent. तो डैश ही ऐसा किया था ना, यहाँ ब्रजपाल ने देखिए बुलडोज करने की कोशिश की, अपने हेड से पावर जनरेट करने का प्रयास किया, बट तमिलरसन जो लगते यहाँ पर ऐसे स्मॉल और बहुत ही लीन किड है, बट कितना लाजवाब फोर्स वहाँ पर जोड़ा। और इससे पता चलता है ना नवीन कि जब हम लीन बॉडीज को देखते हैं ना, हार्दिक पांड्या को देखते हैं, लगता नहीं इतने बड़े बड़े छक्के लगाते होंगे, तमिलरसन को देखकर लगा नहीं था कि इतना परफेक्ट ब्लॉक वो करेंगे, बट क्या परफेक्शन के साथ उन्हें ब्लॉक को इनिशिएट किया, और अब तो सिर्फ वहाँ पर मुकेश कन्नन यही करेंगे। For me, that is the first ever time I'm seeing Tamilarasan going for a thigh five. Have you seen it? I haven't seen it. He's won 3 matches as a bench defender. Substitution. Aravali Arrows. And that was the first time I saw him on a thigh five. Can we go back to that replay on the dash? As there's a substitution that's coming in. After this, maybe Hariom Chaudhary comes in for a raid because they need raiders. Aravali Arrows. Watch out, Abhimanyu. You need to still settle in. You need to really settle in. Once again, Tamilarasan comes in. Perfect dash. 1 point, Palni Tuskers. या जयसूर्य नागराजन ने भी बाहर बैठे बैठे तालियों का यहाँ पर गुलदस्ता सा भेज दिया है तमिलरसन के लिए। देखिए तमिलरसन फिर से गए, और नवीन सबसे अच्छी बात कि मुकेश कन्नन भी है ना, तमिलरसन को बहुत ज्यादा समय तक आगे नहीं जाने दिया, यानी कि अच्छी तरह से कवर अप करके रखते हैं, और ये पलनी टस्कर्स का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन नजर आता है। उनके बेंच पर जयसूर्य नागराजन बैठे हैं। Watch this. Thank you, Ram. Wonderful work, Ram and Deva. After the dash, check out the aggression. That is the first high five in the season for Tamilarasan. Do what I read. Super tackle situation. Come on, Ankit Jad. The pressure should have been on Ram Kumar. 1 point, Palni Tuskers. Jersey number 3 out. Yes. But Ankit Jad, 7 successful super tackles, highest by anybody Arshit in the season. Rookie mistake. Yeah, look at this mistake. अंकित जाट ने किया, बट आज लगातार मुझे लगता है रामकुमार चौथी या 5वीं डू और डायरेक्ट में आए होंगे, जहां पर डिफेंडर्स उनके ऊपर टूटकर पड़े हैं। तो डिफेंस में अंक हमने बहुत ज्यादा देखे हैं रावली अरोज के लिए, बट ऐसे एरर्स अगर आप लगातार करेंगे तो वो आंकड़े बड़ी जल्दी, जो परसेंटेज है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगी। और इसलिए नवीन हम चाहते हैं ना कि प्री शो में यहाँ टर्निंग द पेजेस अराउंड अरुल सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा, ज्यादा खतरा कुछ होगा नहीं। 1 point, Aravali Arrows. Jersey number 8 out. That's good by Prem Badu, where he turned the pages nicely. Sasi Kumar, that was.
He looks so much like Arul, isn't it? Yeah. He looks so much like Arul. Oh, that is Arul. By the way, I'll tell you something. The taping, yeah. The taping on the back has come off. Yeah, right. That is Arul Nanda. I was wondering who is Satyakumar. There is nobody called Satyakumar. The taping on his back has come off, guys. So don't get confused. There's a massive 10-point victory here for the Palani Tuskers. And once again, Aravali Arrows, even with the day's break, they could not get the coordination wrong. They could not get the wrongly lit team right on the mat. And look at this, Arshit. In the second half, Aravali Arrows have just got 13 points only. Just 13 points. But on the other side, the Palani Tuskers have got a massive number of 18 points. So that is the difference. 17 was the Palani Tuskers, and in the second half, 18. Right. तो अगर आप सुपर टैकल्स को छोड़ दें तो अरावली एरोज के डिफेंस ने उतना अच्छा कार्य नहीं किया। हमें आपको नजर आया था कि 6 अंक पहले हाफ में अरावली एरोज ने डिफेंस में प्राप्त किए थे, उसके बाद सिर्फ वहां पर 3 अंक वहां पर टीम को मिले हैं दूसरे हाफ में। और पालनी टस्कर्स के रेडर्स ने भी बहुत अच्छा कार्य किया। एम रामकुमार आज सब्स्टिट्यूट के तौर पर वहां पर मौजूद थे। स्टुअर्ट सिंह ने अच्छा लगातार परफॉर्मेंस को बढ़ाया है अपनी टीम के लिए। उन्होंने भी 5 इंपॉर्टेंट रेड पॉइंट प्राप्त किए। और आज तमिल अरसन का फिर से एक और बार नवीन शानदार हाईफाई, और मुझे लगता है कि अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाईफाई तमिल अरसन के लिए रहा है, क्योंकि आज उन्होंने एरर्स बहुत कम किए। Yeah, important and the most aggressive one. Totally aggressive, Tamil Arasan. Right. Yeah, lean body. So much of volcanic eruption that came in. You know something of the name Elumalai and Brijpal. I don't want to see those visuals once again. What if Brijpal goes back and sees these visuals himself? Will he not feel bad? That's okay, whatever. Elumalai Murthy is there in of course, the Nilgiri Knights. Also, there's something called Erimalai. You know what Erimalai means? No. Erimalai means volcano. Wow. ஒரு மலை எரியுது. Mala means mountain. எரியுது means to burn. A burning mountain is called Erimalai. And today Tamil Arasan is played like an Erimalai. He just played like a volcanic eruption. यहाँ पर उन्हें पता था कि कब जाकर फटना है नवीन। सबसे अच्छी बात ये थी कि इनके ऊपर कॉन्टेस्ट था और इनके ऊपर कॉन्फिडेंस वहां पर था कि मुझे कब फटना है, मुझे पता था। तो सिर्फ वॉल्केनो और तमिल अरसन में आज सिर्फ यही थोड़ा सा समानता कम थी कि वॉल्केनो को शायद पता नहीं होता है कि वो कभी भी फूट जाता है, और आज तमिल अरसन को पता था कि उन्हें कब फटना है। और अच्छे फटे आज, इसलिए you know the defender, best defender. I think this is what, 4th Arshit? I think you will have a count. You know, you've already given him 3. I think this is the 4th best defender award for Tamil Arasan. Wonderful, wonderful work, and definitely Surendra Nada will be happy because Tamil Arasan idolizes Surendra Nada. And look at that. The Palani Tuskers have won it because of their strong defense. And Aravali Arrows, no Raiders. Their problem continues. And the problem of non-coordinated effort. And you have made the pocket dynamo a rebel on that left corner. He just wants to prove the coach's point always wrong. Not good. Really not good. Aravali Arrows, you need to target to go to the summit round. Forget all this. Let this be your last day of non-coordinated efforts on the Kabaddi mat. Come back fresh tomorrow. Be a better team. We want to see you in the summit round, Aravali Arrows. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा नवीन है कि हम यही आशा करते हैं कि अरावली एरोज कल पुनः जब मैदान पर उतरे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन के साथ उतरे, जैसा कि रामकुमार, जयसूर्या, नागराजन और वहाँ पर उनके साथी खिलाड़ी का हो रहा है एज अ रेडर। ट्रायो तमिल अरसन, क्या बात है। और आज ये कला सामी नहीं, मुझे तो आर्मी नजर आए। एक अकेले खिलाड़ी ने लेफ्ट कॉर्नर को पूरा संभाले रखा था। तो तमिल अरसन काला आर्मी में कहना चाहूंगा नवीन आज तो पूरी तरह से। Kalasamy is सिर्फ 6 टैकल्स इनिशिएट किए और 5। और अरावली एरोज, जो आपने कहा था ना कि अरावली एरोज इसलिए क्वालिफाई कर पाई थी क्योंकि सिंधु सोनिक इतना अच्छा नहीं किया, सारे मैच हारे। तो अभी फिर से उनकी शुरुआत -7 और -10 स्कोर डिफरेंस के साथ हुई और 7वें पायदान पर हुई है नवीन। Not good as a beginning. Palani Tuskers, yes, they're right on top, as the Periyar Panthers have also been very good. They have got coordinated attack, and Rohit Yadav, and of course Richpal Jat is there for their raiding skills, but nobody for the Aravali Arrows. Chambal Challengers, good that they've got that first victory. Chola Veerans, 1 victory, that's good. And Hampi Heroes, they need to register their first victory. They'll play tomorrow
Today was their off day, but yesterday was a strong match against the Chambal Challengers as well. That's the points table. If we can quickly go to if we have the tomorrow schedule, and it'll be really nice as we will have many things to speak about after the break. We will have the post-match award ceremony and then the post-show as well. But match number 100 will be Chambal Challengers versus Chola Veerans. That is an exciting match in the summer edition. We have touched match number 100 tomorrow at 5:30. And then the Periyar Panthers and the Aravali Arrows. Yeah, that's a friendly game that's coming up at 1:01. And then at 8, it's the Hampi Heroes taking on the Palani Tuskers. Yeah, watch out for that bit of a clash. The Kannada team taking on the Palani Tuskers. It'll be exciting. Palani Tuskers in a very good form. Hampi Heroes need their first victory. Fireworks definitely about to get blasted. As we slip into a short break, we'll come back with Harshit on the post-match award ceremony. And after that, we will have the post-show. Stick on with us, guys. In this high voltage encounter, Palani Tuskers got the upper hand. Welcome to the post-match presentation of match number 99 of Yuva Kabaddi Series Summer Edition 2023. We would like to start this presentation with thanking all our partners. First, broadcast partner FenCode, fantasy partner Dream 11, physio partner Department of Sports Sciences College of Physiotherapy, hospitality partner Ginger Hotel और healthcare partner Ramakrishna Specialty Hospital. और आज हमारे साथ presentation में मौजूद हैं प्रकाशित मिंस जी, टेक्निकल ऑफिशियल युवा कबड्डी सीरीज में आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। आइए सीधा चलेंगे इस अवार्ड्स की तरफ, रिकॉग्निशन की तरफ। तो बात करेंगे फर्स्ट बेस्ट रीडर ऑफ द मैच के साथ। पलनी टस्कर्स ने इस मुकाबले को अगर 10 पॉइंट से जीता है तो इस खिलाड़ी का रोल एज ए सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के आने के पश्चात बहुत ही ज्यादा अधिक महत्वता प्रदान करता है। वो थे पलनी टस्कर्स के एम राम कुमार जिन्होंने प्राप्त किया 8 पॉइंट्स और बने स्टार रेडर। देखते हैं इनके रेट पॉइंट्स को। And now the time for the best defender of the match और ये अवार्ड जाएगा पलनी टस्कर्स के तमिल रसन काला सरमामी को। और कहना पड़ेगा ये आज एज आर्मी खेले हैं और अपनी टीम के लिए प्राप्त किए 5 टैकल पॉइंट्स। आइए देखते हैं इनके दमदार प्रदर्शन को एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर। एज अ आर्मी इन्होंने आज पूरी तरह से अपने लेफ्ट फ्लैंक को संभाला डिफेंस में और अपनी टीम के लिए बहुत ही कम टैकल इनिशिएट करके 5 टैकल पॉइंट तक पहुंचे। बट अभी समय कबड्डी कमाल ऑफ द मैच का। तो पलनी टस्कर्स ने मुकाबला जीता और क्यों जीता? क्योंकि यहां राम कुमार ने एक शानदार अंदाज में अपनी टीम को ऑल आउट से बचाया और लगाई थी एक जानदार सुपर रेट। देखिएगा और ये अवार्ड जाएगा राम कुमार के खाते में।
So that's all from the post-match presentation of match number 99. आप सभी के साथ बड़ी ही जल्दी मिलूंगा उस पोस्ट शो में जहां कर आज के पूरे दिन का पोस्टमार्टम किया जाएगा, किन किन ने अच्छा खेला, किन किन को और थोड़ा सा बेहतर करने की आवश्यकता है। बट अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
चैलेंजर राउंड का डे नंबर 2 भी बड़ा ही रहा है ऐतिहासिक। आज भी हमने देखा कि बहुत सारे मुकाबलों में बहुत सारे प्लेयर्स अबव एक्सीलेंस वहां पर खेले हैं, पार एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अपना दर्शाते हुए नजर आए और कई टीमों को अभी भी और बेहतर करने की आवश्यकता है अपनी पहली जीत ढूंढने के लिए। जी हाँ, तो आइए आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं इन द वाईकेएस लाइव। मैं हूं अर्जुन शर्मा और मेरे साथ मौजूद होंगे रिमोटली जुड़ते हुए नवीन शौरी। नवीन, वन मोर टाइम अ ह्यूज वेलकम ब्रो। Thank you, Harshit. Yeah, I hope everything is fine with the Aravali Arrows. You spoke to them? जी, अरावली अरोज बिल्कुल निश्चित तौर पर कहकर गई है कि चाहते समय और अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ वापस आएंगे कल जब मैदान पर होंगे। तो आइए अपने अरावली अरोज के मुकाबले की बात की पलनी टस्कर्स के साथ। तो पूरे आज के स्केड्यूल को देख लेते हैं ना कि क्या-क्या आज मुकाबले थे और कैसे आज किसकी टीम के पक्ष में वो मैचेस गए हैं। Yeah, the Chola Veerans got it very correct on the Nilgiri Knights Chambal Challengers. Yeah, right. Once again succumbing to that loss as well. Periyar Panthers very good with a 4-pointer win, and then Palani Tuskers clinical against Aravali Arrows. Let's go back to that Chola Veerans match and start to see and decode how that match panned out, right? जी हाँ, उस मुकाबले की बिल्कुल बात करेंगे और उस मुकाबले की बात करें उससे पहले अगर मैं आपको नवीन एक बार अंक तालिका दिखा देता हूँ कि कहाँ पर अब कौन सी टीम वहां पर कहाँ सुसज्जित आपको नजर आ रही है। तो आइए पॉइंट्स टेबल की तरफ चलते हैं और ये पॉइंट्स टेबल नवीन मैंने आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि हम सभी जानते हैं ना, जो हमने प्री शो में बात की थी कि सिर्फ 6 टीमें जो है वो समिट राउंड में जाएंगी और 7वीं जो टीम है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी नवीन। Yeah, totally. And even that top 6, people will have to think about finishing out at least in the top 4. First point, they'll have to finish at top 2, if not top 4. They don't have to finish at 5th or 6th because they'll be straight away playing an eliminator and they will probably come in cycle to the finals. जी हाँ, बहुत ही बड़ा एडवांटेज यहाँ पर होने वाला है टॉप 2 टीम्स के पास। तो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा और हम क्यों कह रहे हैं वहां पर इस एडवांटेज की, आइए आप सभी को हम बोलते हुए तो समझा रहे हैं, बट हम चाहेंगे कि अगर वो रोड टू फाइनल्स का ग्राफिक्स नवीन एक बार फिर से अगर पेश हो जाए तो शायद हम और बेहतर तरीके से सबको समझा पाएंगे। Yeah, the qualifier 1 and 2 teams, yeah, they will be actually boarding a flight to go to the finals. The people who land properly on the midline, they will go out there in the finals. And people having some turbulence will get another flight to catch where they will be playing qualifier number 3. But qualifier number 2 is like coming in train. You know, 3 and 4, it's like a train route. It's like a rail route where it will be there, but it will take a little more time. But 5th and 6th, yeah, it is coming like on a bicycle. If you're riding the bicycle and coming in, if you want that position to be there, 5th and 6th, yeah, you are most welcome to come to the finals on a cycle. That's what it is. जी, वहाँ आपके स्टेमिना को पता चलेगा, वहाँ आपके डेडिकेशन का पता चलेगा, वहाँ पता चलेगा कि आप कैसे यहाँ पर पूरी तरह से फिट है वहाँ तक पहुँचने के लिए नवीन। बट ये समर एडिशन है नवीन, और समर एडिशन मुझे याद आता है तो जयपुर वाला समर एडिशन याद आ जाता है 2022 का, जहाँ पर पेरियार पैंथर्स चाहे साइकिल के रूट से ही सही, रोड रूट से ही सही, बट वहाँ पर फाइनल तक पहुँचा था अगेंस्ट मुथल मैग्नेट्स। Yeah, that was nice. That was really memorable, and I think that was the only time we saw, you know, 5th or 6th positioned team to come to the finals, isn't it? I mean, totally going ahead. आकाश शिंदे की टीम शायद 5वें 6ठे पायदान से पहुंची थी। Oh, that you just go! Oh my God, that is Akash Shinde. See, even though that was Dwarka defenders, that is Akash Shinde. He's exceptional. He's from Mars. Come on. I mean, I think apart from that, nobody could have come from there, the 5th or the 6th position. So what are we asking the teams is try and finish top 4. That's all. That's all your goal should be. Your first goal should be finishing in top 2, or if not, okay, you can come in the train to the finals and finish in top 4. That should be your goal. Yeah. Finishing at 5 and 6, yeah, that's it. Okay. आप अपने फेट को वहां पर आजमा सकते हैं और वहां पर आजमा सकते हैं आपकी किस्मत को। बट मैं एक बार फिर से तारीफ करूंगा जिस तरह से नेम किए जाते हैं ना इस राउंड्स की, हमारे अश्विन और संगीत जो कि स्केड्यूल को तैयार करते हैं। सबसे पहले सर्वाइवल, फिर आप अपना बूस्ट अप कीजिए, फिर यहाँ चैलेंजर्स और उसके पश्चात वो समिट राउंड। बहुत ही बढ़िया कार्य वाईकेएस की पूरी मैनेजमेंट कमेटी कर रही है। बट अभी नवीन hope they have patented that. Hope they have patented. Hope they have registered, right? So that nobody else uses this. या नवीन, बहुत ही अच्छे सजेशंस आपके हैं। बट मैंने एक और नाम इसका सोचा है नवीन कि पोस्ट शो के साथ साथ हम पोस्टमार्टम